भाई डीसिंग क्या हाल है भाई। डीसिंग चलो। बढ़िया भाई बढ़िया। क्या मतलब कल बोल के गया था 2 दिन बाद आऊंगा, आज फिर आ गया। हेलो हेलो सॉरी क्या बोला। हेलो। मेरी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। डीसिंग कोई कोई आवे क्या? हेलो। ना भाई कोई नहीं है। चलो फिर मैं भी चलता ही हूँ यार, बुलावे थे पहले। जाने वाले बुला रहे। हाँ, तुम 1 घंटे का बोल के 2 घंटे बाद आओगे। नहीं एक्चुअली सीन ये हुआ मुझे मम्मी पापा को ड्रॉप करने जाना था। अच्छा तो अच्छा, उसमें चलो देर फिर हो कल गया। कल ही खेलते हैं। तुम इस भाई के साथ खेल लो, बहुत बढ़िया खेलते हैं भाई। अभी ओके अभी मिले ओके थे नया कोई खेल ना। में। अरे कुछ भी बोल रहा है। चलो अरे बाय बाय तुम बाय। बाय 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 बाय। लगा दूं भाई। लगा दो। मेरी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। पता नहीं भाई, 2 बार बोल रहा है क्या? हाँ भाई, आ तो रही है मेरे पास। Match found. वैसे किधर से हो भाई तुम लोग? तेरा दोस्त किधर से है? अच्छा। हाँ वो भी मुझे पिछले ही मैच में, मतलब पिछले के पिछले मैच में मिला था अनरेटेड में। डॉज कर रहे हो? डॉज कर रहे हो क्या तुम लोग? कंफ्यूज हैं? हूँ भाई। हैं? क्या? कंफ्यूज हूँ, क्या ही लूँ मैं। अरे सही है भाई, कुछ भी ले लो, चिल मार। भाई Match तू चिल है ना, found. ऐसे ऐसा कुछ सीरियस तो नहीं खेलता ना तू? अच्छा अच्छा, चल ठीक है भाई। मैं तो चिल्ले हुआ हूँ। अच्छा। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा फोन। तेज स्मोक ले ले। हेलो। क्या करो भाई? स्मोक स्मोक स्मोक। ऑब्वियसली।
हाँ बबल वाला ले लो भाई। वैसे डी सिंह भाई मेरा फॉर्म अच्छा नहीं है तो देख लेना भाई। Stand in my way. I dare you. अरे नहीं रे तू, मैं जानता हूँ ना अच्छा खेलेगा तू। पता नहीं रे, शायद स्मगलर भी होते हैं यार बहुत, तो वही लोग ड्यूलिस्ट ले लेते हैं। ये जाना है, किधर जाना है? Right there. Careful. Dropping smokes. Oops. No charges. Enemy spotted A. One enemy remaining. There. Careful. Dropping smokes. Concussing! Blinding! Reloading. Right here. Careful. Spike plant right here. Careful. Enemy spotted B. अरे उस साइड जाता ना, कोई बात नहीं भाई, अब जाओ। Tremor! Multiple enemies. One enemy remaining. Enemy spotted B. अरे नहीं है। Need a drop. Thank you. No. Thank you. Thank you. अरे स्किन चाहिए क्या ब्रीच? Nope. Reloading. Enemy spotted A. Dropping smokes. Reloading. Enemy spotted A. Get in sight.
Reloading. Reloading. I want of these. Concussing! बढ़िया है भाई वो Last player standing. One enemy remaining. fake 30 seconds left. Spike planted. भाई फेक करता ना तो तुरंत आ जाता बस छुपे रहना Reloading. आ जाओ आ जाओ Dropping smokes. Still inside. बैक स्टेप The hunt begins. Spike planted. मारना You're nothing. Last player standing. My ult is ready. Dropping smokes. They will cover. Blind. Careful. Blind fools. Too late. Reloading. Reloading. It's you and me. One dead. See ya. One enemy One remaining. down. My ult's ready. Need a drop. भाई ये लोग रहना लेके कैसे कैसे खेलते हैं भाई रहना Dropping smoke. Reloading.
Cutting their vision. Cutting their vision. Enemy spotted. Reloading. Reload. Have one of these. Concussing! Flash out! Dusted. Down you go. Spike planted. One enemy Amateur. remaining. अरे ना Need a drop. उसे वही ड्रॉप दे दे Thanks. लोग अरे क्लो अरे मांगना रे साले Trevor! Dropping smokes. My eyes are better than yours. Stealing sight. Joke's Get over! out of my You're way. dead! Sliding down A. Enemy spotted A. Carrier is killed. Last player standing. What's this? Dropping smokes. Cutting their vision. Stealing sight. Fire in the hole! Too late. Reloading. Spike planted. Someone is being. Last player standing. It's you and me. भाई पहले ही हो गया भाई 2 ट्रिप थोड़ी होता है एक बार टूटा तो रहना पहले है ना तो मेरी गलती थोड़ी नहीं छोड़ I need this. रहना भाई दे स्टार्टिंग में से लौड़े उतने पैसे बचाएगा क्या Concussing! Someone is blinding! Sword gods. Last player standing.
भाई रेना ठीक से बाई कर ले, क्या करना है बेचारे भाई, इतने पैसे हैं। जा रेना फ्लैश वगैरह दे जल्दी। Enemy spotted. Blocking sight. Reloading. I shot somebody. अबे मैं Last player standing. Spike down A. Hit the phone. Nog om dig. Dropping smokes. Have one of these. Careful. Careful. It's you and me. Spike down B. Last player standing. Last round before the switch. Dropping smokes. Still in sight. Spike down mid. Stay down. My ult's ready. One enemy remaining. I have the spike. Last player standing. Blocking sight. What's this? Switching sides. मैं मिड पे कैम लगा रहा हूँ, एक ही आदमी को।
कहना तू जल्दी मोबाइल होना। Concussing! जाके मारना। Spike planted. Last player standing. Flawless. Spike planted. Have one of these. Last player standing. Cage triggers. Flawless. No peeking. Need help. Multiple enemies A. Mini. Worthless. Spike planted. Get -100. Weak. Last player standing. Dropping smokes. My camera is destroyed. Here, catch. Joke's over! You're dead! K-door. मेड को ही देख। The hunt begins! Caught one. Spike planted. Last player standing.
They found my wire. Spike planted. Last player standing. It's you and me. Flawless. Match point. Need a drop. Fire in the hole! Get out of my way! Cage triggered. Enemy spotted mid. They found my wire. My ult's ready. They will come. Last player standing. Spike planted. Refreshing. Attackers win.
My ultimate's ready. My ult's ready.
My what's this? 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 हेलो गुंजन भाई, क्या आपकी 5 स्टैक किधर है? यस यस
अब मैं एक दूसरी आईडी से आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को उसमें ऐड करना। उसको छोड़ के आ गए हम लोग। अड़बे वहीं रह जाता अभी। साला हमको छोड़ के आ गए वहां पे। हमेशा देर कर देता है भाई तू। अबे इसका तो उसको कहाँ पे खिलाएगा? 6th ब्लॉक में? आप इसलिए तो हम बोलना लोग कल नहीं आ आना रहे। कल। चल फिर मैं आ जाओ, फिर स्टैक खेलते, देखते दोनों टीम मैच होते क्या। वो हाँ भाई आमने सामने फंस जाओ, मजा आ जाएगी। जैसे सालों लोग फंसे थे गाय, हेलो, उनको तो क्या ही क्या धोए थे भाई अपन ने। घर में? चलो अलग हो अरे, जाओ। हाँ घर। भाई मैंने रिक्वेस्ट करा था आपको, गलती से इनवाइट हो गया, फिर मैंने रिक्वेस्ट करा बट आपने ज्वाइन कर लिया। क्रेजी।
रुको रुको रुको, कॉम्पी खेलते कॉम्पी एक बंदे को और बुलाता हूँ, रुको मैं कुणाल को फोन करता हूँ। एक बंदा आ रहा है। ठीक है, ट्रायन को लीडर दो। दे रहा हूँ हल्की लोग हो गए हल्की। ये इनने अभी स्टार्ट किया, बड़े भाई है मेरे, ठीक है। क्या? अरे ना यार, ये ट्राई, अरे मेरे बड़े भाई है। अबे ना अबे ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है ये। ऑफ से मार रहा था, ऑफ से मार रहा था, ऑफ से। वाओ, भारी डेंजरस। स्पैम कर रहे थे उसमें, स्पैम कर रहे थे। अरे ट्रायन को दो, दे दिया। ट्रायन स्टार्ट कर। अरे ना ये सोवा खेलता है और फिनिक्स खेलता है, बस यही सब। मेरा तो सोवा ही रहता है भाई, लेकिन वो लेते हैं भाई। सबसे खराब प्लेयर है। अरे वो नारुतो का भाई है ना, कौन है वो? लूसीफर भाई, मुझे पता नहीं था बेंचो उसका भाई है। अब उसने ना, मैं तुझे पता ही मैं नियोन खेलता हूँ, बेंचो उसने इंस्टा लॉक कर लिया। मेरा हो गया दिमाग खराब, सुबह से हो ही रखा है दिमाग खराब। कॉलेज वालों ने मार चोद रखी है दिमाग की। उसने नियोन ले लिया। मैंने बोला बेंचो चूती है जो नियोन ले लिया। वो बेंचो भड़क गया, मैं डोज किया, माँ की चूत तेरी। अरे भाई दिमाग खराब कर दे, एक तो कॉलेज की माँ की चूत भाई। Match found. ले लो भाई, ले लो, पिक कर लो, मैं फिल कर लूंगा। मैं नियोन ले रहा हूँ, ठीक है। ना ट्रायन भाई ट्राई। अरे फक, क्या हुआ? डी सिंह खेलता है हमेशा, वो क्या है इनिशिएटिव ले तो रखा है, ब्रीच ले रखा है ना। ब्रीच इनिशिएटर में आता है, मतलब ये दोनों सेम कैटेगरी होती है। डी सिंह भाई आज कुछ और खेलेगा। हाँ बस इस मैच खेल ले, अगले मैच में ट्रायन भाई कुछ और खेल लेंगे। साइपर खेल लेता हूँ। सेंटिनल है तो ये सार्थक। स्मोक्स ले लो रिस भाई, बढ़िया यार। ओमेन या क्लो ब्लू? अरे सेक्सी टीम है दो सेक्स। अरे नहीं साइफर ले वापस साइफर ले। सार्थक भाई I am both shield and sword. 2 सेंटी चाहिए होते इस मैच में ना, मार चुट जाएगी पूरी गेम। अरे मैं बता दूंगा तुझे। एक काम कर, तेरे भगवान पे किलोमीटर ध्यान से देख लेना, फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन। Reloading. एक ब्रोंज, एक गोल्ड और 3 Reloading.
ना 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 कुछ नहीं ऐसे मत कर। अबे नहीं बे, अबे तुझे एसके वाली वो आती है ना ट्रिप्स करनी, एसके वाली एसके खेलता मैं सेंटीज। बी आ रहे हैं। बी यप। रायन भाई चेंज कर रहे हैं शूट कर रहा है। तो सेकंड में कंट्रोल चेंज कर चलो उससे They found my wire. भाई बी। Careful now. Many enemies B. Train hard. Spike down B. Spike planted. One enemy remaining. Side. My ultimate is not ready. Nice one. I'm out of here. मुझे लेने दे, मुझे लेने दे, मुझे लेने दे। I've tried explosions. Not a fan. Enterprise breach detected. All security staff with level 6 clearance report immediately to levels 1, B1, and B2. रायन भाई सुनो, आप जाओ बी। सेज मेरे साथ आ, डिसिंग मेरे साथ है, मेरे साथ है। मैं कहाँ हूँ? मैं बी रहा हूँ, मैं मिड रहा हूँ। छोड़ तू जा। मिड दे। मैं बी रहा हूँ, मैं बी रहा हूँ ना। On my mark. बंदे है क्या? बी आ रहे हैं हाँ। Wall raised. Right here. अबे यार ये कहाँ से आ गया? बी मिड से देख लेना, मिड से भी आ रही है। Spike planted. Enemy down. फिर लोकेशन बता दो डार्क। Not ready yet. Shock dart. Someone is B. Shock dart. Reloading. Someone is B. Last player standing. सेव कर। दूसरी साइड से आ रहा है। Gotta go. थोड़ा लैग कर रहा है गेम, पता नहीं क्यों। Please power down all devices and manually remove connected hardware. My ultimate is not ready. बी अगेन। Right here. देख लेना कोई। Got one. Silence. हील दे से जल्दी आके। अरे हिल। अच्छा उनको दे दो। Right here. For you. Right here. अरे उनको दे अबे दे। किसको दे दी? Scanning ahead. Someone is B. साले जल्दी कर। My ultimate is not ready. I'm out of here. Shock it. Barrier created. Go, go, go. Back up. Go, go, go. कितनी देर बची जल्दी बता। Reloading. Gotta go.
आती 30 seconds I'm left. out of here. मिड यार मिड और है। Healing you. There. जा। 10 seconds left. Planting B. Spike planted. Last player standing. One enemy remaining. I'm out of here. Hello. Almost out. Go, go, go. अगर भाई ये नेट मेरा बीच में चल वैसे बीच में खुद से तो Gotta go. ये हो रहा है Watching here. कर दो। हाँ रेना 148 है भाई। अरे नाइस यार नाइस। इजी गेम One enemy remaining. नाइस नाइस। यार यार मिड पे ही है। तो भाई जाओ ना उसको हेल्प चाहिए। Last player standing. मिड पे था वो डब्बे के पीछे था सोवा भाई डब्बे के पीछे था दूसरी साइड से भी आ सकता है ए पे हाँ ये Spike planted. टीएसपी है Right here. Revealing area. नाइस You had your fun. My turn. राइट 14 सेकंड बची है पीछे आ गया वो Clutch. सोवा भाई देखो तो प्लान भाई देखो मैं आपको बता रहा हूं अगर ऐसा हो ना तो आपको है ना 14 सेकंड छुप जाना भाग जाना वहां से ठीक है 14 सेकंड में कोई बम नहीं फट रहा था वहां आपको बोल रहे थे आप सुन तो लिया करो यार कोई ना अभी Go, go, go. वो मार दिया था लेकिन उसने अल्टी यूज करा था ना दोबारा आ गया था वापस हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको बोल रहा था तो उस टाइम पे आप एक बार हो जाते हैं सुन There. यहाँ पे एक स्मोक दियो ठीक है ठीक है। भाई The hunt begins. ये क्या? बोल कर Watching here. बेटर क्लोज कर दो। This is ready. अरे सेक्सी Right here. Scanning ahead. Spike planted. Found them. Last player standing. भाई बॉडी लगा यार। इसमें छिपा मत छोड़ना इसके बाद मैं सीधा सिल्वर 1 पे गिरूंगा वापस से मैं बिल्कुल Go, go, go. रैन भाई मेरे साथ आओ रैन मैं मिड पे हूँ। रैन भाई मेरे पास
ए पे आओ ए पे देखो 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 यहाँ से अपना वो डालना Barrier created. Camera taken out. Spike down mid. Spike mid, hello. Someone is B. No charges left. Opponent killed. One enemy remaining. Vandal कौन सी है? Trying. Reloading. Need a drop. Salamat. Thanks. Gotta go. हाँ मैं मेडिसिन फ्रैंड भाई में मेरे साथ हो, फ्रैंड भाई मेरे साथ हो। देखो देखो आपको मैं क्या कह रहा हूँ अंदर की साइड यहाँ से सीधा डालो बिना जंप अंदर की साइड जाना चाहिए जो मार्क किया ना देखो दीवार पे जाना चाहिए Barrier created. दिएगा नहीं पे ही Found you. Reloading. They found my wire. Shadows traveling. My eyes are down. Reloading. Right here. I'm out of here. Cover going out. You fought well. अबे यार Still in sight. वो यहाँ पे अंदर ही बैठा है मरा ही नहीं भाई मरा ही नहीं दो चौक है रिवाइव दे जैसे 30 seconds left. No charges left. Your duty is not over. That sucked. Go, go, go. Here we go. Spike planted. One enemy remaining. The blues. अल्ट यूएस हो गया Spike's dead. ओक चलाऊंगा नहीं चलानी जो नॉर्मल गन लो ओ बाप कोई बात नहीं ट्रायन भाई अपना ईएसपी फेंक दो Right here. My ultimate is not ready. आ रहे हैं All raised. Enemy spotted B. Reloading. The hunt begins. My territory. My rules. Multiple enemies B. My ult is ready. Spike planted. अरे क्या कर रहा है प्लेयर भाई मेरे दोस्त ने कंट्रोल Last player standing. भाई क्या हो गया I'm out of here.
जो साइफर साइफर नज़ा बाबू Wall race. ये आएगा क्या? Not yet. ये पे नहीं है। It's you and me. Not kill my ally. One enemy remaining. Spike down B. I've survived much worse than you. Reloaded. भाई नियॉन मेरे मुंह से हट के मार ले भाई थोड़ा मेरे को क्यों ब्लॉक कर रहा है भाई अरे मुझे पता ही नहीं था यार भाई फिर मुंह पे बैठ गया भाई लिटरली अरे वो कैसे चेंज करते हैं मार्क करने वाला Z से होता है जो यहाँ पे डाली हुई डाल 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 अरे नाइस There they are. अरे मत डाल सारे मत डालो अभी डाल Neutralized. अरे सेक्सी अरे बहुत You had your fun. My turn. One enemy remaining. सेंसी कम कर दी ना मैंने 1 से कम कर दी ना सेंसी Spike spotted A. I need this. D-Rob Thank you. Tanku Gotta go. जाओ 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 जैसे आपको बोला था Right here. यहाँ से जाना चाहिए Here. Barrier created. भी है क्या तो मैं मिड से जा रहा हूँ Good at it. Cage triggered. Right here. Give me a corpse. Give me a corpse. Cover going Got up. one. Blinding. Last player standing. Spike planted. Got one. My ult's ready. Last round in the half. Go, go, go. I need this. Europe I am Gariba no Europe it's okay ले जा वेंडर ले जा वेंडर ले जा वेंडर ले जा फ्री में जल्दी ले जा Watching here. तेज को दे तेज को Gun here. ये रखी जैसे अबे Enemy mid. Go, go, go. Enemy mid. तेज उठा दियो I'm out of here. याद There. Enemy mid. Reloading.
हेड में मर गया था ना। begins. गेम की भी Removed. Stealing sight. Last player standing. भाई यार कोई नहीं। नहीं क्यों? कोई ना, Switching अपना कमरा sides. दिखाओ। Gotta go. मार मेरा अपना बैठूंगा देखो अपना ये सिक्का देखो, डबल जंप लगाना, देखो मैं बता दूं कैसे करना है। There. यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है ना? यहाँ से लेके वहाँ पे जाएगा, ठीक है? डबल जंप एक राइट क्लिक करना है, बस एक राइट क्लिक, जब निकालोगे ना तब एक राइट क्लिक। बस मारना किधर है बताइए मुझे। तो वापस मार्क कर देता हूँ There. यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा। Revealing area. Reloading. अरे फ्रेंजी उठा लो, नीचे पड़ी है। एक तो मार दिया से ठीक कर लेना खुद को। Last player standing. Unavoidable. Spike down B. I have the spike. वॉल कर दे। बॉल मत कर, वो ले ले। One enemy remaining. ब्लू Wall raised. अरे एंटी 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 30 सारे लोगों ने 90 नीचे रखी थी, मैं दे रहा था पर नहीं सुनी बेंचो। अबे फिर वापस गिर गई थी। आओ ये चलो, ये चलो, ये चलो, आ जाओ। उसके बाद मेरा सीधा सिल्वर बनने का। Cover going out. Shocking. Scanning ahead. I'm out of here. Spike down A. Cage triggered. Careful now. Planted the spike. Last player standing. Go, go, go. Here. मिड से आओ, मिड से कुछ करते हैं। मागी छूत रैंक। Here. पास लोग को मिड टॉप, ठीक है डन। मैं मार में डार्ट मारता हूं पहले। Shadows traveling. भाई मार यार। Remove. स्मोक करके इसके अंदर से मार दिया। और अब प्रॉब्लम को Spike planted. My ultimate is ready. Barrier created. Your duty is not over.
for a second. Reloading. Last player standing. I'm out of here. हेलो आवाज आ रही हेलो 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 आ रही है। Go, go, go. आ रही है Shock it. Shortcut. Enemy B. Cover going out. Revealing area. Shadows traveling. Enemy spotted B. Reloading. Barrier created. Kill. Gotta go. Enemy removed. Spike planted. अरे फैंटम ले लो। One enemy remaining. My ult's ready. Okay, time for a break. ये वाला मैच पैंचो I need this. टी-रॉप दे दो। किसी को बैंडल चाहिए किसी को मेरे को दे सकता है, मैंने बाय करा है। Need a drop. Salamat. Thanks. Gotta go. I'm out of here. Cover going out. There. Scanning ahead. Gotta go. Duder. Gotta go. Sorry. बताओ हील For you. भाई लगता Neon. हमारे पीछे बंदा है सार्थक भाई स्पॉन से 2 आ रहे हैं My ultimate is ready. I found my wire. बैक स्टेप 2 हैं। Last player standing. गया भाई मैच में ऐसा लग रहा है I'm out of here. भाई कर भी लोगे कुछ नहीं होना आ जाओ मैं कह रहा हूँ नहीं मैच क्या करते हैं ये वाला This is the end. This is the end. Shadows traveling. This way. Revealing area. Go, go, go. Shadows traveling. The hunt begins. Plant the spike. Reloading. Wall raid. Gotcha, fun. My turn. Light plant. My ultimate is ready. Deleted. Careful. Where is I'm outta here. everyone hiding? One enemy remaining. Flawless. The blues. You guys are so much better than my last team. Reloading. चलो जो मिड चलो मेरे साथ यहाँ से मिड चलो 2 वहाँ से जाओ 2 यहाँ से जाओ
ओके सर। स्मोक कर देना मेरे को। जी सर। मिड टू बी यूज जाना, ठीक है चुपचाप। There. The Blues. Enemy spotted A. Light planted. Wall raised. Right here. Camera taken out. We tend to dust. It's you and me. Last player standing. भाई मैं बता रहा हूँ मेरा दिमाग है ना नेगेटिव में चला। मैंने नेगेटिव खेला है, मैंने लिटरली दिमाग से नेगेटिव आके खेला है मैंने। दिमाग Go, go, go. नहीं बोल रहा मैं, बट फिर भी जीत गए। ओडिन क्या करना है? स्पैम करना क्या करना है? Watching here. There. There. स्पैम करना क्या करना? समझ आ रही है? Yes. Cover going Barrier here. killed. Shadows traveling. Reloading. You will not kill my allies. Stay in sight. Revealing area. Cover going out. Stand down. Reloading. Light planted. No charges left. ऐसा मिलता है बस यार भाई। So अभी अल्टा भी। One enemy remaining. Market, nice. इसको साले को पता होता है कहाँ है बंदा क्या एकदम। तो भाई जो बोलता हूँ इसके अंदर कर दिया करो यार, प्लीज यार। Enemy spotted mid. Gotta go. अरे रोटेट मारते हैं। अभी अभी नहीं मैं तो है फुल, आप ले लो। Spike is here. Gotta go. I had the spike. Shocking. They found my wire. Spike. Spike down A. Reloading. मैं टीपी कर सकता हूँ, लो।
पिक मत हट जा, तू जा। Last player standing. Thirty seconds left. Match point. I'm out of here. Need a drop. अरे क्या यार I'm out of here. मुझे देखते हो मैं पूरे टाइम शॉटगन लेके भागता रहता हूं। फैंटम चला। I need this. Mid smoke do, mid Thank smoke. you. Cover going out. Enemy spotted mid. राइट तक नहीं। अरे यार। Spike down B. Last player standing. My territory, my room. One enemy remaining. Ace. Ah, you forget. I've always been a killer. ओए अब तो जीतना पड़ेगा भाई। ये सार्थक ने कैसे मार दिया भाई? अब तो जीतना पड़ेगा भाई। नो फकिंग वे। लेके जाओ यार अल्टो। अब मार यार, बैंक तो पहले ही चालू होते ही मार दूंगा भाई। किसी को ठोकूंगा इधर दीवार के पीछे से मार दूंगा। Gotta go. सुनो कुछ मत करो। Gotta go. पीक मत लो। कल स्मोक हो जाना। Short guys. Shadows traveling. Spike down mid. The hunt begins. I have the spike. Scanning ahead. एक ए जा रहा है। ए जा रहे हैं। ये 2 मेन पे। Put down. ए पे एक बंदा। हेलो। प्लान देने के बाद 30 seconds left. प्लान यहाँ पे। Scanning ahead. अब ये बक्से पे चढ़ जा इधर चढ़ जा। ओ भाई आप यहाँ पे नहीं, आप इस बक्से के नीचे जाओ, यहाँ पे जाओ स्पाइक के पास। भाई अब इधर देखो। लो इधर देखो। Cover going out. Last player standing. One enemy remaining. आ चुकी है। Defenders win.
भाई 2 मिनट वेट करेगा क्या? I am coming, Phoenix. I am coming. Wait. Nah. My bad. Hello, dishing भाई, hello. वेट कर रहा है ना 2 मिनट. बंदे बुला ले, कॉम पे खेलेंगे. मेरे साथ नहीं खेला वो. अच्छा, वाह. अबे डुअलिस्ट खेल लेता तो भाई. ओमन स्किन दियो. मैं तो इधर मजे ले रहा था नेवेटेड में आके. नूब बनने की एक्टिंग कर रहा था और फिर अच्छे खासे बंदे मार दिए. एक आधा क्लच निकाल दिए. ये लोग पागल हो गए थे. बस अनवेटेड में किल होते हैं वैसे. कॉम्प में पता नहीं क्या हो जाता है. लिटरली मैं एक एस मारा हूँ भाई. वो भी 1v5 अकेले ही बचा था. और यही कॉम्प ही में लगते ही नहीं भाई. हो जाएगा. मैं क्या लिए राउंड करता हूँ. ए गाइस ये दिया भाई. 80 ऊपर है 80 है. एक बंदा डिफ करो, एक बंदा कवर दे दो. बढ़िया कर दो. डिफ करो. छोड़ियो मत, डिफ मत छोड़ियो. वो पागल है, उसने स्मोक दे दिया झंडू ने. जीता हूँ. काश फॉर्म पे भी जीतता. कोई बंदा बुलाता हूँ यार. विकेट में अच्छा बंदा आया था भाई. हाँ पहले तो ये मैंने जो इसके साथ खेला, मैं इतने अच्छे बंदे आए थे ना. लिटरली बताता हूँ मैं क्या था. 3-11 था, फिर 13-11 मारा भाई. एक भी नहीं जीतने दिया. खोल दिया भाई. अबे भाई वो दो तो अनवैंक दे दूं मैं सामने वाले. नहीं अच्छा बंदा था ऐसे. अभी मिला था मुझे अनवेटेड में. अच्छा बंदा था.
बट वो है क्या गया अबे अभी तुम किसके साथ खेल रहे थे? अभी तुम किसके साथ खेल रहे थे? अच्छा अच्छा बताया। हाँ हाँ बताया बता। सोवा नहीं कर जी। बढ़िया बढ़िया। अब कॉम्पी खेल रहा है क्या? 5 स्टैक ही खेलेंगे कॉम्पी, ऐसे है ना, नल्ले बंदे आ जाते हैं। एक अनवेटेड खेले थे, मैं थोड़ी जेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल थोड़ी जेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं जेट दिखाता हूँ अपनी। जेट बहुत फन का रहता है। हाँ Match found. भाई मैं बताता हूँ, कल मैंने किया था नियॉन के साथ सीन। एबिस का मैप था, नियॉन ने अल्ट मारा, मैंने वो ऑन था मेरा डैश वाला, ठीक है, डैश वाला ऑन था, मैंने मारा अप डैश उसके मुंह पे पीछे जाके उसके पेल ली। वो क्या भी अच्छा मारा भाई। नियॉन का अल्ट बहुत इजी बच जाता है जेट से भाई, कुछ भी बच सकता है भाई जेट से। मेरे को एक चीज का डाउट है, पूछूं क्या? जैसे जो बीच का अल्ट है, अगर जेट हवा में होगी तो भी लगता है स्टन? ट्राई करूंगा एक बार ना। ये बहुत अच्छी कैरेक्टर है जेट, अगर किसी को एम बस एम बेस है। I am the beginning. I am the end. ऐसा अनवेटेड था, कुछ नया खेलते ना। मैं तो सारे खेल लेता हूँ, पता नहीं क्यों, जब जो मन किया जब उठा लेता हूँ और फिर हक देता हूँ। I'm out of here. I'm out of here. मैं तो नहीं जानता, वो किसी ने नाम भी चेंज किया वो तो। Go, go, go. ये मेरे पुराने दोस्त थे ना, वो था, बट धोखा दे दिया सालों ने। एक बार ये चला गया था। Revealing area. Many enemies B. Reloading. Enemy down. Enemy B. No charges. जैसे ऐसा बैकस्टैप नहीं है, पता नहीं Silence. One enemy remaining.
go. Flawless. I love you all. Why you're dead? Watch. I'm out of here. अरे मेरे को बंदा देखने का मौका ही नहीं देते लोग। Scanning ahead. Found them. Yikes. Enemy spotted B. There. For you. Enemy spotted B. Killed. One enemy remaining. No way, we're the same. Gotta go. अबे उठ, अबे भाई गन नहीं उठी। Gotta go. Go, go, go. ये चाहिए क्या? सेव कर लो एक और गन हो जाएगी तुमसे। मैं भी सेव कर रहा हूँ। I'm gonna save. ऑपरेटेड कर रहा Go, go, go. Here. यही चलाऊंगा। वही। Get me भाई। Enemy spotted A. Anti-verbal here. उधर कहाँ चले गए मगर? On my mark. There. Multiple enemies B. My ultimate is ready. One enemy remaining. Wall raised. Spike planted. भाई मिड से आएगी। मिड से। अरे यार मैं देख रहा था क्या? नॉन के पास है भाई। There. I'm out of here. Gotta go. भाई ये लिख रहे थे वेना, अब तुम डेड हो वेना है। मैंने कहा वे है वेना। अच्छा यू लिख दिया क्या? ये थोड़ा हो जाता है। There they are. Enemy spotted B. नहीं देगा प्लीज भाई। Remove. Enemy spotted B. Grounded. No more. Enemy spotted B. Barrier created. Spike planted. Enemy. One enemy remaining. Last enemy taken out. Reloading. भाई ओवरराइडर तो है भाई। क्या मतलब कल तक मेरे को स्नाइपिंग नहीं आती थी। I'm out of here. अनवेटेड में डैमेज तो लगते हैं भाई। Go, go, go. कहाँ हो भाई? Spike's here. The hunt begins. There they are.
those back. For you. Spike down mid. My ult's ready. ये यार मेरा पर गन थोड़ी न लिया, चेंज कर लो क्या? Here we go. भाई प्लांट क्यों नहीं देता? ये प्लांट का है। अबे यार Last player standing. दिया दिया भाई। 30 seconds left. One enemy remaining. Go, go, go! Gotta go! भाई कैसा लग रहा है मेरा जेट अभी तक? Reloading. Reloading. भाई एक वन शॉट दे गई और हो गया भाई। I'm out of here. Scanning ahead. Spike ladder. Barrier created. Bye bye. I'm out of here. Gotta go. You had your fun. My turn. One enemy remaining. That's 3. I'm out of here. Go, go, go! Go, go, go! Gotta go! Nope. Nope. Reloading. Multiple enemies B. नियॉन के साथ ये लाइव में प्लीज। Enemy B. Enemy B. Healing you. One enemy remaining. Well, my ultimate is ready. भाई प्लीज। Enemy spotted. Mid. Stealing sight. Last player standing. Wall raised. ये रिवाइव करना इधर जाके। Light planted. भाई No charges left. You will not kill my allies! Clutch. तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। Gotta go!
Reloading. Go, go, go! Hi! I'm pissed! Night night! Be gone. Healing you. Watch them run. One enemy remaining. Gotta go! Gun here! I'm out of here! क्या किया तुमने भाई? उसे आज तो मार दिया, कलप गई। Watching here. भाई ये लाइनअप साथ है भाई। 5 बार Enemy spotted B. Enemy spotted B. Your fault, my ult's ready. Enemy. शेज हील में, शेज हील में, शेज। For you. The hunt begins. लेना तो इधर भी है। Killed. 30 seconds left. दोनों का ही नहीं पता कहाँ है। Reloading. Spike planted. स्मोक दे दो। दो एंगल। Last player standing. हग दिया, हग दिया। Get out of my way! One enemy remaining. एंटी भाई अच्छा मारा है, बहुत अच्छा मारा है। मैं हग भी मार सकता है। I'm out of here. Need a drop. जॉन भाई बाय देगा क्या? जॉन भाई बाय देगा क्या? Nope. Need a drop. No. मना कर। Anyone need anything? Need a drop. Thanks. Taken out. Deploying drone. Enemy spotted B. पता
है कैसे मार के जाऊंगा। देगी कुछ भी। Gotta go. Gotta go. Almost out. There. Light planted. Nope. Coming through. Here we go. Last player standing. One enemy Imposter remaining. killed. पक्का पक्का गाड़ी आ रही है, गाड़ी लोडेड। Go, go, go. मैंने मरवाया इसलिए। I'm gonna save. I can buy. Who needs what? Need a drop. Thanks. Need a drop. Need a drop. I have the spike. Deploying drone. I'm out of here. 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 Enemy spotted mid. नाइफ कर दिया। I'm out of here. Reloading. Silence. My ultimate is ready. Spike down mid. भाई एक Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. You will not kill my allies. Enemy pumpkin. एक को One enemy remaining. Blinding. काट दो इसमें। I have the spike. भाई मेरे को काट दिया भाई शेज ने। Last round before the switch. नाइफ करवा। Go, go, go. Spike is here. Weapon here. Spike is here. Watch this. There they are. Multiple enemies B. Be faster. Violated. Enemy B. Outside. Enemy B. Spike down B. One enemy Enemy remaining. down. Ow. Watch them run. Switching sides. Need help. Shadows traveling. Found them. Enemy B. Enemy spotted B.
Spike planted. Enemy spotted A. Reloading. Gotta go. Cover going out. Diffuse. One enemy remaining. I've tried explosions. Not the fan. Reloading. Enemy spotted A. Go, go, go. Shadows traveling. Found them. Enemy B. I'm out of here. Spike planted. Headshot. I'm out of here. Shock dart. Back. Last player standing. सोवा दे बैक. Gotta go. Wall raised. There they are. इस पे वैंडल आ गई यार. बी प्लांट होगा. 120 है नियॉन. Spike planted. Enemy spotted B. Cover going out. ब्लाइंड लेके जा. Blinding. Last player standing. Need a drop. Go, go, go. अबे क्या दिन आ गए वे तेरे. अनरेटेड खेल रहा है. मैं भी अनरेटेड खेल रहा था. नियॉन लेके कितना 20 किल किया मैंने. Scanning ahead. Shadows traveling. उसमें भी 13-11 से जीते. Spike down B. Spike spotted B. Reloading. Opponents killed. Last player standing. गन पे क्लिक करता हूँ तब अल्ट में अल्ट करने गया. 2 बार आईडी लग गया. लौड़े जैसा मुंह हो गया.
भाई मजा आ रहा था लेकिन भाई कोई टेंशन नहीं बहन चो कोई कहीं भी जाए गांड आज मेरे पापा का बर्थडे है क्या भाई? हैप्पी बर्थडे पापा लिखा है दीदी ने। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी बर्थडे एटीएम सॉरी सॉरी। Hi! I'm pissed! अबे इसमें तुम्हारा भी वही हाल है 9-7। यही हार रहे हो क्या? Spike planted. स्पेक्टर की अच्छी गन कब आएगी यार? ये ना Last player standing. मेरे में ही नहीं आती पैंच कुरनामी आ जाए रिवर भी आ जाए ले लूँगा। स्पेक्टर यूज करता हूँ रन एंड गन में बहुत अच्छा काम आता है। ये हेड भी लग जाता है ना कभी कभी धोखे से। क्लोज में तो जीत ही सकता है लॉन्ग में ही हटता हो क्लोज में तो बुंड आई मीन बाइंड जैसा मैप्स पे तो भाई सेक्सी चलता है। बाइंड पे स्प्लिट पे जैसे ज़्यादा मोर है उस समय कोने कोने में बैठो काम मारो। आज अपने एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी बहन से। Enemy killed. Enemy spotted B. Enemy marked. Here. कॉलेज का Spike down. My B. turn. Ult is ready. One enemy remaining. What's this? There. Enemy B. भाई छोड़ दो ये सही है। Looks like I was the stronger one. A new way to share college stories. Not now. I need this. Thank you. अबे सनरूफ खोल के ऊपर पटाखा वाला वो नहीं होता है वो जिसमें 16-17 पटाखे होते हैं वो हाथ में लेके चला रहा था गाड़ी चलाते हुए वो अंदर गिर गया। चीज भी भाई मैं चीज लवी Healing. Need healing. Stick together. भाई चौको लगा के Need healing. Spike planted. Revealing area. Last player standing. अरे अनरेटेड में भी यही हाल रे यहाँ मैं हार था 20 किल किया तो इमेजिन कर 20 मारा मैंने और एक 24 मारा था योरू ने और मैं जो 2-3 किल पे थे भाई रहना लेके 9 किल कर रहा है। हमारा भी सेम है भाई 24 राउंड में 9 किल किया उसने 0.3 की केडी है उसकी। इनने 25 मारे मैंने 21। The hunt begins. पहले उसी को उठा जो बकचोदी कर रहा उसी को उठा। Enemy spotted B. Here we go. सोल्ड आउट बहन चोद आइसक्रीम नहीं खा सकते रात। Too slow.
Spike down B. सोल्ड आउट हो गया. One enemy remaining. Barrier created. Not shy. मीठा खाने का मन कर रहा भाई. खट्टी चूत है भाई उसकी. भाई लाइव नहीं कर रहा है. बस कोई देखे नहीं भगवान. क्या ही ऑर्डर किया जाए ऐसा कि कुछ सेक्सी सेक्सी हो जाए. एडिशन में आता है क्या देखने दो यार. Good attempt. Smart move. ड्राई फ्रूट लस्सी. लस्सी वैसे नहीं चाहिए. Last player standing. ये ऐसा वस्तु एक चोको लावा का इतना रुपया. One enemy remaining. Spike down mid. Revealing area. Thirty seconds left. मेरे को एक बंदे का जेटी स्कूल को जानता है. अच्छा यही है यार. Need a drop. ये नहीं ये तो चल भोसड़ी के पार्टी में जाएगा. Qualquer avistamento Orin Alpha deve ser imediatamente comunicado à Atlas. Get out of my way! Scanning ahead. Found them. Enemy spotted. Take flight. Enemy mark. Spike down B. Reloading. Duck, my ult's ready. One enemy remaining. What's this? क्या ऑर्डर कर रहा हूँ. Would have sucked. Match point. नहीं अनलिमिटेड नहीं मिलता. Descubra os mistérios do nosso mundo e mundos mais além. Scanning ahead. Here. Spike down A. Spike A. Hi! I'm pissed! Grounded. Last player standing. One enemy remaining. Spike down A. Revealing area.
भाई अनरेटेड तो हार के नहीं होगा ना भाई तो काम आ रहा है तो वैसे वैसे ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है वुमेन का क्योंकि बहुत साल से लोग यही करते आ रहे हैं फोन पे कितने मारता I can buy. Who needs? I'm out of here. Revealing area. इस Spike planted. Enemy A! Here we go! Enemy A! Removed. Stealing sight. Scanning ahead. One enemy remaining. God, you're fun. My turn. Last player standing. Taken out. One My ult is enemy ready. remaining. I am the hunter. Sudden death. कुछ खाने नहीं देंगे पानी पी लेता हूँ ऑपरेटर भाई 12 कर लिया तुम लोगों ने Scanning ahead. Here. Enemy mid. Enemy mark. Spike planted. Got one. Ascendant से Diamond 3 आ गया Silence. एक बंदा याद है तेरे को Ascendant वाला Last player standing. One enemy remaining. Attackers win. अनरेटेड में क्या होता है एक ही बार में हार जाते हैं 13 हो गया तो स्मूथ ऑपरेटर माँ की चोट इस चौको लावा केक कितना महंगा क्या खेलेगा पता नहीं क्या खेलेगा रोज रोज डिमोट प्रमोट ही होता है क्या तू अरे बहन चोद ये क्या लाल लाल है ड्रॉ करके आ ओ भाई लाल ही लाल है भाई मेरा तो आधा लाल है आधा घूम फिर के जहाँ सुबह में शुरू करता हूँ वहीं आ जाता हूँ
ठीक है 5 स्टार क्या चलेगा। तो सेज क्यों बोला, तो ब्रीच ही लेना। तो इनिशिएटर कम क्या अनरेटेड खेलेगा, कॉम पे खेलेगा। नहीं है भाई, कोई एक बंदा है पार्टी में बैठा है कब से, अनएबल टू इनवाइट, ऑफलाइन गया है। मैंने अपने नाम भाई चिल गाय लगा लिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो प्लस हो, चिल गाय। ना भाई, भाई भाई अजीब लगता, फिर लड़कियां नाम कैसे देती भाई। हाँ तब रोल कर देता। चल अनरेटेड ही खेलते हैं। आता है कोई, आ जाएगा तो। कोई है ही नहीं ना भाई, कोई नहीं है। डाल दो। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। स्मूथ ऑपरेटर। तो चलो चोको लावा का तो दाम देख के ही गान फट जाता है। क्या मैं गा रहा था भाई? अच्छा उसके साउंड बार। भड़वा कह रहा था नहीं होगा नहीं होगा। अरे एक बंदा आ गया। ये फिर लेकिन भाई बकचोदी हो जाएगी भाई। तो ब्रॉन्ज है, एक गोल्ड पे फिर 25 किल मिलेगा, कैरी कर लेगा वो इंटेंस बेबी मेकर। हो जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा वो बुला लेगा ना। नहीं आएगा सर। कोई आप बता ऑर्डर करने का कुछ मीठा। लिख रहा बाबा यू प्ले बडी। से ब्लिंकेट वगैरह नहीं आते यहाँ पे। क्या नाम है, क्या नाम है कुछ तो, बिग बास्केट। ये भी तो कल सुबह में दे जाएगा। Match found. Smooth operator. स्प्लिट आ गया क्या? वाइस लूं या कुछ और ले लूं?
मेरे को किसी ने बोला था ब्लिंकिट खुला है। I am the beginning. I am the end. उन पे सेंटिनल एक ही है, बाकी सब तो सेम है भाई। इस साइड तो एक बार आ जाए, वहाँ पे मैं रहूँ, वहाँ तो बाकी के 12 राउंड नहीं आएंगे भाई वो। ऊपर देख काम कर सेज, ऐसे सेज में बताइए तो मारे अच्छा। Dizzy's up top. Dizzy has targets. Go get him. Peace. I got you. I got you. Remaining. Last player standing. You were pitiful. आया था रहना बी पे, अब नहीं आएगा। वर्ल्ड ट्रिप और फ्लैश मारा उसकी मुंह पर। नहीं मार ही दिया ना, वॉल के उधर जाने की कोशिश कर रहा था फट के। भाई वो वॉल पे गोली चला दे भाई, मेरा वॉल पे क्या लौड़ा कुछ होने वाला है। Cover going out. Enemy removed. Healing. Spike down A. Spike spotted A. One enemy remaining. Forgive me if I don't grieve. ऑडी ब्लॉक कर रहा मादर चोद। रहना मारने कब से ट्राई करो। 73 दिया मैंने रहना को। घोसड़े का घोसने नहीं दे रहा। ऑपरेटर। Reloading. Shadows traveling. B. भाई 130 से भाई मारो इसको जल्दी, जब तक वॉल्टर मारो जल्दी। सेक्सी Enemy spotted B. मारो रहना पता है उसको तुम यहाँ पे। Last player standing. Disappear. लिटरली भाई वो मादर चोद भाई ब्लाइंड में मारेगा भाई। 130 दिया बहुत बड़ी वाले को, हैंडल ले उसके। मैं देता हूँ, तुम मेरे को जज दे देना। अरे हाँ जज दे देना।
चल ले ले ले, तू मेरे को स्पेक्टर देना पड़ेगा मां। I need this. I need a weapon. Thank you. Smooth operator. Cover going out. Right there. देखना मिड। भाई मिड वॉल करना भाई, सेज यहाँ जरूरत नहीं है। तू चूतिया है, मेरा बॉल है तो क्यों कर रहा है? Need some help. Blinding. Someone's there. Reloading. My ult ready. Enemy spotted. Spike down B. तुमने निकाला। Last player standing. भाई सेज मत कर भाई, मिड ही वॉल कर, क्यों कर रहा है? आने देना, एक ही बंदा आ पाएगा मेरे वॉल के अंदर। तो लौड़ा रांड मादर चो। I'm saving. लिटरल चूतिया भाई ये। अबे ये जाओ ना, कोई ये जाओ ना यार, 4-4 क्या है, 4 स्ट्राइक करोगे यहाँ पे। Shadows traveling. यहीं आ गए बहन के लौड़े। Blinding. Shame. Spikes B. Swords activated. Obsolete. One enemy remaining. वो सेज की साइड पे। Spike down B. Last player standing. Ends for now. Smooth operator. मेरा वॉल्ट ही। अरे तो फायदा हुआ ना भाई। Cover going out. Hi! I'm pissed! ये देखो Unimportant. बढ़िया भाई। Spike planted. Bring me the arsenal! Last player standing. या नहीं रिपोर्ट से क्या होगा मरे। तीन राउंड आए ए पे 3 राउंड 3 ए पे 3 जाओ ना भाई, यहीं आ जाते हो भाई घूम फिर के। I'm saving. Cover going out. There. देखो जाके Scatter. Spike planted. Go away. Last player standing. Your duty is not over! Thank you, Sage. Reloading. Last player standing. Crash got him! कर मार उसको। रहना ऊपर है।
देखो मार अबे जल्दी जाना तू। One enemy remaining. साइड पे जा, साइड पे जा। Up and away. सेव सेव सेव। लो भाई ये लो। लो भाई ये चूती हैं भाई। उसको पता है वो स्टन है, फिर भी मादरचोद का बच्चा ऐसे कोना कोना देख के जा रहा है। भाई बी देखो भाई तुम लोग, बी देखो भाई। सुन वॉल शेयर होगा मतलब साइड पे आ गया वॉल मिलना साइड के अंदर कैंप, ठीक है? मैं फ्लैश दे दूंगा तब मारना। हाँ चलेगा। Shadows traveling. चलेगा मैं सही जगह देखो। Sword activated, right there. Need some help. रोप से आना सब लोग। Need some help. Spike planted. से रोका भी नहीं। Damn. Enemy B. Neon low. Last player standing. करो वेट करो सेव करो। यार मैं भाई भाई कोई साइड तो देखो भाई। ए पे 3 स्टैक, बी पे 3 स्टैक कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए पे मैं देख रहा हूँ। ऐसे मादर चोद है भाई। Now we wait. Flash placed. Cover going out. Somebody's there. You will not kill my allies. Spike planted. Last player standing. Reloading. के लड़ो से क्यों ऐसे मादर चुराते हैं भाई? Cover going out. Enemy spotted. No. Die. Hi! I'm pissed! Flash trap destroyed. Last player standing. Wall tripped! Spike planted. भाई जीतता है भाई। देखो जाता अभी। सरेंडर वो डाल रहा हूँ ना, रंडी के वाला दूँ। के लड़ो खेलना सीखो। Shadows traveling. लॉन्ग देखते रहना नहीं। भाई 17 किलो गए। Flashing.
जल्दी से हील अप जाओ भाई। Spike planted. देखिए 2 राउंड में Sit down. Thrash is ready. For you. Dizzy's up. Dizzy has targets. Run, little man. Wingman's down. Folded. ट्राई कर भाई, ट्राई कर विंगमैन भेज दे कुछ कर भाई। One enemy remaining. जा जा Three. Save. Last player standing. They're not ready. Clutch. Last round in the half. क्या करना है साहब? वॉल वाह वो मैं वॉल करेगा मैडम। छोड़ना भाई, तू क्यों इतना हाइपर हो रहा है? चल कर भाई। Shadows traveling. The hunt begins. Scatter. Spike planted. Oh yeah! Monster on the loose! Last player standing. ये डिजी लेने आ जाए। Just die. Bring me the arsenal. Irrelevant. अरे रुको बैंड छोड़। Switching sides. Operator. आजा मेरे साथ आ। कितना अच्छा जीत रहे थे, मिड में वॉल कर रहा था तो बैन कर रहा था। ए पे जाओ तुम लोग, ए पे जाओ, हम आएंगे मिड से। ए पे को लैंड देके रहना, एक दो तीन निकाल के पिक करके आराम से आओ। नहीं कुछ मत। Cover going out. Kia. Enemy A. Sufficient. वो क्यों गया उधर? अच्छा Wall set. मारो बे, ब्लाइंड देके मारो बे। Gotcha. एक और एक और। इसकी छत पे गाड़ मारेंगे, हमें उधर ही आएगा तुम। One enemy remaining. Reloading. Charges. I have the spike. You can't see my face right now, but just know I'm smiling. स्पाइक मेरे पास ही रहते, बड़ों के पास रहेगा, मर जाएंगे। फुल शील्ड ले, स्पेक्टर है। फुल शील्ड ले, स्पेक्टर ले। फुल शील्ड नहीं आ रही तुझे? हाँ फुल शील्ड लेना। अच्छा किसका देख रहा हूँ मैं? एक्सपो का देख रहा था। अब ए जाओ तुम लोग, बकचोदी मत करो, ए जाओ, वहीं से हम लोग घूमेंगे। ए जाओ तुम, सेम है, बस पिक कर लेना एक दो। Flash placed. Flashing.
ये जाओ मारो बहन के लड़को। तेरा रुक के हाँ इधर रहना मारा था याद है ना। रेडी पे वो होगा। Enemy spotted. Mid. मार को तो। One enemy remaining. Heal देना सेज, heal देना सेज, heal दो हमें heal दो। Heal खत्म हो गई। Placing wall trap. तो ऑपरेट होल कर दिया था। Spike planted. Blinding trap. तो राइट में लेफ्ट देखता हूँ। नहीं तो राइट में लेफ्ट देखता हूँ। हिल आ जा तो पीछे बढ़। Last player standing. Wall tripped. Flash trap destroyed. इसका सेज I need this. फुल शील्ड ले तू फुल शील्ड लेना। Thank you. नहीं मत देना को क्या देगा भाई। रहने दे तुम लोग बस किल निकालो पिक करो। भाई तुम बस पिक करो ना भाई स्पाइक लेता है वो। वेट कर आने दे। उसमें आ गया। वही कर। तो इधर रहता हूँ। आजा साइड चल रहा है। देखो स्पाइक ले रुक जा। देखो कोई भाई। Enemy spotted. Drop the spike. I got the spike. Good hit. आया। Wingman's gonna plant spike. Placing wall trap. Cover going out. Spike sticking. Thanks, little man. Reload. देखो पीक नहीं कोना पकड़। Blinding crack. Shadows traveling. ऊपर आएगा बाद में तो बताना मैं। One enemy remaining. Enemy spotted. A. मार्क भाई। I'll have what I owned. Reloading. अबे कितना मुश्किल से पिक निकाल के मार रहे भाई। Hola. स्पाइक दे रहना स्पाइक दे जब हमें ठीक लगेगा हम दे देंगे तुझे। स्पाइक दे। एक काम करो सर तुम लोग बी चले जाओ बी पे करो बी पे हमला करो हमारे रहना जा भाई बी जा हमारे साथ मत आ बी जा उनको ब्लाइंड लाइन दे तो दिखा के तो वाले पूरा पुश मत करना बस हल्का गोली चलाते रहो टक 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 बस काफी है। Scatter. कर देंगे आजा बी से चलेगा चल बैक स्टार देते हैं। नहीं था भाई अरे पुश नहीं करना था पुश नहीं। Last player standing. Spike down B. भाई इसको तो नहीं मारना था ना भाई। अरे और का लौड़ा हो गया भाई मेरे पास ओडिन के पैसे है भाई इतने पैसे हो गए।
अगला राउंड ओडी नहीं करेंगे भाई, नहीं जीतेंगे तो। आ जाओ देखो भाई, मर मत ठीक है, मर मत तू चिल कर, मतलब तू बस मार, कोई दिक्कत नहीं। ऑल मिड मिड। आजा Shadows traveling. ब्लाइंड दे। Reloading. Saw you, little homie. Flash placed. Blinding. Good hit. My blind is dead. Last player standing. Spike Gecko's down gone. B. भाई गलत किया भाई, मेरे साथ आए नहीं भाई, मैंने तो ब्लाइंड का। अच्छा तेरे को ढंग से आवाज नहीं आता है क्या ब्लाइंड का? मैं मेरे से होता है तो गुड हिट करके कुछ बोलता नहीं है क्या? Reloading. अरे मेरे को तो सेज ने मारा भाई, मेरे को तो बॉल के ऊपर चढ़ी हुई थी, वो ब्लाइंड थी, मैं घुसा 74 का डैमेज दिया, उसने हेड मार दिया। चलो तो इसका भी अल्ट है, सबका अल्ट है ये राउंड की। Cover going out. Blinding crack. Cutting their vision. Good hit. Up away. My blind is dead. My ultimate's ready. Bring me the arsenal. Wall set. Stealing sight. साइड पे मारा तो I'll die when I'm ready. No charges. Rip and tear. Oh yeah. Phones are Monster on live. the loose. Launching sword. One enemy remaining. Phones are live. राइट ऊपर सर्च करेगा, अल्ट लेके गया वो। You were beautiful. तो ऑपरेटर सुन, तेरा अल्ट का इस्तेमाल कर दे ठीक है, तू अल्ट कर दे। कहाँ पे पता है? एक बैक में। ओ भाई ओ, अरे नहीं पकड़ा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, ये पे ब्लैक पे जब हम पूरा ऐसे दर मारते रहेंगे ना तब करना ठीक है। ब्लाइंड देंगे हम, तो ब्लाइंड दे तब करना ठीक है। ब्लाइंड दे, वहीं पे स्मोक दे, वहीं पे करना। स्मोक के अंदर आओ भाई। The hunt begins. Flashing. Good hit. Shadows traveling. Enemy spotted. Watch them run. Behind you. जा मैं पे जाओ क्या जा। अरे ये तो जाना थोड़ी था। Enemy spotted A. Somebody's there. Hi! I'm pissed! अरे मर गई, पीछे वाली मर गई। अरे गेको चिल कर भाई। One enemy remaining. चिल कर गेको, चिल कर, कोने में बैठ। इधर ही है तेरे लेफ्ट में। Right there. पता गया ना, चिल कर। अबे चूतिए कोने में बैठ, वो देख ले। देखा अल्ट का प्लान भाई, तू लेकिन गलत जगह अल्ट किया भाई। मैं तेरे को ए बैक बोला था, ये कहाँ अल्ट किया था तूने? तो वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पे क्यों किया था? Here. Reloading. कर दो, ए पे कोई फेक करो। को बी पे रुको, बी पे। अरे बी पे जाओ, तुम जाओ, से जाओ भाई, उनको जरूरत होगी। Flash placed. Flashing. Cover going out. साइड पे ये साइड पे ये ठंडा हो गया। आया चप करके चलते हैं। हाँ ले लिया वो, मैं मारते ही ले लेता भाई, वरना डिस्ट्रॉय कर देते हैं, 40 सेकंड बाद आता है। आ रहा है मिड में, आ रहा है, इसको जाने। Reloading.
Reloading. किया उसने है लेफ्ट Healing you. एक लाइन में मत रह पीछे से आ सकता है देखो पीछे Enemy से आ spotted सकता है B. पीछे से आ सकता है Last player standing. Does he have targets? अंदर बच्चा छोड़ दे Go get him, buddy. Shot my wingman. One enemy remaining. I'm good for 3. Ready. अरे भाई गेट को तूने मत मारे लेकिन लौड़े लगे हार गए बे Match point. अबे तेरे को बाइक चाहिए तो डिसिंग मैं देता हूँ भाई ले ले भाई I need this. यार प्लान हल्का सा बकचोद हो गया भाई ब्लाइंड तो हुआ मैंने तो हल्की अरे तू पीछे चेक करना आपसे ठीक है मैं आगे पूरा देख के गया था Blinding prepped. Blinding. Good hit. Reloading. अरे बहन की लोड़ी आ रही थी भाई क्यों क्या मैंने मत करवान लो सेक्सी भाई रहना सेक्सी है स्पॉट भाई टाइमलाइन देखो तो भाई जा देखो जहाँ तेरे अल्ट की बारी वो देख लेगा मैं ऑन साइड Cover going out. Shadows traveling. One enemy remaining. ब्लाइंडर हाँ दिया तूने Last player standing. क्या हो रहा भाई अच्छा 12 कर लेते हैं इसका तो उड़े नहीं उड़ी चला देंगे क्यों नहीं रहा है भाई वो भाई चाहिए तो ले लेना भाई नहीं Blinding prepped. Blinding. Shadows Good hit. traveling. अरे जाना नहीं है रहना रहती ऊपर रहना Placing wall trap. My ultimate is ready. Launching thorns. Thorns activated. Stealing sight. Flash placed. Wall tripped. Many enemies A. Or spike down A. Last player standing. Reloading. Defenders win. Smooth operator. I am not try the what क्या भाई तो कमी माइनस लगनी चाहिए अरे बहन भाई तेरी नहीं भाई इतने में तो नहीं आया बंदे हैं जो खेल रहे हैं क्या हुआ सिल्वर टू 60-70 पहुंचो फिर माइनस करा के वहीं पे आ जाओ कब होगा सिल्वर 3 स्टक हो गया हूँ गाइस बंदा है मेरे पे
मेरा क्रॉस है अच्छा भाई, कॉपी करेगा क्या? सेक्सी क्रॉस है अभी वाला, किल अच्छे होते इस पे। सिर्फ एक हल्का सा टूटा। स्मूथ ऑपरेटर। हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा। कल क्या है, संडे? नहीं सैटरडे है। हिसाब मत कर भाई, कब बीतता पता भी नहीं चलता है। खेलना है क्या और? काम पे क्या खेलना है? अनरेटेड खेलते आ जा। मत कर भाई, स्पाइरस खेलते हैं ठीक है, उल्टा सीधा कैरेक्टर लेके। हैं? 4 राउंड जीतने वाला किस में होता है? एस्केलेशन, स्पाइरस। हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरा को भी कुछ ऑर्डर ही करना था, 10 मिनट रेस्ट ही लेते हैं, इतने में कोई आए तो आए। ठीक है। स्मूथ ऑपरेटर। और हैक एक बंदा है क्या और कोई? नहीं है। मैं कोड बीटा दे रहा हूँ। डीसी क्या तेरे पास कोई हो तो बुला ले इसको। है क्या? बुला ले बुला ले। कर ले। स्मूथ ऑपरेटर। क्या छोरा आदमी छूती हैप्पी गांडू। मगर कोई खाने का ऐप बताओ ना जो 10-15 मिनट में कुछ ले आए, आइसक्रीम वगैरह। अभी मेरे मेरे दोस्त को कॉल कर दे, वो डिलीवरी करता है। कहाँ पे? कहाँ पे घर है तेरा? वहीं पे कर देगा। घर नहीं यार, पीजी है बैंगलोर। बैंगलोर में रहता है क्या भाई? क्या करता है? कॉलेज है भाई फिलहाल। क्या कर रहा है भाई? कौन सा कोर्स है? वही जो सब कर रहे हैं भाई, कंप्यूटर साइंस। अरे वाह, आईटी वाईटी में है क्या या फिर नॉर्मल ऐसी प्राइवेट? नहीं प्राइवेट ही है, लेकिन वो को पार्टनरशिप है। कौन सा ईयर है भाई तेरा? बकचोदी है वो, मुझे भी नहीं पता। सेकंड भाई। अरे 1 साल जूनियर है यार तो मेरे से। थर्ड ईयर के क्या हैं। फायदा भाई, मेरे भी उतने ही बैकलॉग होंगे, वैसे है नहीं लेकिन सब्जेक्ट पास देखो तो एक बराबर ही हो जाता है। मेरे भी 1-2 हैं सीनियर बेंच। अच्छा, बैकलॉग तो नहीं है यार, बचे हुए हैं अभी तक। इंजीनियरिंग में सीनियर अच्छे होते हैं भाई। है ना? इंजीनियरिंग में सीनियर अच्छे होते हैं। हाँ
बीटेक में बुलाओ सर, ये लोड़ा लसन मेरा लंड बुलाए ना सर। किट क्या है किससे मंगाऊं जो जल्दी आ जाए बेंचो? मंगा ले किसी से। क्या तुम्हारे पीजी में नहीं मिलता है क्या? पीजी में नहीं मिलता भाई, पीजी में आइसक्रीम कहाँ से मिलेगा? और नीचे जाके मतलब ऐसा बैंगलोर से कॉलेज का तो पता है ना भाई, यहाँ तो एकदम होंगे जो पूरे बीच में, नहीं तो एकदम साइड में। हमारा बीच में मतलब बीच में नहीं पड़ता है, वो बीच और साइड के बीच में पड़ता है। एग्जाम हो गए क्या तुम्हारे सेकंड ईयर वालों के? हाँ नहीं, एग्जाम हो गए? मतलब एंड से में दिसंबर में। अभी हुए नहीं है तुम्हारे? नहीं नहीं एंड से मतलब हमारे कॉलेज में तो खत्म हो गए सबके। सेकंड वालों के? सेकंड के भी आज खत्म हो गए, थर्ड वालों के तुम्हारे पहले ही हो गए थे खत्म। एंड सेम भी? हाँ ये सेम खत्म हो गया। हाँ भाई हमारे होने वाले हैं दिसंबर 20। चलो यार जो खेलने लो जल्दी फटाफट। ओ तो बरेडस विकास रेस खेल लो। Stand in my way. I dare you. जेप्टो तरुण खेल ले जैक। विकास तो रेस ले ले। अबे नहीं अच्छा खेलता है यार। चलो लो विकास। क्या हो गया भाई? कोई चिल गए हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेक फ्रेंड्स, प्ले हार्ड, या डोंट प्ले टॉक्सिक। कोई बात नहीं, तुम मर जाएगी, बस एंट्री दिलवाया था यार। कब कोई खाने का अच्छा ऐप मिलेगा मेरे को? मंगा ले जोमेटो स्विगी से। जब तक एक मैच होगा तब तक तेरा जोमेटो स्विगी तो मादर चोद है भाई, और डिलीवरी इतना देती है। उससे अच्छा मैं क्लब से मंगा लूँगा। भाई ये राउंड जिता दिया ना, मैं 2 चोकोलावा ऑर्डर करूँ। ये मैं जिता दिया। हमारे लिए भी कर रहा है क्या? हाँ भाई तुम्हारे लिए भी। Hey, nice work. लेकिन आएगा यहीं पे भाई। आएगा। चलो ये चलते हैं। ये यार है ना चल सकते हैं। नहीं अभी नहीं, ये राउंड तो ऐसे ही जीत जाएंगे। ऑपरेटर हमारी क्या सामने वाली? Blinding crack, flashing. Good hit. Reloading. भाई मार भाई बहुत मारा भाई। मोटा मारा। Plant the spike. Floor 92 ऊपर ही है, रेड मार दो। यूटिल मार। Reloading. मार फाइट से। Reloading. Night. Reloading. Last player standing. Clutch. मेरे को एमो नहीं बचा। कोई ना करके खत्म हो गई पूरी कोशिश। Reloading. अब बोल डेसिंग कहाँ जाना?
ऐसे ही किया कर, यूटिल स्पैम कर दे जब तेरे को लगे ना तू मरने वाला है, सारे यूटिल स्पैम कर दे भाई। Right there. मैं ट्री घुसता हूँ, ठीक है? अगर तेरे को कोई मारे तो मैं आता हूँ, ठीक है? नहीं तो वहाँ मिड से आ जाऊँगा। No peeking. Grabber. Reloading. Worthless. Reloading. 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 Bomb buddy out. Reloading. ये खाली है। One enemy remaining. Last player standing. Spike down. Defender spawn. भाई ये क्यों आया भाई? Reloading. तो पीछे से Reloading. क्या दिक्कत था? इधर से मेरा पूरा खाली करके बैठा था। Reloading. Reloading. इसने ट्री से क्या होता है? मैं वो कॉल दे दिया करूँ, मैं शिफ्ट वॉक नहीं करूँगा फिर। स्मोक नहीं दे रहे क्या? Dropping smoke. Concussing. Reload. Enemy spotted B. Lock down. Spike down B. साइड में नहीं। Last place. Not ready yet. नियॉन जज है, जज अब दूर है। Last player standing. माँ का बहुत बड़ा इसे। Placing wall trap. आजा, तेरी मम्मी की पैंटी के लिए तू आजा। आजा। Oh ना बैन। Wall tripped. पीछे सारा मादर। मिड से आ रहा है। 30 seconds left. सीधे निकलूंगा, चोर दूंगा। ये बैन का लड़ा आ क्यों नहीं रहा भाई? ऑल ट्रिप होके वापस भाग गया क्या? 10 seconds left. Shame. हाँ आजा आजा मादर चोर। बाय चाहिए फिर से ले लो। बाय मांग लो मिड से किसी कोई एक। मेरे से आ जाओ भाई, मेरे से ए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से खाली एक सेज रहता ही बस। Right there. मिड से ए में सेज रहती है, ए में ट्री में। बस आ जाओ। Drop in a smoke. Grabber. Flash out. It's ready. Bring me the arsenal. 50 लो ब्रीच, 50 लो। Redundant. लेफ्ट में। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। All set. No peeking. स्मोक हेवन, स्मोक हेवन। Spike planted. नाइस। अबे लौड़ा भाई। आराम से खेल विकास। बंद कर देना। Last player standing. और उसकी माँ 80 है लोग। एंटी। भाई बंद करते हुए। अरे मैं कॉर्नर में फंस गया। जूते की तरह मार गया। क्लोव नहीं देखा मैंने, रिलोड करने लगा पीछे। My ult is ready.
Reloading. भाई यहाँ से ब्लाइंड दियो साइड में। Reloading. भाई मैं तो देता हूँ भाई, मैं तो 2 को दिया था इस बार। Reloading. अरे ए क्यों जा रहे हो भाई? अरे तुम बी चले जाना, मैं ए फेक कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? चलो पुश करना। Reloading. Good hit. Grenade. कैसे भाई? That's fun. My turn. अंदर ही जा। अब एक साइड के अंदर है। Last player standing. Last player standing. Spike down A. सबसे पहले जो वाइट का फ्लैश आता है पूरी साइड से सब घुसो और पूरा कॉर्नर चेक करो। एक साइड में बैठी थी कैमरे। Reloading. चलो फैंटम चलाना पड़ेगा लगता है। वो क्लोव कैसे नहीं मारी? और थोड़ा फ्लैश थोड़ा वेट करके देख भाई। मेरे से जो फ्लैश होता है वो भाग ही जाता है। Enemy spotted B. My ult's ready. रेस कहाँ भाई? ए जाओ ए जाओ गाइस। पे नहीं जा सकते हैं भाई। Enemy spotted mid. तू आगे जा डिसिंग आगे जा। अल्ट मार दे। Here. Someone's in defender spawn. मिड में वो है, ब्रीच है। Get. साइड मार देना, पुश कर दूंगा मैं। अरे भी खाली है, छत भी खाली है। Watch him here. Reloading. साइड से 30 seconds left. साइड आ साइड। हेवन ब्रीच। Spike down A. Last player standing. 10 seconds left. क्या बदतमीजी है भाई। हाँ, अब भी हार्ड पुश करते हैं भाई। राइट क्यों नहीं मारा? सब वहीं थे, कोई ऊपर कोई नीचे। नियॉन शॉटगन लेके बैठती है बिल्कुल क्लोज में। Reloading. मैं ब्लाइंड दूंगा। रेज राइट में कोना होता है ना, वहाँ पे नेट करना, सीधे पुश करना। मैं सीधे साइड जाऊंगा ठीक है। अरे डिसिंग अल्ट मार। हाँ अल्ट मार। मार अल्ट यहीं पे मार, सीधा मार। Dropping उठा दे। Reloading. Spike down B. I got the spike. ऐसा There. कर दिया भाई। My ult's ready. तो लौड़े लग गए। रुक जा, 8 सेकंड दिया स्मोक है। Grenade. राइट साइड में लेफ्ट साइड में मारेगा वो। No peeking. Last player standing. यार उनकी नियॉन वैन चोप। मैं ओडिन करेगा, ओडिन कर। आया डिसिंग। करेंगे डिफेंडिंग में करेंगे। अरे डिफेंडिंग में अभी से करें, हमारे तो डिफेंडिंग हो गया 7 राउंड। Yes. तो पार्टी से हटा के दोबारा बुलाओ।
set. मैंने चलोड़ो बंद कर Spike planted. केजी भी आएगा ना इधर से ऊपर चल रहा है क्या बार बार Enemy spotted A. One enemy remaining. Die. My ultimate's ready. अरे बहन तो कहाँ था भाई अरे भाई लॉल हो गया मेरे साथ मारो सामने ही है तेरे राइट 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 ओडिन 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 भाग 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 रे अबे रिलोड मत कर भाग भाई नियॉन और किलजॉय शो दिया भाई ओडिन से Gone here. ले तू चला बस मेरे पास है बाइक के पैसे नियॉन को मार के आया उसका नियॉन आ रहा था उसका नियॉन आता है पूरा फुल चार्ज ठीक है तो थोड़ा साइड के अंदर मत जाना बाहर ही रहो उसको आने दो वेट करो हाँ उसको वेट करो वो आएगा Blinding crack. Blinding. Good hit. लौड़े लग गए भाई ये लड़ गए उधर आया इधर आया My blind is dead. मेरा लौड़ा मारे वो तो जा ही रहना Bring me the arsenal. Blinding! Off your feet! Run. Enemy spotted A. Enemy spotted. A. Flash out! Plant the spike. Spike planted. चल 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 कर ले भाई करना था क्या हाँ भाई क्यों नहीं भाई No peeking. मार कर मार कर मार कर Futile. One enemy remaining. Blinding crack. What? Not ready yet. Sorry, Manu. आगे चल भाई भाई तू अल्ट किया कर भाई मेरी गांड फट जाती है भाई अरे मेरे को लगा 5v3 हो जाएगा अरे भाई भाई मैं रिस्क ना को भाई रिस्क ना को अभी 3v4 हो गया था तुरंत Reloading. सालों ने जा 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 भागते आता है वो उसकी मुंह में लड़ दे देना भाई जोक से ठीक है आ रहा है एक बी की साइड में है कोई अरे मिड चला जा रेस मिड चला जा जा एक कार रेस भाई मिड क्यों नहीं गया भाई मिड जाना Right here. स्पाइक लेके मिड थोड़ी जा सकता हूँ किल जो स्टिल भी रोटेट कर रहा है किल जो बी आ सकते हो तुम Enemy spotted B. चलो बी चलो मादर चोद मुस्तंदी Like I never left. Last player standing. Shame. Placing wall trap. Ten seconds left.
अरे भाई कुछ करो भाई, कुछ करो भाई, डिफेंस में तो निकलेगा यहाँ, तो कुछ करो, ये 2 राउंड कुछ करो। ब्रीच यहाँ पे स्टन देना भाई। Reloading. Here. ऐसे स्ट्रेट लाइन में Here. यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा होता है। फास्ट फास्ट है मैं स्टन देता हूँ, नियॉन आएगा दौड़ता हुआ, रुको। Flash placed. Flashing. स्टन क्यों नहीं दिया भाई? I have the spike. तो पहले बोलो। Piss. Blocking sight. Bomb buddy out. Obsolete. मादर चोद। Reloading. Flash trap destroyed. सैचल मार के चल। ब्रिज मार्केट है। एक पीछे से पीछे से You will not kill my allies. मार 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 मार, चलो चलो चलो। प्लांट Plant this भाई, spike. प्लांट करो। Spike planted. Last player standing. One enemy remaining. अरे यार ये मार भी भाई, नियॉन को रिवाइव दे भाई, एक साइड तो मारता भाई मैं। नियॉन को 2 बार मारा मैंने। Last round before the switch. Not good भाई, not good. Not good. Reloading. Reloading. क्या कर रहा है डीजी? Reloading. मार डीजी मार। जेट से Reloading. चले। नियॉन आ सकती है तोड़ते हुए, ठीक है? चले। Flashing. Woo! Reloading. नहीं जेट भाई, ऐसे सिस्टम आता है। जा जा मिड में जा। Grenade. One enemy remaining. My ultimate's ready. Reloading. Someone's in defender spot. Bring me the arsenal. That's not ready. Blocking sight. Blinding. That's loud. Gun here. Switching sides. भाई एक और राउंड जीतना था भाई, एक और हो जाता ना। अरे बिना कोई बाइक की कैसे जीते? अच्छा तुम लोग जीते, मैं तो जैसे जब मैं फ्लैश दूंगा, वॉल शेयर होगा तब मारना, ठीक है? इन पे सेज ये स्मोक चाहिए तो मेरे को बोल देना। स्मोक नहीं चाहिए भाई, स्मोक बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ब्लाइंड काम नहीं करता है। ए पे बूम बोर्ड डाल दे विकास। बूंद बोर्ड डाल दे भाई, बूंद बोर्ड। जा भाई जा भाई जा, किलोमीटर से जा। अरे यस फक क्लो भाई। वहीं बैठो क्लो भाई, तुम कोने में वहाँ पकड़ के। Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. मैंने बी होल्ड किया हुआ है। ओह ये Multiple enemies mid. Here. वहाँ पर 2 हैं, ब्रीच और अरे सी। अरे भाई क्या कर रहा भाई रे? Target down.
मत मार, रहने दे। Flash placed. Blinding. Good hit. Reloading. Out of charges. 30 seconds left. Spike down. Attacker spawn. मैं तो एक तो मिड में हमारे सामने। One enemy remaining. नाइस राउंड। मैं मूत के आता हूँ भाई, बहुत जोर से लगा। जो 5 एचपी से मारा 3 को। एक बस मिड देख लो। स्मोक से तो बोलना होता। नहीं ये एंगल देख। मैं ट्री हूँ, ट्री। सुन सेज ऊपर हो सकता है तो पीक मत देना। जेट अच्छा तो है ही। मता सेज ऊपर हो सकता है क्या? नहीं है भाई, नहीं है भाई, मैंने कॉल क्यों चले गए सारे? साउंड आ रही है ना इधर है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आने दो ना। एक किल आ जाएगा तुम्हारे हाथ में। और ढंग से मेरा एग्जीक्यूट हो गया तो प्लान। और वो सेज कौन ऊपर गया? हो। Enemy spot here. सेज मिड टॉप। ठीक है मिड पिक मत दो, वो स्लिप कर गया। Drop in a smoke. वो फ्री आ सकते हैं, स्मोक कर दिया। मेन Yes. Here. चारों मिलके देख लो। Reloading. 30 seconds left. हो गया काम हो गया। आने दे बी पे आने दे। बी पे आ गए। Swords are alive. Blinding. मिड से आ गई यार, नियॉन बीच। 10 seconds left. No peeking. Multiple enemies B. लेफ्ट से लो है नियॉन। Spike down B. One enemy remaining. Spike spotted B. किलजॉय तो जो तेरा एक क्या पता है, अंधा बहरा अलार्म बोर्ड है ना, वो यहाँ पर लग। किलजॉय तो है नहीं मारा। Reloading. इन लोग को अंधा बहरा लूला लंगड़ा सब कर दिया था। Hey, nice work. ये एक्टिवेट किया, वो थॉर्न से डर के मारे इधर ट्री में देख रहा हूँ, ट्री देख रहा हूँ। There. Caution here. जेट में पीक मत दे भाई। ट्री आ Enemy गई। spotted. इजी मारो भाई। Bomb buddy out. No peeking. Drop in a और smoke. का टाइम पे फ्री फायर मिड छोड़ दिया मैंने। One enemy remaining. Reloading. Okay, who's Nice got one. the snacks? हमारा साथ दे। Reloading. टॉप रहेगा, ऑफलाइन कर दिया बाबा ने। आराम से चलाओ बहन, तो ओडिन करो उनकी। नहीं ये एंगल देखिए। मैं ट्री देख रहा हूँ, ट्री। हाँ तो यहाँ से ये एंगल यार, वहाँ से कर। ट्री से नहीं देख सकता। गन गायब होगा ना भाई थोड़ी देर बाद। Enemy spotted mid. आ रहे बी आ रहे हैं। Here. आ जा क्यों नहीं? Sword flashing. Swords activated. जेट पिक मत दे, बस बैठा रहे। One down. पिक मत दे, रेस पिक मत दे। Enemy spotted mid. यार की लॉरी वो चलेगी, वो जो Enemy spotted B. डिसिंग
One enemy remaining. डिसिंग मैं नहीं करता हूँ, ऊपर वॉल करके वो खिड़की से मारने की कोशिश वही कर रही थी, बहन की लोड़ी मुंह दिख गया। अबे मिड है, बहन की लोड़ी छुपी पड़ी है यार। ओडिन कोई कर नहीं, दी। हाँ यहाँ नहीं होगा, तुम ये देखो, यहाँ नहीं होगा, तुम ये देखो, मुझे नहीं पता भाई, अंदर ही कहीं घुस गया होगा। यहाँ नहीं होगा, तुम ये देखो, और कुछ नहीं। 30 seconds left. भाई बी पे आ रही है बहन की लौड़ी रान, मार दूंगा। Flashing. नाइस। Spike spotted. मैंने मारा 95 भाई, हेड दिया था मैंने। Reloading. इसने ऑफ सटा दिस फ्री फायर प्लेयर। Hey, nice work. नहीं दिखाते हैं हमारे। Enemy spotted mid. See ya. अरे भाई बस भाई, बस भाई, अंदर नहीं जाना भाई। There. क्लोज से राइट में नियॉन है। तुम बस ए पे आने मत दो, ट्री देख लो, आराम से चिल करो। कैसे ओडिन लेके बैठे हैं मैच। नाइस सर। You will not kill my allies. कोई नहीं। अरे क्यों भाई, क्यों पागल है ना भाई, इस तरह से क्या भाई, उसने एक को रिवाइव दे दिया तो सनकना क्यों उस पे भाई, क्यों पागल। Spike planted. ये तो बकचोदी है भाई। एक नीचे। Back like I never left. One enemy remaining. एक एचपी की है, बस एक एचपी। No, not while I'm Blocking sight. reloading. भाई वो अगर रिवाइव किसी को तो उसका गांठ चटकाने की जरूरत नहीं है, चिल करो। भाई बी पे तो आने से रहे ये बैंड के लोड़े भाई। इनका जो हाल करता भाई बी पे मैं चलो बड़ भाई, मजा आता भाई भरकते बैंड के लोड़े तो। बस वैसे ही खेलो भाई, चिल होके खेलो आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई जरूरत नहीं। Target down. बस कोई आगे नहीं, जितना आता है उतना मारो, जो नहीं आता है मत मारो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सेक्स नहीं। Multiple enemies mid. अरे दोनों के दोनों 100 है, 100 इजी। छोड़ दे, कोई जल्दी नहीं है, विफ मत कर, चिल कर। अननियन मिड लिंक है, मिड लिंक। कोई बात नहीं। हम भी आ रहे हैं, भी आ जाओ, क्योंकि अब रोटेट नहीं कर पाएंगे। 30 seconds left. जब वो रोटेट Off your feet! Enemy spotted B. Blocking sight. Enemy spotted B. Enemy spotted KJ 70 और KJ 70 से 120। One enemy remaining. नाइस, KJ 70 है। Spike down B. वो तो आया ही 10 नहीं। seconds left. हाँ मिड है। वो तो आया ही नहीं भाई साइड पे। नाइस।
डिफेंस में कहा था ना मैंने, डिफेंस में तुम्हारा भाई बी साइड पूरा एकदम निचोड़ लेगा। क्या बात है, क्या बात है। दबदबा भाई तेरा दबदबा। किसका दबा भाई? तू दबा रहा है उनका बेंच। भाई वाइस टीम जब से बनाऊं भाई तब से अच्छा खेलने लगा। पता नहीं ऐसी क्या खास बात है मेरे में, दीवार लगाना इतना पसंद है मुझे। अच्छा है, अच्छा। आ गया भाई तू। यारी नहीं बोलेगा, यारी नहीं बोलेगा। अरे सॉरी मैं वो बोला। सॉरी। तेरी मैया को जेड भाई चिल भाई, जेड भाई चिल भाई। चिल कर रहा हूँ। जेड भाई चिल भाई। अरे 100 है नियॉन और ब्रीच। जेड भाई चिल भाई। अरे भाई माँ चुद गई, भाग भाग। भाग के मारा। Spike down mid. नियॉन 100 है, ब्रीच 40 है। रेस तो आ बी पे आ। रंडी नियॉन मार्केट है। मिड पे आ। नियॉन 100 है, इजी है। और उसे हील भी नहीं हुई है क्योंकि मर चुके थे। कौन? मेरे को नहीं मेरे पास टीम में उन्होंने वो कर दिया, कुछ कर दिया। Dead. Last player standing. अरे भाई एंटी मैच करना चाहता मैंने कहा तो फायदा नहीं। दिक्कत की बात है। अरे मेरे पास भाई नहीं है यार। मिड में शक्ल तो मिड संभालो भाई, इधर से नहीं आ पाएगा कोई। थैंक यू। मैं गेट बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है जेड? तरुण तू देख ले ट्रिक। जेड भाई मैं गेट बंद कर दूँ ना? बिल्कुल यार, बिल्कुल कर दो। लोग मिड देखते रहे वहाँ। हाँ देख रहा हूँ। एक ही बाहर है भाई, बी साइड पे आ रहे भाई। Enemy spotted A. ए पे किल जो है बस। बी पे आ रहे हैं, बी पे आ रहे हैं। Hi! I'm pissed. देखिए यार, बहन के लोगों ने स्टन कर दिया। Reloading. Enemy spotted mid. Flashing. Bring me the arsenal. Concussing. अरे बहुत बढ़िया था। Last player standing. अबे यार 30 seconds left. जी। Good hit. नहीं आएंगे वो मादर चोद। Spike planted. भाई नहीं है। क्या किया भाई ये? डर भी हो रहा है, दिल धक धक करने लगा, मेरा चेहरा फरने। अंदर तो लगा बस। हर बार नियॉन रंडी से मारे अपनी कर रहा हूँ भाई यार। अच्छा चलो मैं ये देखता हूँ, बी देखो क्या करूँ। I need a drop. Reloading. Tack, tack. सुन क्लोव, यहाँ से कोई मैं ट्री देखता हूँ। हाँ ट्री देख। वॉल ट्रिप होगा, वॉल ट्रिप होगा, यहाँ से कोई आएगा, वॉल ट्रिप होगा, मारना। Ready. Spike down B. यहाँ कोई नहीं। तुम पैक डाउन है, चलो उधर चलो। 1
भाई यहाँ पे ए पे भी बंद है। Reloading. स्पाइक के पास जा रही है। हाँ मैं ए चलो स्पाइक। यार है। एक ए पे आ गए भाई, ए पे आ जाओ, एक तो आ जाओ जल्दी। बस वहीं ऊपर मुंह मत दिखाओ। अरे सब मत आओ भाई, सब मत आओ, सब मत आओ। क्यों सब क्यों आए गए? You should run. देखो फेक है वो भी। 30 seconds left. Reloading. Spike planted. Last player standing. Off your feet! One enemy remaining. Make it 4! Nice. ऊपर Smoke. एंड के ऊपर डिप कर। Blinding! भाई मारेगा। आप डिप कर, आप डिप। एंटी यार। भाई कितना अच्छा मारा डीसिंग ने जब अल्ट किया। तुम आए डायरेक्ट क्यों नहीं आए? मिड से क्यों गए? मिड से कौन गया? मिड से बहुत गए भाई। इसने अल्ट मारा, दो बंदे उनके इधर। वो लोग अल्ट हुए नहीं, उनने हमको छोड़ा। उनका कमबैक हो रहा है अब। कमबैक तो रियल है। मिड को Enemy spotted mid. स्टिल ग्लो। There. Caution here. मस्त पिक निकल गया, फिर कैसे लौड़े लगे भाई हमारे। म्याऊं। My turn. Spike down A. Nice try. One enemy remaining. बस 5 मत मर जाना उससे, ठीक है प्लीज। ये तीनों मत मर जाना। छोड़ दो भाई, जान फाड़ दूंगा। मारो यार ट्रेड। लौड़ा का ट्रेड लो भाई, भाग जाना भाई, मत लेना भाई। क्यों भागना भाई? एक बंदा है तो उसकी मां नहीं चोदनी भाई, क्या? भाग जा भाई प्लीज भाई भाग जाना भाई। रिक्वेस्ट भाई, बिहारी रिक्वेस्ट भाई। भाग जाना भाई, जान फट गई थी भाई, 2 मर गए थे भाई। ऐसे नियॉन आया था बड़ा जोश में, डू करते करते। इसको लगाओ, यहाँ पे कोई नहीं होगा। I need a drop. Don't touch. अरे किसको मत दो मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। Flash trap destroyed. Enemy spotted mid. भाई यहाँ पे आ रहा है भाई। जेट भाई तैयार रहना। Swords are live. कहाँ से तैयार हो? मेरे पास गन दिख रहा है। भाई कुछ मत बोल भाई, कैसी बातें कर रहा है भाई। किसी का भाई नहीं दिया गरीब को। Swords activated. सॉरी भाई यार। You didn't deserve it bro. फॉर रियल मैन। तू पिस्टल चलाना भाई, इसका ध्यान बटाना, ठीक है? Enemy spotted B. There. किल सारा जा भाई बी ब्रीच। एंट्री ले रहे, बी एंट्री की पूरी कोशिश है इनकी। मिड मार के So got. उसका वो तो टरेट मेरे पास शॉट ही है। Blinding. My blind is dead. हो गया, एक ही आता है इधर से, आ ही एक पाता है। डिसिंग बस छोड़ दे। अरे यार 30 seconds left. ना
हट पैर चोट, उधर मर गए तो इधर ध्यान चला गया मेरा 120 You will not kill my allies. हट भाई Spike planted. जाल कर जा अल्ट तेरे पे पहले फ्लो को जान दो उसके मार ओ यार स्टन दे तू यूटिल दे सारी यूटिल दे स्टन दे साइड में हां दे बस मार Last player standing. Like I never left. मार भाई One enemy remaining. Last player standing. यार ब्लाइंड था ना लेफ्ट में ही है टाइम नहीं फटाफट कम ऑन हार गया क्या कर रहा भाई तुझे 120 था भाई किल जो तो 140 दिया है Match point. इतना ब्लाइंड दिया पता नहीं डी सिंह भैया हमारे डी सिंह भैया कुछ करो डी सिंह भैया अबे एक भाई शॉटगन से कैसे मर जाते हो भाई Reloading. सामने इतना देर तक बंदा घूमता तुम्हारे दो मर गए उधर ध्यान चला गया पीछे छोड़ना रह सकते हैं भाई जब वो हमारे सामने आ गए तो क्या और भागू से मैं मेरा ध्यान चला गया भाई उधर कसम से मैं मिनी मैप में देखने लगा अच्छा नियॉन से ऐसे कूद के मर रहे हैं नाइस वन मर न को रे भाई ए पे उधर तो क्या कर रहे हैं भाई एक इधर मिड को आना है ना देख रहे हैं ना ग्लो अरे मिड अरे वो अलग मिड में ए Multiple enemies A. ए आगे सारे तीन है बैंड तो दौड़ा रहे हो मुझे स्मोक करना ही नहीं 30 seconds left. Your fault. चिल करो हो गया बहुत चिल आने दे Hey door, my ult's ready. टाइम नहीं होने बस टाइम 10 seconds left. One enemy remaining. Spike down B. अरे ने मेरा को हटा दिया गांड फाड़ दूंगा Here we go. मारने जा रहा है इधर भाग के Switching sides. Overtime. Reloading. भाई पेशाब रोक के वो कर रहा हूँ भाई प्लीज भाई जल्दी जिता दो भाई बहुत जोर में मचा रही है भाई नियॉन रोज मार गया भाई शॉटगन से Yes. मैं इधर फेक करता हूँ मेरी गांड मार देगा शॉर्टी से मार देना भाई शॉट Reloading. Reloading. Hi, refreshing. बहुत पीछे खेल रहे भाई प्लांट करो से साइड दो साइड में ब्रीच One enemy remaining. नाइस यार बेंच Enemy spotted. A.
मैं तो वाह यार, मारू तो nice। भी गणमरी किया, नहीं मारू तो भी गणमरी क्या गाली Switching देना भाई, बिहारी को sides. गाली देना ना भाई। Match point. अबे यार बिहारी को गाली कौन दे सकता है, एक भाई बिहारी सबसे भारी। भाई केजे 167 और ब्रीच 133। नाइस यार, क्या बात है। Lighting crack. Ripping tear. हट जा वहाँ से, हट जा। तो घुसना है क्या? Right here. देख ले आराम से। Caution here. There. छोड़ दे, कोई नहीं। ए पे जाता रहूंगा उसके बाद। अरे तू वहीं रहा कर डेसिंग, वहीं रहा कर भाई, मत जाया कर। हो गया भाई, किल निकल गया, सेक्सी एज फक। मैं ट्री देखने जा रहा हूँ, ट्री देखो सही। मैं ट्री देख रहा हूँ। देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। तरपाओ इनको, तरपाओ, कुछ मत कर। जेड टरेट है इधर पर। यहाँ पर भी किल जो है, किल जो इधर अरे है। इन पे एंट्री देने के लिए इनिशिएटर ही नहीं है, इसीलिए माच उठती है इनकी एंट्री में। तो सर की ब्रीच नहीं है भाई इनिशिएटर। क्या मस्त कवर किया भाई, तेरे को पता है? 30 seconds मार left. डिसिंग, अरे बढ़िया। Spike down mid. छोड़ दे डिसिंग, छोड़ दे, टाइम वेस्ट कर। One enemy remaining. Flawless. अरे बाप, भाई वेस्ट। Defenders कवर win. किया भाई, तेरे को पता है भाई, आखिरी राउंड में केजे से आई 120 के आसपास दिया होगा मैंने उसको डैमेज, मजाक से हट के केजे को आखिरी राउंड में। इसकी गान मारने आ रहा था भाई वो। किसकी वजह से? कौन है तुम्हारा डिफेंडिंग मास्टर? कौन है तुम्हारा टॉप फ्रैगर? जेट। अब मिला कितना मिला भाई? +20 लवड़ा भाई। क्या फायदा भाई इतना अच्छा डिफेंस करने का? चल स्टार्ट कर। भाई मैं एकदम मूड क्या था, ठीक है। जो 6 फर्स्ट ब्लड निकाले यार, क्या बात है। किसने? मैंने आ रही आवाज आ रही है। चेक कर रही थी। हाँ भाई ओडिन निकाल लो, बहन चोद उनकी माच हो जाती है भाई, गाली दे रहे थे। ओडिन में मजा आ जाता है यार। अपना बस एक बंदा है, पता नहीं कौन है, अपना डुअलिस्ट था, पता नहीं बॉटम पैक कर रहा था, ऑपरेटर चला रहा था। फॉर रियल अब वो यार अपना नाम नहीं लूंगा लेकिन बॉटम पे है स्कोरबोर्ड पे। नाम ले भी नहीं सकता, नाम ही ऐसा है। भाई ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री का अच्छा चीज है भाई, नावल भी ढोरी चटना। बुरचोदे बे। बुरचट्टा नाम रख रहा था भाई मेरा, फिर लड़कियां कैसे नाम लेती भाई? गीली हो जाती इसलिए नहीं रखा। हाँ अरे झाटा कुछ अरे नहीं होता उन्होंने उसके, लास्ट में तो उनकी जेट ने भी ऑपरेटर ले ली थी, और नियॉन ने भी ऑपरेटर ले ली थी लास्ट में। वो तो मैं उस नियॉन का जो हाल किया ना भाई, मैंने साइड पे आता था चूज जाता था, साइड पे आता चूज। नियॉन ने यार मेरे को नहीं मारा, मेरे को तो बहुत कम मारा है नियॉन ने। अरे तूने डिसिंग देखा? कभी भी इन्होंने डायरेक्ट साइड एंट्री बी पे नहीं लिया भाई। यार नियॉन को मैंने 7 बार मारा है और उसने मेरे को 4 बार बस। कैसे देखते हैं ये परफॉर्मेंस में?
परफॉर्मेंस में देखते हैं ना भाई। मैंने भाई क्लोव को मारा भाई 3 बार, मरा हूँ 7 बार। ठीक है, अच्छा यही वाला है ना, यहीं से देखते हैं। वर्सेस क्लोव, हाँ 5 बार मारा इस ब्रीच को मैंने 5 बार, और 2 बार मारा हूँ इससे। नियॉन को मैंने 6 बार मारा है। नियॉन को मैंने 7 बार मारा है। और मैं सिर्फ 2 बार मारा हूँ मैं नियॉन से। यार लेकिन उसके क्लोव ने मारा है मेरे को बहुत, अच्छा 7-8 गेस बार भाई, मारा है क्लोव ने। उसके सेज से कितना बार मारा हूँगा मैं? एक बार Match मारा हूँ, 9 बार मारा found. है। और वैन की लड़ाई मेरे सामने आती थी भाई, ओडी लेके धड़ 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 मुंह पे। अटैकिंग दे दे भगवान। Stand in my way. I dare you. मैं अभी मूत क्या भाई, इतना मूता मैंने, पता है इतना सारा। इसीलिए मैंने दिया था ना लाके तेरे को एक सबसे पहले। वो भी सोच रहे होंगे बेंचो 2 कितना 4-8 था, नहीं कि 3-9 था बेंचो। वहां से भाई लगातार गांड फाड़ दिया भाई। भाई उनका गाली दिए पे दिया जा रहा था भाई, पता नहीं। तरुण स्मोक ले ले भाई जो ले रहे थे वही लो भाई, हमें सेज वेज की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्मोक में ये क्या ले लिया भाई, ये मत लो भाई, ये ब्रिम ब्रिम मत। अरे एक और डिवीज ले लो ना। बंगालन बेबी, बंगालन लूंगा मैं हिंचू। भाई ये कैरेक्टर अनलकी है मेरे लिए, सच बता रहा हूँ। और बता भाई भोचट्टा, कैसा है तू? जिंदा हूँ फिलहाल, ठीक हूँ। तूने आज तक भुर चाटा कभी? बंदी अंदी बनी? हाँ भाई, अरे भाई ठीक कितना। अरे लाइव बंद कर वेंचर डीसिंग, मैंने शेयर कर दिया आपने व्हाट्सएप पे। भुरचट्टा भुरचट्टा। फिर तो तूने झाड़ चट्टा भी बन गया होगा, तू झाटी भी चाटी होगी। वो तो छिली हुई थी भाई उस टाइम पे, अब पता नहीं। छिली थी क्या? भाई हमें छिली हुई मिलती है भाई, क्या हमें मिलता हुआ काला चूत में गाली झांटे, पता ही नहीं चल रहा चाट क्या रहे। चिल गए भाई, चिल गए, हारो जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 20+ देते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है मादर चौथ के बाद। Reloading. कभी कभी लगता है माउस में ये रैपिड फायर बटन बहुत अच्छा है। I need a weapon. कभी कभी लगता है Taking that back. इससे झाट चट्टी चीज जा सकती है। कहाँ मैं देखूं, ए या सी देख सकता हूँ, जल्दी बोलो कहाँ देखूं? जस्ट किया जा। तू ए देख ले, ए बड़ा है। बड़ा तो मुझे ही पसंद है भाई। इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये देख। चलो एक भी देख लो। पुराने सट के तू हट के पलट के। टीम में तो कोई नहीं है। On my mark. Enemy mid. Enemy spotted mid. Right there. अबे साइड में आ गया देखो, ओमन साइड में आ गया। Spike planted. ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर। Nerd. नाइस यार। One enemy remaining. नाइस। फटाफट जाओ ये। Blinding crack. Time to jump. Good hit. Reloading. कैसे खेलते पता चला भाई? रिकॉर्ड हुआ क्या डीसी? बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया भुरचट्टा भाई। रिकॉर्ड हुआ क्या? Good try. अरे भाग बोल रहे यार, कांडो आई तो नहीं देखूंगा आज तक तेरा। नो क्या स्ट्रीम करता है क्या, लाइव स्ट्रीम करता है क्या? यूट्यूब पे करता है क्या? मैं भी करता हूँ भाई। हमारा डीएक्स बॉय भी करता है यार। अभी है? ना ना अभी नहीं हूँ। एक गोटी चोर है बाइटी। Launching thorns.
गोटी 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 नहीं, गोटी चोर। गोटे चोर एक ही होगा गोटी भाई। चुराता हूँ। झूठ बोल रहा है झूठ बोल। या झूठ क्यों बोलूँ, कैसी बात कर रहे हैं? बंगालन लेके लोग झूठ ही बोलते भाई। जा डिशन चला जा। कैसा इसका स्मोक आता है भाई? फेक स्मोक था भाई, वो फेक भाई एक स्मोक। डाउट है मेरे को भाई कि इसका बंगालन का जो स्मोक आता है, तू अभी बंदे को ऐसे दिख नहीं रहा होगा क्या तुझे? उठाता है हवा में। क्या क्या क्या? तो ये जान हटाता है ना, हाँ हाँ नहीं पाता। Spike down, attacker मार spawn. पाता है, मार सकते हैं। One enemy remaining. Flawless. अरे बढ़िया यार, बढ़िया। अच्छा खेलते हो तुम। मैं अच्छा खेलता हूँ भाई, थैंक्स भाई। तू तो अच्छा खेलेगा ही यार। भाई जब से वाइस लिया ना भाई, तब से अच्छा खेलने लगा। सेज लेके भाई लौड़ा कुछ नहीं होता था मेरे से। पहले सेज मेन था मैं, वॉल अच्छी करता था बिहारी। Now we wait. वाइस क्यों अच्छा लगता पता भाई? Launching thorn. इसमें ना Rip and tear. मान लो रश करने के लिए, ठीक है, थॉर्न्स वगैरह है, और आपको सीमेंट प्लांट भी के है। लिए। हाँ वॉल भी है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ दोनों है। वॉल है, ट्रिप वगैरह के काम आ जाती है, समझ रहे हो? बिहार में कहाँ का है तू? याद है मधुबनी, दरभंगा भाई, मिथिला। अरे दरभंगा के ऊपर। जान मारना चाहता है मत दो भाई स्मोक। Down. Reloading. वॉल ट्रिप नहीं होगा। 70 है, केजी 70 है। वापस जा रहे। Reloading. निकल जाओ, कोई जाओ यहाँ से, कोई जाओ। जा जा निकल जा, बंगालन बहुत थोड़ी, निकल जा यहाँ से। Spike planted. प्लांट हो गया सी पे। गलाई देख। तुम उधर से Blinding trap. Blinding. अब थोड़ी क्या आ जा। हाँ आराम। वॉल बैंक कर दे। Obscuring vision. राइट में ही होगा। One enemy remaining. नाइस। ओह ये क्या मार दिया? Defend this place. क्या मेरी गेम प्ले अच्छी हुई है डेसिंग? भाई मैं सिर्फ मैंने सोचा भाई। Now we wait. Block placed. Rip and tear. Launching thorn. लौड़ाएंगे ये पे आते ही चुत्ते देखता नहीं है। लौड़ा के दक्षिण चले जेबुका हो। लौड़ा के जाए और भाई मर जाना। अरे मजा मैंने बचा लिया भाई। भाई पागल हो गए भाई, कैसे मार रहा हूँ भाई मैं सेंटिनल होके। को करने दे, वेट कर पिक मत दे। देखो गराज देखना भाई, देख रहा हूं। प्लांट कर रहा है वैन का। Spike planted. हां डीप पर कोई नहीं है यहां पे। Concealment. रहना भाई, क्या कर रहा है? Up you go. Somebody's there. One enemy remaining. My ult's ready. Everybody thank Wingman. Come सी पे लोडू। रेना पता नहीं कहां से आ गया। Reloading. भाई डेसिंग तू मेरे किल देख भाई। Reloading. तेरा भाई टॉप ट्रैगर। उनकी जीरो मत तोड़ने दे भाई। क्या नाम है तेरा? कैश। Now we wait. Blinding crack. जीरो मत तोड़ने दे उनकी। जीरो पे ही देंगे। Launching thorn. मैं किल नहीं दूंगा भाई, मैं इनकी मां चो दूंगा।
यार मैं वेट करूंगा, इसको कवर नहीं दूंगा, तो आराम से आना अपने हिसाब से। मार योरू। योरू ने एक मारा और चलो एक से सीध गए हैं। कोई बात नहीं, साइड से मार दिया यार। कोई नहीं, कोई ओके ओके आजा डिस्ने। आएगा बी आएंगे शायद। नाइस प्राण साला मारा मेरे सामने, इसने वो फेंका केज मादरचोद। लेकिन फिर तो काय को भाई। One enemy remaining. Spike down. C. स्ट्राइक डाउन है। वैंडल उठा ले, नीचे वैंडल पड़ी थी पीछे। वैंडल नहीं चला था भाई। Recovering it. अरे वो स्पेक्टेड। ओह अच्छा। Obscuring vision. Only short range fights. भाई चोरी करेगा। यहीं कहीं था यार, फुट आया मेरे को, मादरचोद ने टीपी भी मार ले को। Thorns activated. अरे 30 seconds left. मेरे को लगा बंदा मारा। खाटू। अबे AFK है शायद वो। एक जना जाके चेक कर लो ना, एक चेक कर लो जाके। ये सब करना जरूरी है। मैं मार के आता हूँ। 10 seconds left. भाई जीरो हटेगा, अच्छा नहीं लगेगा। Blinding. अब तो लेट हो गया। साला सेव कर रहा होगा, वैंडल लेके आओगे, सेव कर रहा होगा। हाँ सेव करा है। भाई चाहिए किसी को लेके समझ आ रहा है। Reloading. अरे भाई कैसे जाएगा भाई ये सब। आज लग रहा भाई टीचिंग, आज लग रहा है। Now we wait. 400 FPS कहाँ आ रहा है? Flash placed. Launching thorns. Rip and tear. साथिया के सपना तू अपना दिखा दे, तेरा मैं मस्त देखा। देखो है ना, मतलब स्पाइक में एक आदमी के लिए तू। Spike down A. बे भोसड़ी के ऐसे कैसे आ गए भाई? भाई ये पे तो आ गए क्योंकि One enemy remaining. जल्दी से जाएंगे, जल्दी से। अरे रुक भाई, मेरे को बांध दे। It's mine. Reloading. Now get. अंधा किया, मुझे भी कर दिया, उसको भी कर दिया, खुद भी हो गया। मैं नहीं हुआ भाई, मैं नहीं हुआ। मैं तो हुआ भाई, मेरे को नहीं दिखा। 26 का ही डैमेज दिया मैंने। ये क्या बदतमीजी है भाई। Now we wait. Flash placed. क्या को Launching thorns. इधर तू गैराज देख ले, मैं इधर ऑफ कर रहा हूं। Rip and tear. यहीं रुक, मैं बी देखने जा रहा हूँ। को गराज देख ले भाई, सेक्सी गराज देख ले। ब्लाइंड लेके जाना कभी भी, ब्लाइंड लेके अंदर नीचे उतरना। तो बी आने के प्लान में ही, बी आने के प्लान में, बी आने के प्लान में ही। अरे भाई मार भाई। अबे मैं यार वो तोड़ रहा था इसका। मैं रिलोड पे था। I know अरे मैं इसका exactly वो तोड़ रहा था जब मार मार मार। Spike planted. Killed the rat. अरे इसकी ट्रिक बहुत ऊपर लगी है। दबा मार देगा वो दबा। ऊपर ना Last player standing. Monster on the loose. अरे मेरे से 4 ब्लाइंड हुए थे यार मेरे से। देखो भाई मैं रिलोड पे आ गया, उसका बच्चा मारा ना, उसका रिलोड पे आ गया। Reloading. कोई नहीं भाई, 11 राउंड जीतो ना भाई, एक राउंड तो निकाल ही लेंगे शायद। Now we wait. ये क्या लगा दिया? सीजा सीजा सीजा। Now we wait. आता है ठीक है, ये सब मत रिकॉर्ड किया कर। Launching thorns. Rip and tear. मां 24 ने मेरी बंगालन का भोसड़ा फटते हुए। मां भी चोती है बंगालन।
क्या को 80 है, क्या को 80 है। ये क्या किया यूरो भाई? एक को मारा यार, एक से मर गया, क्या करूं अब। दैट वाज गुड। बी जा बंगाल में भी जाओ। हाँ मिड था, क्या को भी मिड था, 80 है क्या को ओ वैसे। बी जाएंगे Dusted. नाइस। कोई नहीं है पे। अरे पे कोई नहीं रे, वॉल है मेरा। को ये शॉट भी है ना। Right there. सी जा रे। The hunt begins. Someone's there. दिया भाई 130। Last player standing. One enemy That remaining. creature is dead. 30 seconds left. Spike planted. अल्ट मारा पीछे अल्ट मारा पीछे। यहाँ से आया ना तू वहीं पे। Got blocking vision. डीसिंग अभी लाइव नहीं कर रहा क्या? है। लाइव चलती है, मेरे को तो नहीं दिख रहा यार। है चल रहा है। अरे मेरी आवाज आ गई। ओ नाइस शॉट यार। हाँ भाई, बंगालन का जोड़ देखा? क्लिक मारता हूँ बस, क्लिक। Hey people, come on now. I'm anticipating my congratulations. प्ले बनाया था भाई। भाई रैना को टीम डिले है ना? पता नहीं अल्ट में थी ना, मरी नहीं इसीलिए। टीम थोड़ी डिले है ना? होती है 20 सेकंड तो होती है भाई। 10 से 15 सेकंड। सब्सक्राइबर तेरे? Now we wait. मत जा Launching thorns. और Rip and tear. इनकी तो कहाँ कर रही है, इन पे भी 2 सेंटिनल है भाई। Blinding. नीचे तेरे लिए स्मोक कर। Need that back. आजा भाई, तू अल्ट यूज कर। कैसे करते हैं तू? You should know it. प्लान Blocking vision. My blind is dead. Spike पीछे planted. बैठा पड़ा। Ghost boy, bye bye. अरे मैं भी तो ऊपर। Little homie. Well दोनों done. नीचे बैठे। Dizzy has targets. One enemy remaining. नाइस। करो डिप करो। My buddy's defusing. Reloading. क्या बात है। भाई सबको डैमेज दिया। Get kill behind किया। me. That little guy did it. वही है ना बंगालन, काला जादू बेबी। काला भगवाड़ी है भाई। काला तो है ही, जादू का भुरचट्टा का सब चुरा लेते हैं। मैं देता हूँ। मेरे पास स्किन है, चाहिए क्या तुम लोगों को? फैंटम की स्किन है जरूर। हाँ देना। वापस कर। वैंडल की भी स्किन है, चाहिए होगा तो बोलना भाई। और कौन सी है ये जो भी नहीं है, ये वही वाली है क्या? नहीं रिवर है। Now we wait. Last place. Rip and tear. Launching thorns. भाई इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी क्या पता है? इनको लगता है थ्रॉन्स में बंदे को डैमेज पड़ता है, लोअर डैमेज पड़ता है शिफ्ट ऑफ करो। Right there. अरे भाई बिल्कुल हेड पे था यार। हर बार नहीं करने का भाई। 80 किलो। ओ ओमन। Wall tripped. Flash trap destroyed. भाई दो हैं डिसिंग भाग गया। उधर ही है ए पे प्लांट होगा। प्लांट बी पे होगा। बड़वा अल्ट मार दे। Spike planted. मार दे। Dizzy's up. They shot her. them. Taking that back. बच्चा फेंक दे। Last player standing. कोई नहीं भाई, सेक्सी था। करता है यार, बहुत करता है। क्लच और बंगाल है। मार कोई दिक्कत नहीं, किल निकाल। अरे ऐसे नहीं निकालने का। 100।
फैंटम स्किन देना वाइस। I need a weapon. I appreciate that. कौन सा फैंटम वैंडल? फैंटम। I need a weapon. Thanks. अबे मेरा कहाँ गया गन? नहीं। हाँ ठीक है, बस मैं टीवी डाल के मैं बैठ जाऊँ। मैं ए पे रुकता हूँ, डीसिंग तू जा। मैं रुकता हूँ। अच्छा ये वाली है क्या? स्पिनर वाली फैंटम? नहीं वाली। बंदे तो हैं भाई ए पे। ए पे हैं, ए पे हैं। आजा डीसिंग। Passing it. Let's go. Reloading. Main पे। Get him, wingman. Reloading. One enemy remaining. Woman is left. Nice. भाई जिसने मुझे रहना पड़ा, my friend without any instruction. Last round in the half. माँ की लौड़ी रहना। Vandal. Nice. I need a weapon. Thank you. मेरा बाजूका दे दे भाई। डीसिंग जा मैं कॉल दे दूंगा। कितना मस्त कॉल दिया ना। तो यहाँ पे तेरी गांड उतर। Now we win. डीसिंग भाई तुम भी बिहार के हो क्या? गुज्जू गेम शो मजा में recovering it पोफड़ा में गराज था वो। Blasting him. मार छोड़ दिया स्पैम में। ये मार रही क्या शुभ है? अल्ट कर। Spike planted. One enemy remaining. चलो नाइस, चलो डिस्कर। क्या बात है यार। भाई जिसने मेरे को इनकरेज किया भाई मार मैं सेक्सी भाई। यार वो अपना डीएस बॉय है यार, वो अपना आईजीएल है। डीएस बॉय। हैंचू मेरी अंडर आर्म वेट हो गई है खेलते। Switching sides. लड़की है क्या भाई? अपने काक का पसीना मुझे चटा दे भाई। भाई काक का झाड़का पसीना चटेगा। ये गंदा आदमी भाई। चटोरा है ना, चटोरा नाम चटोरा रख तू। चूत चटोरा। मैं अरे डरते हैं क्या साइफर से भाई? मैं फेंक देता हूँ ना, अगर ट्रिप्स होंगे तो उसमें फंस जाएगा। हाँ क्लोन है ना इसके पास। डरते वरते कुछ नहीं, आ जाओ भाई डीसिंग भाई, चोदेंगे। अरे उसी के साथ चला जा भाई, वो कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। तेरा वो इसी के साथ मोटिवेट नहीं है आईजीएल मोटिवेट। आईजीएल मोटिवेटेड गाइस। Concealment. Enemy spotted. C. Enemy spotted. Forever. माँ चुदी मेरी सबसे पहले। इंग्लिश बहुत बढ़िया डीसिंग भाई। Last player standing. यार तीन बंदे के बीच में फंस गया मैं। एंटी के पास। अरे मेरा क्लोन पहले ही मार दिया सालों ने। साइफर ने ट्रिप कब लगाया पता है? जब उस बहन के लौड़े ने मुझे देख लिया। भाई अब दो लगा दिए साथ में मादर पे। खुद भी बैठ गया कोने में। यही चलते हैं चलो। यही चलते भाई, ये इजी पड़ेगा मेरे को लगता है। इजी पड़ेगा, ये चलो। चलना एंट्री दिला देना भाई। एक तो हेवन पे। डीसिंग भाई तुमने वो गाना सुना है क्या? सू करे छे मन मोह करे छे, ये वाला सुना है क्या? लंडे चटे छे। हाँ अरे यार फेवरेट सॉन्ग है मेरा यार ये। बहुत बढ़िया लगता है यार। Decoy. Reloading. Cutting through. Obscuring vision. तेरी चूत चाटता रहा। Someone's there. Flash out. कर भाई सब कर। बस घर नहीं जाओगे।
मादर चौक साढ़े मेरी टीवी के पास बैठूंगा Thanks, little man. My blind is dead. Last player standing. Flawless. भाई वॉल ट्रैप बन देना था मेरे को। अरे मेरे ब्लाइंड में अपना भी कोई ब्लाइंड हुआ था। डेसिंग हुआ था डेसिंग। यार वो दिए फैंटम दिए भाई। ओ भाई मुझे भी यार भाई। I appreciate that. I need a weapon. I need a weapon. धन्यवाद वीरे धन्यवाद। हाँ बी चल रही हो क्या? बी चलते भाई गेको ब्लाइंड देके घुस भाई प्लीज भाई। Need that back. Flash placed. Flashing. Reloading. Time to jump. Up you go. अरे जा Blocking बंगाली vision. में Confirm it. Spike planted. ये यार दो ब्लाइंड हुआ गेको से भी ओमन से भी। One enemy remaining. नाइस यार बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। Taking that back. मिल Reloading. गया मैंने यूरो को चाहिए था ना यूरो। थैंक यू यार। Reloading. वो सेव वेव कर रहे थे भाई क्या? किस गन से पड़ी बताना जरा। मेरे को तो मिनी उससे पड़ी है क्या बोलते हैं यूजी 14 भाई ओडिन ना करने लगे। पूरा फुट मत हो बिल्कुल फुट मत हो। Cutting through. Deep. रेना इधर है। Someone's there. आजा Spike down mid. अरे यहाँ है भाई इसको क्यों तोड़ रहा है? One enemy remaining. छोड़ दे तेरे पास ही राइट में। Last player standing. अरे मेरे को लगा साइड में होगा बेंचो। भाई पैर दिख रहा है मुझे उसका। Blocking vision. I have the spike. आने यहीं बैठ। आ रहा है। अरे भाई अरे मार चोरी मेरे रूममेट ठीक है माउस हिला दिया साले ने। भाई तू कैंप कर रहा है 120 ही मार पाया साला वाले भाई तू कैंप कर रहा है भाई इससे अच्छा तो भाई यार सॉरी इसलिए कह रहा था भाई ये भाई ये उमर को वो दिखा। I need a weapon. यार तुम लोग क्या करते हो? गन दे दे यार उससे अच्छा शॉट लगा था यार। सॉरी यार I need a weapon. Reloading. तुझे तो छोड़ योरू को तो देख एबिलिटी यूज कर रहा है मुंह पे रहना। योरू तो भाई चैंपियन प्लेयर है यार। योरू की बात थोड़ी अलग है। Reloading. दब करके आ रहा था भाई दब भाई इकोनॉमी चूज जाएगी भाई हमारी। वो देखो ना इतना मस्त देखो ने निकाला था भाई किल अच्छा निकाला था। सी पे दो लोग हैं साइफर और रेना। ये चलते हैं। My blind is dead. ये भी किल जॉय होता है बस। Wall set. ये जाओ। Begins. लोडिंग राइट कर में रहा राइट में ओमन राइट में। ये जाओ बोलो नहीं। वेट अल्ट है दिक्कत की बात नहीं है। अबे सीले फेंक दे। अबे सीले फेंक दे। One enemy remaining. नाइस राइट में है। राइट में चल तेरा किल तरुण राइट में है तेरे राइट में है। Blinding. Got the spike. अबे Last player standing. अरे नेट चला गया यार मेरा। भाई कुछ ही मत एक तरुण मादर चल भाग रहा है।
भोसड़ी। कसम से यार, ही नेट गया कसम से। ये तो मजाक भाई नहीं क्या है। वेट कर रहे हो ये भाई, सीरियस कुछ ही था। मत बोलो भाई। भाई थ्रो कर रहा है ये। सुनो मेरा प्लान सुनो, मेरे पास अल्ट है। ए पे अल्ट मार के साइड आधी कर दो, Reloading. चुपचाप प्लान करके पीछे आ जाना, ठीक है? Reloading. चलो 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 हाँ चलो। भाई 30 FPS आ रहे, मैं कैसे मारूं? Reloading. इजी इजी 2 बार ऐसे ही मरे, हट बहन। Reloading. इसकी माँ की Decoy. Concealment! मेल्ट कर। जो करना कर भाई तेरे, जा भाई। जल्दी जल्दी देखो, प्लान दे। All set. लेफ्ट लोडिंग का Spike down A. लोडिंग मारेंगे भाई, एक राउंड जीतना था हमें। माँ चुदी। यार ये तो ओडिन का है। Last player standing. लेफ्ट में ही है। यही होता भाई, अपनी इकोनॉमी की गांड कर दी, अपने पास पैसे आ गए, वो चोद रहे हैं पकड़ के, और कुछ नहीं। सेव करो सेव करते हैं ओडिन। हट भाई। ये राउंड सेव करते हैं, अगले राउंड में ओडिन लेंगे। सिंपल बताऊं, गैराज टू सी चलते हैं आज शिफ्ट हो गए। अरे मेरा Reloading. Cutting through. Tear. Decoy. Fake teleport. करो ब्लाइंड। Reloading. देखो ब्लाइंड दे। You should run. Last player standing. Spike down C. कोई नहीं, नेक्स्ट राउंड वाइस का अल्ट है, सीधा सी घुस जाएंगे। मार 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 जा। उसने दूसरे पानी में क्या किया है? एक एक करके सभी हग रहे हैं। सिंपल एक साइड घुस जाते हैं अल्ट करके वाइस। भाई मैं उस टाइम पर नहीं आता भाई जब मारना होता भाई। वाइस वैंडल दियो यार। हैंड भाई चलती तो है नहीं, नॉर्मल चला तो उसके किल कर रहा है। अरे दे यार, यार ये मारा तो नेट है यार मेरा, ट्रस्ट कर मुझे। रहने भाई। चल मैं अल्ट करता हूँ, स्किन ए के पे साथ अल्ट हाल करता देखा हूँ। मैंने। मैं अल्ट करता हूँ, उसके बाद एंट्री लेना तुम, ठीक है? ए पे। Reloading. कुछ मत दो ना। Time to jump. I'll handle this. आ जाओ मेरे पीछे। Obscuring concealment. Bring me the arsenal. Placing wall. That's the spike, Wings. साला कैम देख रहा था, मार छोड़। अबे हेवन यार। Last player standing. हाँ भाई यार। Wall blinding. Good hit. Flash trap destroyed. Futile. माँ तो इनकी माँ रांड भूसड़ी की ऑर्डर किया है। ये राउंड अगर हार गए ना, उसके बाद हमारे पास बाय बाय कुछ नहीं बचेगी। भाई हम हारेंगे क्योंकि अब तुम बकचोदी कर रहे हो भाई, जानबूझ। Reloading. देखा भाई कैसे किया। कौन? तो उसने हेवन से 3 कैसे मारे? सेक्सी था। भेज भेज भेज, वो भेजना, गेको भी यही है।
अल्ट करके सीधी से आजा। Reloading. आजा आजा सीख घुसेंगे। Right there. Dizzy's up top. Somebody's देखो। there. I saw you, little homie. क्या कर रहा भाई? क्या दे रहा है? Gotcha. प्लान दे भाई। Wall set. Flash place. Wingman's gonna plant spike. Launching thorns. Spike planted. Thanks, Wings. पूरा मेन पे रहे। जा क्या उसके साथ जा। One enemy remaining. हो गया। Swords activated. Flawless. A team like this can do anything. Match point. Reloading. Reloading. पिछला मैच भी उड़ने की वजह से जीता हूँ। बहनचोद FPS में आ रहा मेरे। बंगाली भोसड़ा मेरा विफ कर रहा है भाई, इसीलिए हम नहीं जीत रहे। अगर मेरा ये बंगाली दोस्त कुछ कर देता ना भाई। Careful here. साइफर ए पे है। ठीक है। Decoy. Right there. वेट कर देते। Right there. Blinding pact. Blinding. एट द एंड ऐसा करेंगे, बी चलेंगे, ठीक है, अल्ट मार के। अरे रुको रुको, उनको बी पे छक्के होने दे। Obscuring vision. Spike stick. Right there. Blocking vision. Dead. चलो भाई साइड चलो, साइड पे कोई नहीं है। Oh yeah! Monster on the loose! One enemy remaining. देखा था। Attackers win. सॉरी भाई, उधर क्यों भागा भाई? Up and away. तू मैं पीछे क्यों हटा उसमें? मैं तेरे को वेट करता थोड़ा सा। थोड़ा और। अस्त्र ऑन टॉप बेबी। भाई टीम MVP भाई। भाई बंगाली भोसड़े भाई, ऐसे मत करो भाई प्लीज, वैसे विफ मत करो भाई, कान जल जाती है भाई। 15 किल 10 असिस्ट। क्या किल कर रहा हूँ भाई मैं? 22 26। उसका 2 बार एस हुआ भाई, पावर रेंजर का 2 बार। 2 बार हुआ क्या? एक ही बार नहीं हुआ शायद। 2 बार हुआ। दोनों बार मेरे को लास्ट में मारा उस मादरचोद ने। एक बार हाँ, पहली बार में डीसी को मारा था, दूसरी बार में मुझे मारा। एक एसी हुआ है, दूसरा 4K था। नहीं मैं बताता हूँ। पहला एस हुआ उसका कब? जब तू मरा लास्ट में, मैं सेकंड लास्ट था लास्ट में। दूसरा एस जब हुआ, जब मैंने उसको फैंटम से, नहीं मेरे ऊपर किलजॉय नहीं आ रहा था मारने के लिए। हाँ नहीं, किलजॉय से मर गया ना मैं। हाँ किलजॉय गाली दिया उसने। देखा था मैंने, उसी में तो विफ कर दिया मैंने। इससे मार रहा था मैं, स्पेक्टर से। एक ही हेड लगा, लवड़ा कुछ नहीं हुआ भाई उसमें। भाई वो ओडिन पे आ गया भाई, कसम से 10-2 देख के। हाँ पीछा अच्छा लिया था, लेकिन फिर हमारे पास पैसा आ गया। तो डिफेंस थोड़ा इजी होता ही है भाई। लैपटॉप
वो तो बात सही है भाई, क्योंकि हमारी कार फट रही थी भाई। अरे वो भी क्या है किसको दिया था फैंटम मैंने, किसके हाथ में था वो? तर 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 ब्लाइंड रहना नहीं मारा गया। अरे वो रहना ब्लाइंड था भाई। भाई डीसी अपना प्लांट करने लग गया था कि बेंचो तब तो मर ही जाएगा इससे। अल्ट मिल जाए। नहीं नहीं तू भाई उसके टकले के जैसे जैसे पीछे हट रही थी, इसका एम और पीछे हट रहा था। और भाई नारुतो भी भाई, कम से कम मैंने मैच में तो देख लिया भाई, अगर तू 15 से 20 किल नहीं करता भाई तो इज्जत नहीं है तेरी इस गेम में। भाई डबल डिजिट में तो किल मांगता ही है भाई, सुन रहा है ना केको? हाँ अब तो ऐसी, अब किसी का 25 असिस्ट है तो उसको थोड़ी कुछ बोल सकते हैं भाई। हाँ Match found. वो हाँ पहुंच जाता था। क्या मैप है भाई? भाई कोई किसी के पास डॉज है तो कर दो ना भाई, डॉज कर दो ना, मैप डॉज कर दो। कोई डॉज कर देगा क्या? सही तो मैप है, अरे दिक्कत क्या है भाई इसमें? हमसे नहीं बनती है भाई इसमें, सच होता है। अरे साइफर खेलता हूँ ना मैं, दिक्कत की बात। भाई ये क्या ले रहा भाई विकास भाई? सेज में है भाई, ऐसी बात नहीं। अभी तो गेको लिया था, कुछ भी बोलता है भाई तू भी। तो भाई फ्लेक्स है ना भाई, सब सब कुछ आते लेना खेलने है वो। एजेंट, अब एक एजेंट थोड़ा ना खेलेगा हर साल। क्या क्या ये क्या बोल रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स खेलने चाहिए ना ब्रो, तो वाइस ले भाई खेलता क्या रहेगा कर रहा क्या? है? खेलो खेलो खेलो। ब्रीच अच्छा है इसमें। तो डॉज करे तो कर दे, गेको ले कंट्रोलर लेगा। अबे वाइस क्यों ले रहा है? 3 सेंटिनल गाड़ में लेगा भाई मैं तो भाई अरे भाई क्या कर रहे हो? अटैक कैसे करोगे बताना? वही तो। भाई मैं तो क्या भाई, अब क्या लूं मैं? कैसे करोगे? अरे, ठीक है मैं चलो तो ठीक है। भाई मत ले भाई, क्या लूं भाई? वाइस वाइस आजा, हिम्मत है तो तू डुएलिस्ट खेल। गेको वगैरह एम कुछ भी देखना खेल है ले, मैंने। डुलिस खेल ले। हाँ ये भूस साला भुरचट्टा। अरे तू स्मोक ठीक है ठीक था, है ठीक है, लॉक ये करो। वाइस मादर से तो डुएलिस्ट कर रहा हर एक मैच में वाइस ही खेल रहा है। है। भाई मैं यही खेलता हूँ भाई, अब क्या करूँ, तुम लोगों ने क्यों ले लिया, अब मैं क्या बोलूँ भाई? अच्छे बंदे हैं सामने। डिफेंड आ गया ना, पहले डिफेंड आ गया, 10 राउंड जीतो इसमें। 10 नहीं 12 जीतो बेंचो। सारे के सारे जीते यार, 3-3 सेंटिनल है बेंचो, एक साइड पे, एक ए पे, एक बी पे और एक मिड पे। तेज मिड बॉल बस, ए मैं संभाल लूंगा, बी तू संभाल लियो भाई वाइस। भाई मैं मैं जो मॉमी स्टीलर भी है भाई, अपनी मम्मी बचा के रखो उससे। आज तो चोको लावा केक ऑर्डर कर ही लेता हूँ। ठीक है भेज दूंगा मैं। वी आर क्लोज एट द मोमेंट। ये क्या बोल रहे हो मादरचोद? कभी आ कभी। भाई मैं मेरे को देखने देना, बी देखने देना मेरे को। अरे नहीं यार, इधर तो मैं सेटअप करता हूँ सेक्सी वाला। क्या भाई? मेरा क्या है भाई, कहीं पे वॉल डालो, ब्लाइंड डालो, वेट करो। कहाँ डालू बता, साइड पे डालू या अंदर डालू बता जल्दी। साइड एंट्री डालू या अंदर एंट्री डालू? Now we wait. Blinding threat. खुद भी हो जाऊंगा चुतिया के, उधर को डाला मैंने। कुछ भी मेरे पास आ बोलता रहे है।
नहीं Cover going out. भाई मिड से क्यों हट गया सेज? मिड से क्यों हट गया? तेरा काम है मिड देखना। लौड़ा आया कोई भाई, जब तक साइड एंट्री ना हो मत बोलना भाई आगे। मेरा वॉल नहीं हुआ है। Wall tripped. आगे ए पे भाई मार Reloading. रैम देखो रैम Shadows traveling. Charges. तेज मार कैम वैम मत देख भाई, साइफर कैम वैम मत देख। Spike planted. Last player standing. No hard feelings. मार जो गोली कहाँ है सारी? तू गया कि वॉल तोड़ रहा था ना भाई। कौन तोड़ता वॉल भाई? और ये गंदा अच्छा भूसड़ी के तो वॉल के ऊपर से कूद के जाओ ना। अरे नहीं, पहले राउंड में वॉल कौन तोड़ता? तुझे नहीं पता है? 50 गोली लगेगी तेरे को। पागल है क्या? 12 गोली में टूट जाती। लन टूटा देख लिया मैंने तेरा। 12 गोली भाड़वे Now we win. गोली नहीं रहा है, 12 गोली में टूट जाती है। सेव करो। तू बहन जो तूने साइड छोड़ी क्यों भाई मादरचोद? अबे भोसड़ी के तू ही बोला ना गनमरी के जो आ गए लौड़ा को आ गए साले, फिर यहाँ पर ही थोड़ा आएंगे हमेशा के लिए। भाई यहीं पे आ गया हमारे पास। चोद यहाँ पे मत स्मोक दिया कर भाई। Spike down A. Shadows traveling. Not ready yet. जा रहे हैं जो रोटेट कर रहे हैं। कैमरा है मेरा। साइफर चूतिए। कैमरा है मादरचोदिया। जाना चलना। मैं आ रहा हूँ। कैमरा क्या कर रहा है? कहाँ से जाएंगे वो लोग? अब आया। देखा? Spike planted. चुप चुकी है। मार। Enemy spotted. B. मार सुना। किल मिल गई। लौड़े लग। राइट। ऊपर देख। Last player standing. ऊपर देख। अरे। इसकी मार होता है राउंड में। अब इसकी मार तो देगी वेरी सून। चलो अब बाय आ गया, दिक्कत की बात। साइफर तू साइड में छोड़ना, ठीक है? जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है डार्लिंग? कोई हाँ ठीक है ना, मैं छोड़ूंगा ना तू छोड़ेगा। हाँ चल ठीक। ये एक गर्लफ्रेंड लग रहा है वो थोड़ी सा। बेसिक साइड जा, साइड में रह। मैं मारूंगा तब तू पिक देना, तब तू कुछ करना, ठीक है? यहाँ स्मोक मत देना। Cover going out. गलत लगा दिया। ठीक है। ऊपर दे दे भाई, रहना जान मार दे। ऊपर स्मोक दे दे। Shadows traveling. Enemy spotted. A. Enemy spotted. A. Flashing. Enemy down. नाइस बन गए। बिहार है ना। हाँ तो तुझे किसने आने कहा? मैंने कहा था आने। I found my wire. भाई इसने मेरे को अच्छा। अरे भाई Spike planted. कैसे हो जाता है बहन चोद? यहाँ पर Here. Cover going out. He's right. Enemy spotted. One enemy remaining. पता है Reload. The spike is और कैसे पहुंच गए लोग?
भाई ये कौन सा स्पेक्टर है भाई, सेक्सी लग रहा है देख। तेरी चोट का फायर सभी से मैं इसको एस्केप करा है तो धुआं निकलता है। तेरी मेरी बुल्ली, तू ऊपर स्मोक दे देना, ठीक है? The hunt begins. Cover going out. अच्छा स्किन लेके आया भाई। Wolves in timeout. Spike down A. One enemy remaining. इधर आ ना, अच्छा स्किन लेता हूँ। इधर एक बहुत अच्छी स्किन पड़ी। Weapon here. Reloading. तो मॉमी स्टीलर ने विकास की मॉमी विकास भाई हो गए। भाई मैंने 3 तो इसी बार मारे। Reloading. मैंने स्मोक में यार 3 बंदों को डैमेज दी, मारा एक भी नहीं बैंड से। कोई बात नहीं भाई, तुम जिंदा थे ना, तुम्हें लगता है इससे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ है जिंदगी में? अरे बस बस बस। इधर मत देखो रहना भाई, इधर आने दो मैं चाहता हूँ आए। Shadows traveling. भाई बी जा रहे, भाई बी मिड से आ रहे, कान फाड़ दो उसकी, जल्दी आ रहा ना। You had your fun. My turn. Removed. You will not kill my allies. Last player standing. अबे कट गया ये भी। उसको देखा मैंने भाई, उसको लेकिन कहाँ देखा वो पता नहीं चला। Can someone get this? Thank you. अरे यार ये कहाँ था भाई? Now we wait. बी पे चला जा रहा ना, मिड देख ले, मिड पे रहे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। Cover going out. Cover taken out. क्लोज बी पे। ए रुकना भाई, कहाँ एंट्री हुई है? यहाँ पे गन चेंज कर रहे हो? एक बंदा है बस। 2 मीठी खेलेंगे, लेट आएंगे या यहीं पे आएंगे? 2 इधर है, रेना और कोई नहीं, तो चिल कर, तो ट्रिप पे खेल। स्मोक कर देगा एक मंदिर। कर दे स्मोक। They found my wire. Shadows traveling. अरे भाई अबे कहाँ पहुँच गए? कैसे? मिड वॉल नहीं थी क्या? कैसे है इधर? One dead. Redundant. My ultimate's ready. Spike planted. Wall tripped. विकास यहाँ से रह गए स्पॉन में। Oh yeah! Monster on the loose! हेवन है, हेवन है, बहुत गलत Your उपाय दिया duty मैंने। is not over. मार जल्दी। One enemy remaining. जल्दी जा, My जल्दी ultimate जा, is रोड पे ready. जा, शिफ्ट वॉक मत। Where is everyone राइट hiding? में, राइट में। हाँ इधर ही जाना। Last player standing. अबे की मार रही थी। अरे ये क्यों कर रहा है? कर 80 है। भोसड़ी के सेव कर ले जा। No problem. हाँ बस कर दिया भाई। मेरे को डेप करना है। 3 लोग मर गए उससे। क्यों कहा भाई तूने डेप? और बहन चलो यहाँ पर आए कैसे स्पॉन तक? रैंप नहीं देख रहा है का? ऊपर से। Reloading. मैं संभाल रहा हूँ हेडसेट।
भाई डीसी के आगे दिखा मुझे 5। मेरी गान फट गई बहन, उधर कैसे आगे साथ। भाई डीसी तूने गलत बताया भाई, मेरे को नहीं करना चाहिए था dude। बहुत अफसोस है मुझे भाई, मुझे लगा चल देखो है इसलिए मैं गया। बी पे हैं। Cover going out. मार 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 मार, एक ही है, मार। आया नहीं क्या कोई? नहीं आया भाई, इतना जल्दी मिड देखो, मिड देखो। Shadows traveling. Launching thorns. भी आ रहा है, भी आ रहा है, भी आ रहा है। मिड है। डीसी तू उधर ही देख। रैंप आ गया। फ्लो पास है। One enemy remaining. दोनों डैमेज है मादर। Spike down B. हम पे रख सकते हैं मादर से, हम जहाँ होते वहाँ कोई नहीं आता। Cover going out. नीचे नीचे लाइन पे। Can't die yet. So much to do. तो बोलो कोई बयान है कि लोगों को, हम जहाँ होते वहाँ कोई नहीं आता मादर से तो। ए पे नहीं आया कोई। Reloading. भाई 143 गेको 80 छोड़ दे डीसी। 2-3 और डैमेज दे ही देता, मेरे किल आ जाता। छोड़ कोई डिस्कशन नहीं। कोई डिस्कशन नहीं, सही बात है। जीते ना राउंड बस बहुत है भाई। 7 का डैमेज से बच गया, एक हेड दिया था मैंने बस। यहीं आ रहा। Cover going out. मिड वॉच, वॉल टूट गई जल्दी बहुत। ना मिड वॉल टूट गए भाई, देख ले भाई जल्दी इधर आ। मैं जा रहा हूँ बैक। Shadows traveling. No more. Blinding. Sorry, little guy. नाइस यार। Spike planted. Last player standing. और कर लो भैया बैक स्टैप, तब तक पूरा स्क्वाड निपट जाएगा हमारा। राइट पे एक बंदा है। नहीं नीचे। राइट पे नीचे। भाई भाई भगवान से कृपया है भाई, तू बैक स्टैप मत देना भाई। ऐसे गेम के साथ अगर तू बैक स्टैप देगा ना भाई, तू भी मर जाएगा। क्यों नहीं संभल पा रहा है भी? हाँ भाई रहना भाई, मेरा लौड़ा भाई, मैंने 2 मारा, एक उसने मारा भाई। मिड से आया वो। तो मिड रैना को बोला ही आए ना भाई। तो भाई मैंने रैना को बोला भाई मेरा क्या कह रहा है, बैक स्टैप देने जा रहा हूँ। एंटी भाई मेरा बात मानो ना भाई, मेरा बात मानोगे तो लौड़ा वो कर पाएंगे कभी। जस्ट हियर माय कॉल भाई, नथिंग एल्स। Wall raised. मिड से आता है यानी कि लोड़े मेरे पास आते ही नहीं है, इतना दबदबा है क्या मेरा? Cover going out. चलो भाई, नो एंट्री अभी। मिड। Reloading. Enemy spotted mid. Irrelevant. Last player standing. क्या है Ultimate's ready. मुझे बहन की तू। Spike down B. ये गए वो लोग, मिड से चले गए। स्पाइक दे रहे हैं। The arsenal. नाइस। Blinding. शिफ्ट होकर तो हेवन। गन आ गई, क्या मेरे आगे ही थी। मर गए भाई मिड में, इस बार भी 3 मारा मैंने। एजा भाई। Reloading. मिड तो देखो भाई, मिड तो देखो। Here. ये रहना मादर चोद, इसकी माँ की चूत। ओ बहन के लोड़े, क्या दिक्कत होगी? तुझे नहीं सामने जाना वाले को कर बोल बे। रहे।
चूतिया है क्या भाई? भाई को बोलूंगा। फिर क्यों बोलेगा चूतिया है क्या? ये देख अब तो बोलूंगा ये है गणवा। अरे आ गया मेरा भाई वापस आ गया। आजा भाई कोई दिक्कत नहीं है। आजा भाई मारेगा तो तू सुन तू ब्लाइंड मत दे मेरा ब्लाइंड है। Oh yeah! Monster on the loose! मारो भाई एक ही आ पाएगा भाई। वो भी नहीं आ पाएगा। जगह रहना बचा लेना भाई तुझे। थैंक यू यार। One enemy remaining. Enemy spotted. Hey. If you can't do something right, don't do it at all. Spike spotted A. Reloading. यार अटैक देते ना भाई ओडिन कर देते हम। कुछ तुम लोग तेरे को कुछ सेम दिख रहा है क्या डीसी? सामने वाले का किल मेरा किल। Wall raised here. तुम तो मेरे से ही बंदा गया पता है। Spike down B. Last player standing. बच गई। प्लान तो होने दे क्या दिक्कत है? पोस्ट प्लान देख लेते। अच्छा Spike planted. 2v4 तो पोस्ट प्लान देखता है भाई। 2v3 है चूतिया एक को मारा ना मैंने लौट खेलने देगा मेरे को भाई रहना भाई। Last round before the switch. अगर मिड में ट्रैप लगा वॉर मत करो मिड में तो सुन ना एक ट्रैप मिड पे लगा दे बी के एंट्री पे लगा दे। हाँ वही कर। और सेज वॉल ला के अंदर आ जा कोई दिक्कत नहीं भाई। आने दे उनको अंदर आने दे कोई दिक्कत नहीं। पूरा घींच उनको अंदर मारते हुए घींच। वॉल मत करना बेटी। Can someone get this? Thank you. वॉल कर दे। They found my wire. My camera is destroyed. Shadows traveling. Reloading. You fought well. One enemy remaining. अरे एस मार कोई दिक्कत नहीं मार तो एस मार। Reload. Don't worry. Your life won't go to waste. Reloading. Switching sides. एस था क्या इसका विकास का मर गया था विकास। जब मर गया था फिर ठीक है। भाई एक बार टैब दबा के देख भाई विकास के 12 किल है मेरे 14 और तुम लोग के मेरे पे 5 है भाई वो भी महत्वपूर्ण 5 है मेरे। महत्वपूर्ण कौन से 5 है भाई? जो 5 राउंड जीता है भोसड़ी के 5 के मेरे। मेरा लौड़ा एक चीज तुम्हें बता सकता हूँ साइट पे बंदा है कि नहीं ठीक है। रुक जा हमको लगेगा बी जा रहे। रुक जा होल्ड Blinding trapped. Blinding. जाओ साइड पे कोई नहीं जाओ। बोलता उनको लगेगा। Enemy spotted. Reloading. No charges. Plan. No. Just die. Enemy spotted. A. Pirate. सी झील कर। Someone's at defender's spawn. Placing ball trap. भाई मुंह में मार दी मादर चोद। No. आएगा चिल कर रहना मत मार। हील देगा ठीक मत है रहना ठीक मत दे।
Last player standing. करता रहा उनसे पैर की चूत यार उधर थोड़ा मैंने कर दिया रेस हो गया उसका। अच्छा तो मैं करता क्या बता ना, तू बता क्या करता मैं। अरे यार हर एक मैच में ये दे रहे हैं। पहले से मैं कहां से छुपूंगा उधर भाई ये क्या बात है भाई, दोनों तो सामने से हैं है ना पीछे अभी। निकाला भाई रेस का 20 से आ रहा था बैक स्टैप देने को। तुम्हारे वॉल के लिए मैं बैक स्टैप लगा देता हूँ, साइफर ट्रिप मत यूज करना। सेंटिनल नहीं है वही ना, ट्रिप है ना कुछ है, करते का है तो ब्लाइंड हो कुछ। Feeling set. Reloading. Ready. Here. तो एक सेंटिनल था वो मैंने मार दिया। Someone. हमारे से पकड़ लिया। Reloading. क्यों गया डीसी? नहीं क्यों गया तू? आने दो Reloading. अरे 130 है भाई। One enemy remaining. मारो उसको, जाके मारो। Be grateful I killed you quickly. यार मेरा एस नहीं हुआ भाई। Weapon here. तूने भी चला था भाई। कोई नहीं यार, इस क्या चाहिए भाई। भाई वो वाला स्पेक्टर देगा क्या मेरे को थोड़ा सा? ले ले यार ले ले। देना भाई। मेरे को वो दे दे फिर। हाँ मेरे को फैंटम दे दे ना, भाई तो है फैंटम दे दे। जी घुसो यार, सिंपल है भाई मांग भाई मांग। भाई मैं क्या मांगू, स्पेक्टर दे दे मेरे को। अरे वॉल अच्छा तो अटैक वॉल क्या चाहिए? Yes. कर पाएगा ना ये तो। इधर आ ओए वाइस। अरे मैं ठीक। अरे स्पाइक ले क्यों दे दिया मेरे को? रुको कौन? Cover going out. होल्ड करो होल्ड। Shadows traveling. भाई कोई मेरे से स्पाइक लेके जाओ ना भाई। स्टडी के मिड से क्यों आ रहा है? रुको आन दो उसको, आन दो। Barrier created. Here. हेलो Here. Here. Current division. Spike down. B. Last player standing. अरे भाई यार स्मोक में मार दिया मादर चोरों ने। I need a weapon. Reloading. Thank you. बी साइड घुस सकते हैं, मैं ब्लाइंड दूँ, तेज वॉल कर दे, फिर हम वापस आ जाएं। The spike is here. वो तो बाद टाइम पे चाहिए। हाँ तो यार कॉम्स हो रही है ना, बातें करो और चलो। Enemy spotted A. Enemy spotted. Mid. Shame. साइड पुश मत करो अभी, रुक जाओ और टाइम। आया उमन, ब्लाइंड दे ऊपर। No charges. ऊपर ब्लाइंड दे, तू जा तो। आओ भाई तुम लोग आओ। अरे 80 यार ये ऊपर बैठा हुआ है। Light planted. एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे इज 80 है, बैकस्टैब 80 है। One enemy remaining. नाइस। मेरा एक मादर वॉल कर दे सेज वॉल कर सेज वॉल कर दे। अरे इधर में स्पाइक है। Wall raised. ये क्या वॉल किया तूने?
अरे स्पाइक किधर प्लांट है तो देख ले। अब हट भोसड़ी का। Last player standing. यार आराम से तरुण, आराम से आराम से आराम से। भाई लौड़ा करो भाई, क्या गांडू हो भाई। हट ये Clutch. कान मर गया है तो क्या फायदा उतना घूम के 4 बंदे मार के आने का। मेरा Reloading. ये मैच तो मेरे लड़ पे गया भाई, नहीं जीतेंगे ना। साइफर से एक भी किल हुआ है उसके बाद, मैच के बाद। Reloading. अलीना से भी नहीं होगा। अभी 12 पे अटका। क्या बोलूं मैं इसको, एस मिस का क्या बोलूं मैं इसको, लौड़ा कुछ बोलता। The hunt begins. क्या फायदा भाई, हो गया वही राउंड जीतना था तब हो जाता है दूसरी बार। तो मारने में मरते तो मरे, मार पा रहे नहीं चलो ले। Last player standing. My ultimate. नाइस नाइस। हो गया भाई, वही राउंड जीतना था भाई, लौड़े लग गए। ते जीतेंगे यार, जीतेंगे। लौड़ा जीतेंगे। लौड़ा भाई ना, लौड़ा जीतेंगे। Reloading. 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 अंधा पूछ। Reloading. No. जानबूझ के लेता है। Reloading. 12 से 1 किल नहीं मारा भाई वही चलती है यार उससे। मारा इसने 2। वो नेट फेंकेगा, रुक जाओ, नेट फेंकेगा। Flash place. Flashing. Enemy spotted A. Reloading. Cover going out. Feeling sight. साइड पे। My ultimate is ready. Healing you. Reloading. साइड पे जा, वॉल करके साइड पे जा। Spike planted. मादर चो साइड में क्या को है पैन के लैंड। Last player standing. वो सारे उड़न कर रहे हैं मादर को। भाई वॉल तो Match point. Reloading. Reloading. लौड़ा ये रीजन से तो क्या है। Reloading. आटा कुछ नहीं हो रहा है, एक बंदे ने। Reloading. तो क्या करेगा। हाँ भाई, जहाँ से जाना है। Cutting their vision. I have the spike. मरेगा मत जाग। Spike down A. You had your fun. My turn. Enemy removed. Your duty. I have this one. One enemy remaining. Enemy all dead. And I'm still hungry. क्या बोलते हो, कमबैक होगा नहीं होगा? Reloading. अरे यार नेगेटिव थिंकिंग ही हरा देती है बंदे की। भाई क्या कर सकते हो भाई, सच में कुछ नहीं होगा।
Reloading. एक पिक इधर निकालते हैं सारे वो एक बात बता, अबे रेस रैंप्स को में मारा, रैंप्स में क्लोव को मारा, किसको भी बैठा मैंने कैसे को खतरा दिया तो पता। Enemy spotted. Fire in the hole! Just die. They will cover. Found माँ की चूत बहन के लोडों की स्मोक में मार देते हैं। You will not kill my allies! मार मार जाके मार। को किधर मारा? उधर 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 नीचे है। चल आजा, तेज आ रही है, तेज आ रही है, इधर आ जा। स्पाइक उठाओ। I have the spike. Someone is A. नाइस चलो। On my mark. नीचे कूद गया यार ये। नहीं भाई मरना मत यार। अरे बीपे क्या हो रहा है? Enemy spotted. भाई ये अभी कहाँ कैंप कर रहा होगा कोई आइडिया नहीं। रीना ए पे है, ठीक है। बीपे आओ ना प्लांट करने आओ ना इसके पास। मूव कर दो अपने। 30 seconds left. बीपे प्लांट कर, वॉल कर देना इस साइड। हेवन स्मोक कर, हेवन स्मोक कर। चलो इजी है प्लांट होगा अपना राउंड। बस मिड से ना आ जाए भाई। One enemy remaining. नाइस चलो जाएगा बस। बॉल तोड़ रहा है। स्मोक कर दिया। ब्लाइंड पे देख लूंगा तुम्हें। ब्लाइंड दे रही जैसे वो दिखता है मैप में। हाँ This is nothing. सालों के पास अभी भाई है। मेरा अल्ट है बी पे चलो। Reloading. या ए पे चलोगे बताओ। ए पे भाग जाते हैं। Reloading. अरे यार नहीं हो रहा भाई। बी पे चल, मैं तो बोलता हूँ मेरा अल्ट आ जा। तो ऑपरेटर जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। Oh yeah! Monster on the loose! Good hit. आया भाई। अरे भाई तुम कहाँ हो? मर गया वो। अरे बहन चोद। घुसो घुसो घुसो। उधर 3-4 बंदे कर दो जल्दी प्लांट कर दो 3-4 बंदे उस साइड। Wall set. बॉल करते बॉल करते। Begins. Planted the spike. Enemy spotted. B. Want more? Here's more! नीचे आ गया रेना नीचे। रेना नीचे। Good hit. Last player standing. उसकी रहना नीचे आई, दूसरे को मार के। Defenders win. ठीक है भाई चलो। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। तेरी माँ की चूत डाले विकास। अरे यार ऐसे मजाक में बोल रहा होगा वो। ठीक है सब। ठीक है चलते और। फट बहन के लोड़ों ने मादर चोदों ने बहन की चूत इनकी क्या मादर चोद है भाई। किल तक नहीं हो रहा मादर चोद क्या। कैसा कैसा राउंड दिया देखा तूने? मादर चोद कोई वॉल कर दे रहा है चूतिया की तरह। लगातार 3 MVP है तो फिर भी गांठ सकते।
Smooth operator. मेरे लास्ट के 3 मैच देख तू इन भाड़ों के साथ। अरे ये भी चीज आते भाई, टीममेट ही चूतिया ना कॉल सुन रहे हैं जो ना अपना कुछ। कौन कौन है विन स्मोक? बिना हम नहीं मिलेंगे यहाँ से क्योंकि मैच उधर ही हमारे। क्या हो रहा है? अबे यार मत कर कॉम्पी में क्यों भाई, एक सेकंड रुक जा। तेरे बहन से ईयरफोन फंस गया। कर भाई में क्यों यार, 3 स्टैक में तू जानता है कैसे बंदे आ जाते हैं। रात को गाली गलौज करने का भी मन नहीं हो रहा है मेरा। तो खेल उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विंस्मोक अच्छा खेलता है। इन क्यों में है लेकिन ये 4 स्टैक पैंट चोर। हमारे साथ भी आ जाओ। तेरे में नहीं है क्या? और ठीक है तो क्या कर सकते हैं फिर। बाय बाय। तू बहन जो तेरा नहीं हुआ अभी तक सिल्वर? तेरा ये रैंक अप मैच था ना। 84 भाई तेरा इतना लाल है भाई, इसके बाद मेरे साथ खेला तो थोड़ा ग्रीन है भाई। लाल लाल ही लाल है भाई। तो क्या हो गया? कौन सा मैप था? सनसेट। सनसेट में क्यों लिया सेज में? क्या जरूरत है उसकी? ये सोवा भी तो चूतिया की तरह खेला है भाई, ये कौन सा अच्छा खेल लिया जो ये ले लो। ये 5 13 अरे अच्छा। चारों के नाम नीचे से शुरू हो रहे। अरे भाई भाई
ये मैच तो बकचोदी मारे हैं हम अभी वाला। ये कौन सा था? 13-9 नारुतो आयुबी कम बार। अच्छा ये दोपहर वाला मैं लाइव देख रहा था। नारुतो ने किसी में वॉइस लिया था ना, जीत गए वो हरा वाले में हुआ। टीम एमवीपी कहाँ नारुतो जो मैं की। इसके बाद ही होगा फिर। कौन सा मैच है रे वो वाला? ये कौन सा सरेंडर करके आया तुम 08 से? भाई हार के आया भाई वाला मैच भाई। तो भाई तो बोला नहीं सबके बस की बात नहीं है वाइस खेलना। अबे अनरेटेड वनरेटेड लगाया तो कुछ कर। मैं फन के लिए खेलेगा एक दो मैच फिर सोने जाएगा। ठीक है भाई चल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई बाय।
Let's break down how crosshair placement pertains to game sense though a bit more to give you a better idea of what this looks like in action. In this section, we're going to take a look at a few rounds where game sense played into how the player chose to place their crosshair during these rounds, and why they made the decisions that they did. Hopefully by the end of this section, you should have a better idea of how to better position your crosshair to land those crispy head taps. Let's start out with a clip that is slightly similar to our example in the last clip of rotating through mid. It's not 100% the same thing, but it's close, and I think that it showcases a more important thing to recognize in these clips, which is that if your team doesn't have control of an area on the map, you should assume that there are enemies there. Take note of how in this clip, our Sova is fighting Garage with his teammates, but if you look closely, you'll actually notice something that is super important to note. Sova's team does not have control of B. Control would mean that they either have a player on B who is spotting it out, or they have some sort of a tripwire from their Killjoy, Chamber, or Cypher, or even a wall from a Deadlock or Sage, to make sure that nobody is crossed into sight. Since Sova's team has none of this though, you'll notice that when Sova turns around to leave window, he's not just assuming that his teammates still have control of this area. It's actually quite the opposite. Since Sova's team doesn't currently have control of B site, he needs to be very careful that the enemies haven't walked through there. This is why you'll see Sova pulls out his rifle and peeks out of window the way that he does. His awareness netted him an extra 2 frags in this round, and all it took was him looking up at his map and seeing what his team currently had control of. Remember, our rule of thumb is going to be that if your team does not have control of an area, that means that the enemies can be there. Using this rule, I'm oftentimes able to make some super crazy accurate predictions based only off of what we don't know. In this next clip, our Deadlock is actually going to be flanking on Haven. Before we even get into any kills, let's take a look at how this player flanks. They walk up keeping their crosshair trained on window because this is the most likely position for an enemy to start rotating towards them from. Because enemies could come from both window and A long, if someone were to start heading towards C, it's very likely that they would come from this choke point, whereas if somebody were to come out of mid, they probably would be looking towards Garage instead, making it far less likely that a player swings them from their left. Still though, you'll see as Deadlock walks past grass, they quickly turn to their left just to clear it while they're isolating their right using the wall. If you ever have your back to a certain location, you always want to place some sort of cover between you and that location that you're exposed to. This is to reduce the risk of being caught off guard or timinged in your rounds. Right here you'll see though that Deadlock doesn't spot any players and continues towards window where they hear the enemy Brimstone reloading. This first kill shouldn't take too much game sense. They heard a player reloading and they prepared for a fight. However, take note of how immediately after this fight, Deadlock positions their crosshair towards A long, expecting somebody to come for the trade. Because Deadlock has walked all the way through C, they know that nobody was on that side of the map. Or in other words, they have control of C long. This means that all of the opponents must be either mid or A lobby. Since Brimstone just came from window, Deadlock assumes that nobody is immediately going to swing her from window, so she instead places her crosshair towards A lobby, perfectly allowing for her to pick up her second kill in this round. This is how you can figure out exactly where you should be aiming simply by thinking about what areas you know that the enemies are not. If the enemies aren't C long and they aren't grass, there's only so many locations that they can be. Deadlock uses this process of elimination to her advantage here to pick up a super awesome frag, helping her team close out the round. Let's take a look at a second clip from our Deadlock though, this time on Fracture. This clip is actually going to cover something that is incredibly common in matchmaking, which is dying to players swinging spawn. Take note of how in this round, the Deadlock is seemingly aware that the enemy Reyna is about to swing spawn, but there's really nothing on her minimap that signifies this is the case. Deadlock has a lot of ground to cover before she reaches the A site, and many players would likely just rotate this entire way with their knife out. But Deadlock actually pulls out her rifle just before peeking the angle, allowing her to be prepared for the Reyna's swing. So how did she know? Well, this just comes down to game sense. When you look up at the map, Deadlock's team does not have control of A site right now, and this means that even though they might have control of their spawn, it does share a border with the A site, so at any moment she could be swung. Something else that's important to remember is that there is a common bad habit for many players, especially duelists, to push way too far after gaining numbers advantage. It might actually be frustrating to get run over by players in spawn like this, but the reality is, you should actually be kind of thankful when players make mistakes
mistakes like this. In a 3v5, it's actually going to be really hard to retake if the attackers play this smart. All they need to do is set up crossfires and make sure that they land their trades. This means that as a defender, you're kind of just waiting for the players to mess up like this. In this case, the Reyna gave the Deadlock a 1v1 gunfight, basically offering up a chance to win the round. Now it's a 3v4, which is slightly more manageable than a 3v5. So while it maybe isn't the smartest move for players to push up like this when they have man advantage, in matchmaking you should almost always expect that they will. If they don't push up, then you probably will just lose. So at the very least, if you expect they will, you might just have multiple rounds falling into your lap. So let's take a look at a third clip where our Deadlock seemingly sniffs out the enemy's position once again during a 3v2 on Lotus. In this round, notice how our team has lost basically all map control in their spawn just before the enemy team plants the spike on B. Especially after our Deadlock sees the enemy Omen in spawn, it's going to be incredibly dangerous for her teammates to re-clear this area. There is a lot of opportunity for attackers to make a play here and catch our Deadlock player off guard, so they are playing very safe. As the defenders rotate towards B site for the retake, take note of how the Deadlock is first pre-aiming the spawn angle prepared for an enemy player to try and land a kill from there. While she does this, she also isolates the heaven angle on her left. Then as her teammates get closer to that side of spawn, Deadlock shifts her focus into heaven. She doesn't just run straight into heaven though, she instead pre-aims it as if she knows that somebody is there and begins to peek it. It's actually quite simple why Deadlock has the game sense to even expect this play, and you've probably guessed it at this point. It's because her team lost all of this map control before, and if she just acts like they didn't, she's going to be caught very off guard. Once you lose map control, you need to treat it as if enemies can be everywhere. The only exception to this is if you are short on time and need to take a gamble on angles to speed up the retake. But in this case, the Deadlock knew that they had plenty of time and instead decided to approach the round a bit more safely and anticipate that the enemies were looking for a fight. Especially since the attackers are down numbers, if they don't land a pick, they will just get traded out and lose the round. The general rule of thumb that we pitch is that if your team is down numbers, you should look to make a pick, and then if the team is ahead in numbers, you should look to play more passive and play for trades. As we discussed with the last clip though, players don't always play safe when they're ahead in numbers, but they do often play aggressive when they are behind in numbers. So basically, when they're behind in numbers, they will play aggressive, and when they're ahead in numbers, they will probably play aggressive. So you can't just be running all over the place all willy-nilly. When approaching a retake, expect that enemies are going to be swinging you in spawn, and you'll be a lot less caught off guard when they do. But ultimately, remember that in Valorant, the points of danger are always going to be where the areas you have control over meet the areas that you do not have control over. The only way to see what you have control over is to look at your map. So for example, if we look at this setup, you can see that the defenders have a control of a lot. They have A long control, they have C long control, and they have garage control, and they even have B control. Also, keep in mind that the defenders have all of the space connected between them as well, since the attackers would have to kill one of their teammates or destroy an alarm bot to get behind enemy lines. The defenders have everything covered. However, what would happen if, for example, Reyna died? Now the defenders actually lose a lot more space than you would think. It's not just B site that they lose. Depending on how long ago the Reyna died, the defenders could also be in C link and A link. This means that when the defenders rotate over, they need to be very careful for enemies to be pushing into their spawn, since they can't be sure if they did or not. This is part of the reason why if you're anchoring site alone, it's actually super important that you play safe so that you don't die to a lurker. Because the moment that you die, your team will lose an incredible amount of map control, meaning that they have to re-clear a ton of space before they even start the retake. As you can see though, crosshair placement with game sense all comes down to knowing what map control you have and what map control you don't have. By understanding what areas of the map you do not occupy, you can be much better prepared for all fights in your games and set yourself up for success. Now we're going to be moving on to positioning, which once again is a very important topic in Valorant. Positioning comes in many different forms, but the main thing that you want to think about with your positioning is how you want to take a gunfight with your enemies. On a similar topic to utility, if you're smart with your positioning, you can position yourself in ways where you will take gunfights on enemies who just are not expecting you. Whether you do this by swinging off a flash like we talked about in the last example, or you do this by setting up a crossfire with your teammates so that when they peek you, they're not even looking at you. It's very important that you're finding some sort of advantage in these gunfights. The main thing that we want to promote for players though is that we highly recommend playing the same positions frequently in your matches. The reason we recommend this is because the more you play a position, the more you'll get used to the timings that revolve around playing that position. You'll learn where to put your crosshair because you'll know how people normally peek that angle. You'll know where to stand because you'll know where they're normally aiming. Something that I learned from our unranked to diamond climb on the website is that
you don't really need a huge playbook to be able to climb to diamond, or even probably beyond that. All you really need is 2 to 3 really good plays that you can kind of evolve throughout the rounds. Since the game is built in a way where it's the same maps and the same agents and the same angles, it's a game that's meant to be perfected. Valorant isn't a battle royale where every game is different. It's actually quite the opposite. Every match is played more or less in the same ways, and that's why I'm going to repeat this phrase because I think it's so true. It's a game that's meant to be perfected. And this makes things like practicing in custom games all that more valuable. When I say play the same positions, I don't mean play in the exact same spot every single time, but learn how to play like C site on Haven, or learn how to play like B site on Ascent. Learn the angles, learn the positions, and master the game. If you're trying to do something wacky or new every single round, you're just going to result in a bunch of subpar plays. But if you really master playing a certain location on a map, you can take control of a game entirely. In this section, we covered a ton of things that make aiming easier for you as a player, which is going to be incredibly valuable for you. But in the next section, we're going to cover something equally as valuable, which is how to make aiming more difficult for your opponents. Hey everyone, and welcome to our last section in this series where we are going to be talking about how you can use utility to make yourself more difficult to hit. This is going to include some obvious examples such as flashing enemy players, because if you flash somebody, they shouldn't be able to see you. But this also includes some other examples such as swinging off of abilities that are intended to pull. Always try to be conscious of where a duel can take place, and if you think it's about to happen, make sure you're utilizing that sideways movement to make yourself as difficult to hit as possible. Now it's time for us to talk about something that is debatably even more important than aim in Valorant, which is how to make aiming more difficult for your opponent. Underground just trying to spray through. She's coming out on the attacks that are trying to come out of these smokes. It's going to be so dangerous. And we're just shocking, trying to land these shots. That refreshes on that kill. Wow. There's another one. And now, although this course is titled How to Become an Aim God, the best aimers in the world complement their good aim with exceptional movement to make sure that they are very hard to kill. Players oftentimes forget that there are 2 variables to a gunfight. The first one is how fast you kill your opponent. Sure. But the second one is how fast your opponent kills you, which is equally as important. If you think about it, as long as your time to kill is lower than the opponent's, you're going to win the duel. But how do we have good movement? Well, generally what is referred to as good movement comes down to 2 things. The first is that your character model is moving as quickly as possible across the enemy's screen. The second is that your character's movement is as unpredictable as it can be. Let's start with the first one. Now, although there are only a few different movement speeds in the game, there are some things that you can do to make it so your movement appears faster to the enemy than it actually is. The first way is, of course, make sure you're running when you peek the angle. If you're holding shift when you peek, you're making it so your character model is much slower than it should be when you're peeking, and it's going to make it a lot easier for them to land their shot. For many lower ranked players, this is going to be the #1 reason that they get one-tapped all of the time. They just don't let go of their shift key before they swing angles, and it makes it really easy for them to get one-tapped. The second thing you want to focus on when you're swinging angles, though, is the direction that you're running when you do so. This may be confusing, but just stick with us. Many players, when they swing angles, they will hold a combination of W with D and A. This gives them a sort of slanted movement to their run, and it's going to make it a lot easier for the enemies to hit you. Because of this slant, it essentially looks like to the enemy that you are running straight at them, which makes you a really easy target to hit. For example, if I'm running straight towards you right now, it's not going to be hard for you to keep your cursor on my hand. However, when I'm moving my hand like this, it's going to be a lot more difficult for you to track it. It's essentially as if they're shooting a target that is standing completely still. Instead, what you want to do to make yourself as difficult to hit as possible, you only want to hold D or A when you're swinging an angle. This will cause all of your movement speed to be applied to one direction, and it will appear as if you're moving faster than you actually are on the enemy's screen. Not only this, but there are even some other things that are going to affect how your movement speed looks to the enemy players. For example, the closer you are to an angle, the faster you're going to appear when you swing it. Take a look at this clip. Notice how long the player was actually on the enemy's screen. It wasn't very long.
Although this is an extreme case, it's very important to see because sometimes it's good to look at an extreme case so that you can understand how it works normally. This is good to know, by the way, for guns where you might consider run and gunning the enemy players, such as with guns like the Spectre, Stinger, Judge, Bucky, Frenzy. There's so many of them. Now, all of these tips themselves obviously are helpful, but the biggest thing to remember if you're a player who's really looking to improve is don't hold W when you're swinging angles. Not even just swinging angles, but when you're looking to take a gunfight or you think a gunfight could happen. Always try to be conscious of where a duel can take place, and if you think it's about to happen, make sure you're utilizing that sideways movement to make yourself as difficult to hit as possible. Now it's time to move on to our second thing that you should be doing to make it as difficult for the enemies to hit you as possible, which comes down to positioning. While movement is incredibly important, positioning is really important for those players who maybe feel like they're just getting one-tapped every time they hold an angle. The first thing that you need to understand with positioning is the existence of on angles and off angles. An on angle, as you might expect, is a position that is on the angle of where somebody might peek. Notice how all of these angles are positions where a player might aim if they were clearing one by one each position on site. A reason a player might aim at these spots, though, is because they are theoretically good positions to play. They're close to cover and they give you good angles. But you might be surprised to hear that oftentimes on angles are not very good positions to play. Always try to be conscious of where a duel can take place, and if you think it's about the reason a player might aim at these spots, though, is because they are theoretically good positions. Positions to play. They're close to cover and they give you good angles. But you might be surprised to hear that oftentimes on angles are not very good positions to play, because players are going to expect it and be prepared for the gunfight when it takes place. Instead, sometimes you might look to utilize something called off angles. Off angles are exactly what you might think. They're an angle that is off the common position. They are designed to catch a player off guard to make it as easy as possible for you to land that headshot. Off angles are incredibly powerful, and you should look to utilize them whenever it's safe to do so. That being said, how do we figure out when it is safe to do so? Well, that really depends on a lot of things. For example, does the player have any positions to get out of this angle after they land that first kill? Agents like Jet, Reyna, Yoru, and Chamber utilize off angles really effectively because they eliminate a lot of that risk of not having cover. They can land the kill and then immediately disappear towards cover. However, if I'm playing an agent like Sova, as I mentioned before, it's going to be a lot more risky for me to utilize off angles, because if somebody swings me, I'm probably just going to get traded out even if I do get one kill. I just don't have the movement abilities to get out there. That being said, that doesn't make off angles useless on an agent that doesn't have movement abilities. You just need to be more clever with how you use them. For example, if I'm playing Sova and I'm in a 1v1 with somebody who doesn't have any flashes, I might be inclined to use an off angle because I know that they have no way of taking me off that angle. As you could imagine, if I'm in a 1v1 against a Phoenix, it would really suck if I'm standing in the middle of nowhere and then he hits me with a flash, because I would have nowhere to go. But depending on the agent that you're facing, as you can see, this allows you to do different things. Another time in which you might utilize an off angle is if you think the enemy's positioning is fairly poor and you think that you can squeak out a kill before they're able to trade it. This is something that you might commonly do in matchmaking because communication's pretty poor and their teammates are probably less inclined to trade them out consistently. Even though this goes against
against some of the fundamentals for an agent like Sova, this might be something that you can utilize to catch your opponents off guard. All of this talk about off angles though really shakes it up, because many of you are probably thinking that on angles are bad, but this isn't the case. The thing that you want to remember with playing an on angle is that you're generally going to be safer than a player who's playing in the off angles because you have more immediate cover. This means that it's going to be a lot easier for you to play your life and just be really annoying for the enemy to deal with. You can do this by throwing utility or peeking around either side of where you're defending. By serving as a sort of distraction for your teammates, you can give them a lot of room to actually help you out with utility or catch the enemy off guard by swinging through smokes, and this can be really good for your team to secure sites in rounds that you'd really have no business winning. This is what we would generally call anchoring sight. This brings us to our third thing that you can do though to make yourself more difficult to hit, which we will talk about in the next video. Hey everyone, and welcome to our last section in this series where we are going to be talking about how you can use utility to make yourself more difficult to hit. This is going to include some obvious examples such as flashing enemy players, because if you flash somebody, they shouldn't be able to see you. But this also includes some other examples such as swinging off of abilities that are intended to pull the enemy's crosshair. Things like Reyna blinds are really useful for this, but you can also use things such as Fade's Prowlers or Sova's Recons. The intention here being, if you want to make it as difficult as possible for the enemies to shoot you, you want to make it so they aren't aiming at you when you peek them. If you guys remember earlier when we talked about the importance of crosshair placement, this is where the game gets really mind gamey. At the top level, players are constantly thinking about how they can get an upper hand in a duel. Sometimes you'll do this by ping-ponging off of a teammate, where one player will take contact and then they'll pull the crosshair towards that player. This will open up the door for the other player to take contact while these players aren't looking at them. Or you can make sure to time your peek with the exact moment that a Sova recon dart hits the wall, so that way players are aiming up at the recon dart and not at you. Sometimes you can even find timings based off of how people will normally clear things so that you can peek them in a position where they aren't even looking at you. For example, if you swing a player where you think that they're clearing a location different from where you're playing. The possibilities are really endless. All it takes is some quick thinking of where the enemies are going to be aiming and how you can affect that. Personally, I think that these three ways of giving yourself an advantage in a gunfight are so important when you want to actually win more gunfights in Valorant. Remember, don't work harder, work smarter. Find every advantage that you can possibly get in a gunfight and try to catch the opponents when they aren't aiming at you. Mess with their aim, do all these little things to make it so even if you whiff your shots, it's not even going to matter because they'll whiff theirs too. Master this and you'll start flying through the ranks super fast. Alright, before we move on, let's focus a bit more on what it looks like to use your utility to make your gunfights easier. Especially on offense, this is going to be important because oftentimes you're going to have to use utility to force the defenders off of early angles and help you take space more safely. In this first clip, take note of the utility used to help the attackers take control of B main. He's a hater, that's okay. Hop in there, hop in there. I Sunder. Get in the wood. Okay. Nice, I got mine. Hey, give me bomb, give me bomb. Let's drop it on the ground. Fuck, never mind. She's fucking tapping. 62 on the red. They use a Skywolf and a Yoru decoy to clear the very first angle, and then Yoru is actually going to TP across towards B main to close the gap more quickly. This is similar to how you might use a Jet dash to close the gap on the Opper. If the attackers don't use any utility here, it's very likely that this Jet picks up an early kill with her Op, but because they were careful to use their utility to force her off the angle, they were able to put her into a less favorable position. From here, Yoru takes his teleport and follows up off the Skydog, landing an early kill onto the enemy Jet, using the utility on their team to chase her down. From here, Yoru takes advantage of the smoke that the Jet placed to pop flash the enemy Sky on Pillar and land a second kill in the round. This was a really explosive entry, but notice how Yoru didn't really take any gunfights for either of these kills. The Jet was just running away and stunned, and the Sky was full blind. Optimally, this is how you take all of your gunfights, where your enemies don't even stand a chance. It's not just flashes and drones that can help you get these kills though. Even smokes and mollies can be great for setting up kills as well. Take a look at this round from Psalm where he's playing Brimstone on Fracture. Dude, tower.
This stun just got me. 2B main, 2B main. One. Yes, sir. Brimstone is an agent who is exceptionally good at stalling pushes, but just because you're stalling doesn't mean that you're not getting kills while you're doing it. Som is going to be firing off his molly and smoke towards B main's choke point, making it very difficult for the attackers to push through here, allowing him to isolate his gunfights elsewhere on site. While the molly holds back the push from main, he finds a kill onto the enemy Reyna exiting tower, and then immediately turns his attention towards the smoke as the molly fades. Sure enough, he finds 2 enemies attempting to swing through the smoke, making for 2 very easy kills. Even on a support agent, Som is still able to find really excellent ways to give himself an advantage in fights and come up with some massive kills. As controllers, you generally want to find ways to fight around your smokes like this, as they will massively hinder your opponent's vision in the round, allowing you to isolate more gunfights, which is ultimately your goal when trying to land multi-kills. We'll cover that more later on, but for now, just keep in mind that using your utility is the best way to create favorable engagements in Valorant. You never want to fight more than one enemy at a time, because at the end of the day, you can only shoot one enemy at a time. Now it's time for some of the more exciting stuff. Valorant is a really interesting game where oftentimes getting 1 or 2 kills is more than enough to win your team the round. Despite popular belief, you don't need to hard carry every single round. All you need to do is pull your weight and a little bit more. However, just because you don't need to get more multi-kills doesn't mean that you don't want to know how to do it. Kind of replay. Yeah, even a Trailblazer, they want to set him up to succeed. It's all about it, isn't it? The right click misses and Jing just takes it anyway. Jing stole the ace! And maybe it would become justified. This is why it's important to remember the #1 rule for any tactical shooter, which is you need to isolate your gunfights. You never want to fight more than one enemy at a time, because at the end of the day, you can only shoot one enemy at a time. So that means that if you're fighting one guy, the other guy is going to turn around and he's going to shoot you in the back of the head. So you need to make sure that you're only taking one fight at a time. This is why you need to be thinking about how you can isolate your gunfights constantly so that you are always taking those 1v1s. This is why you need to be very conscious about how your teammates are positioned and how you need to approach it to find those 1v1 gunfights. And if you can't, you need to think about how you can use your utility to make it so you can. Maybe that means smoking one enemy off from another. Or maybe that means throwing a flash so you can blind one enemy and then you can take the duel on the other one. There are a lot of options. It doesn't really matter which one you choose. What matters is that you do it. You'll notice that a lot of our deaths can be attributed to not following this rule correctly. For example, something that a lot of players do wrong is they'll swing long, narrow choke points where enemies will funnel through to attack. This may sound like a good idea because, as we discussed earlier, you generally don't want to be running forward when you take a gunfight. So if these enemies have to push forward and run forward, they should be an easy target to hit. However, since these choke points are oftentimes pretty narrow, what it means is that there are a lot of enemies in them, and they're all going to be aiming at you. So when you swing, maybe you get one, but you're going to get traded out immediately. This is obviously very bad, and you want to avoid fights like this at all costs. Instead, what you want to do is start your first duel from a place where you can catch an enemy not looking at you. Although this is going to allow the enemies to get closer to you, it's also going to make it so they have to clear more angles, because if they're running through a corridor, they only have to aim at one spot. By fighting them when they're clearing angles, you can catch them off guard and find your first kill. From there, you can reposition and you can get ready for your next fight. It is important to remember for your multi-kills though, your time to kill is very important. If you spend 2 to 3 seconds trying to kill one target, that's 2 to 3 seconds that you could be using to do something else. However, if you kill that first target in just 1 to 3 bullets, then you can quickly reposition and get ready for that next duel, giving you more time to prepare for it. This is just the first part of how to land more multi-kills though. In the next video, we're going to be talking about how you can turn those 1 to 2 kill rounds into clean aces with just one simple concept. Might be one main still. Yeah. What? Fires out. Open up the sky. Hold it all. One enemy remains. Oh! Add it to the highlight reel. So if you're really looking to ace the enemy team, then of course everything that we just mentioned is still relevant.
You'll never want to take on more than one target at a time, and it's important that your time to kill is as low as possible, especially considering if you take any damage in that first gunfight, you're going to make it a lot more difficult for you to get those kills later on in the round. However, one thing that is important to remember whether you're on 1 HP or full health is that you need to reposition after each and every gunfight that you take. Valorant is just as much about mind games as it is gunplay, and if you're peeking from the same spot every single time, players are just going to be prepared for it. Instead, you need to make sure that you are always one step ahead of your enemy. Time is of the essence when you do this though, because the longer that you take to reposition and find a new angle is more time for your opponent to think and be more keen to what you're about to do. For example, if you peek from one location, sure the enemy might hold for you for like 1 or 2 seconds, but if you don't re-peek them, they might start to think, oh, maybe he's coming from somewhere else, and they'll reposition accordingly. It goes without saying that we don't want them to be prepared for our next peek. We want to catch them as off guard as possible. This is why it's so important that you practice the same tactics a lot and you prepare for the game, because the more you do something, the faster you'll be able to do it in the future. You'll really learn how to navigate these stressful situations, and in fact, the better you get at the game, the less stressful those situations will even be. You've been in the situations 100 times, so you know exactly how to react, you know how to proceed. Valorant is designed to be played this way. All of the angles are the same, the agents are the same, the maps are the same. You're meant to be in the same situations game after game after game, and that's how you perfect it. Figure out what playstyle works for you and master it. But most importantly, remember, if you want to be getting more multi-kills, you can't be taking fair fights. Find those 1v1s and use your resources to give you an advantage in those 1v1s. The most beautiful clutches that I've seen are ones where players use all of their resources available to perfection. Every peek is ensured with some form of utility, and their timings are perfect with where the enemies are aiming. These are the things that you need to think about if you want to consistently land multi-kills. It'll take practice, of course, but don't get discouraged. And when you land your first clip, I want you to actually send it to me on Discord. Head on over to the SkillCap Discord and at me in the Discord with your first clip. I really want to see it, or really anything that you learned from this course. I would love to hear from you guys. Might be one main still. Yeah. What? Fires out. Open up the Hope it all. One enemy remains. Always one step ahead of your enemy. Time might start to think, oh, maybe he's coming from somewhere else, and they'll reposition accordingly. It goes without saying that we don't want them to be prepared for our next peek. We want to catch them as off guard as possible. This is why it's so important that you practice the same tactics a lot and you prepare for the game, because you'll really learn how to navigate these stressful situations, and in fact, the better you get at the game, the less stressful those situations will even be. You've been in the situations style works for you and master it. But most importantly, remember, if you want to be getting more multi-kills, you can't be taking fair fights. Find those 1v1s and use your resources to give you an advantage in those 1v1s. The most beautiful clutches that I've seen are ones where players use all of their resources available to perfection. Every peek is ensured with some form of utility, and their timings are perfect with where the enemies are aiming. These Alright, to finish off with this multi-kill activity, there's not really any way that we can practice multi-kills perfectly. However, one way that you might practice this is in deathmatch. Lots of players probably just run around taking gunfights, but maybe something that you don't really practice as much is how you position so that you can isolate your gunfights in deathmatch. Since fighting multiple players at once is bad, it's always important to be conscious of where you're standing so that you're not exposing yourself to multiple engagements. This is why you'll notice when I play deathmatch, I'm always standing in locations where I can't really get peeked from other places. The best players are able to envision pretty much every angle they're exposed to wherever they're standing. If they know that they're exposed to an angle that somebody isn't holding on their team, then they might even sidestep mid-fight just to avoid getting peeked from that angle. This sort of skill takes a long while to train, but it can absolutely save you in a pinch when you're dueling other angles. Practice this. Alright, to finish off with this multi-kill activity, there's not really any way that we can practice multi-kills perfectly. However, one way that you might practice this is in deathmatch.
Lots of players probably just run around taking gunfights, but maybe something that you don't really practice as much is how you position so that you can isolate your gunfights in deathmatch. Since fighting multiple players at once is bad, it's always important to be conscious of where you're standing so that you're not exposing yourself to multiple engagements. This is why you'll notice when I play deathmatch, I'm always standing in locations where I can't really get peeked from other places. The best players are able to envision pretty much every angle they're exposed to wherever they're standing. If they know that they're exposed to an angle that somebody isn't holding on their team, then they might even sidestep mid-fight just to avoid getting peeked from that angle. This sort of skill takes a long while to train, but it can absolutely save you in a pinch when you're dueling other angles. Practice this in your deathmatches and think about every time you get third-partied if there was any way that you could have positioned to avoid that. Sometimes the answer is going to be no. Every now and then you're not going to be able to avoid that gunfight. However, the more you do this, the better you'll get at positioning during these gunfights, and you'll be able to avoid those angles a lot more. Next though, we're going to talk about one thing that many of you are probably here for. We're going to be giving you an aim training routine that you can follow. We recommend, especially if you're new, that you practice this maybe once a day, just to get used to that sort of leveled crosshair placement thing that you don't really encounter in other games. So you want a few aim training routines that you can use to practice, eh? It only makes sense. Aim routines are one of the most searched things that Valorant players will look up. While aim routines are very beneficial, we do believe that players are going to reach a sort of plateau where they will benefit from focusing on the other things that we've already mentioned in this course, which is exactly why we went through those first. That being said, that plateau is generally when they have a pretty decent level of aim and are able to compete with even the best players. If you're not at that point, it might be worth it for you to pick up an aim training routine. Starting out with a beginner routine that anybody can use. We're just going to focus on your crosshair placement and your mouse control. To do this, all you're going to do is go into the range and turn on Eliminate 100 Bots by pressing F3. From here, you'll shoot the start button and you'll head on over to the right side of the range like we talked about before. Then you'll just start clicking heads. You'll notice as you do this, your crosshair will never really leave the same level. This will help you fluidly switch between targets as well, helping you with your mouse control. The reason we head on over here to the right is because this is going to put all of the bots in front of you, which is generally how you're going to take engagements in Valorant. This is why low sensitivity is generally favored by pro players, because they don't really need to do those 180s or those 360s that you'll see in other games. After all, if an enemy is behind you, you're probably dead, so you don't need to worry about this as much. We recommend, especially if you're new, that you practice this maybe once a day, just to get used to that sort of leveled crosshair placement thing that you don't really encounter in other games. Then, once you feel more comfortable with this, as we talked about before, you can try to incorporate movement. Try to strafe from left to right, and just practice shooting these bots while you're on the move. You'll notice that by doing this just a few times a day, you'll really see an improvement in your aim, and you can progress on to the next step. Of course, this alone won't help you become an aim god, but we'll move on to the next exercises that will really help you get there. Our next exercise is going to be in the range as well, but we're going to focus a bit more on tracking. Now, although tracking isn't the most important thing as a player, it's very important that you master this so that your aim is well-rounded. One way to practice your tracking is to quite simply spawn the bots and just practice walking around the range while aiming at their head. This, although boring, is one of the best ways to practice your tracking and get used to your sensitivity. I've normally done this whenever I change my sensitivity. I'll come into the range and I'll just practice keeping my crosshair on their head because it really does help with that mouse control. One really nice thing about this exercise too is that you can do this in the pre-round in your matches while your teammates are running around. Just practice tracking them, and it's a nice little way to kind of recover that aim if you didn't really do like any sort of training before the match or anything. Think of it as like recalibrating your aim. Other methods of where you can practice your tracking would be maybe you turn on the strafing bots on the range and you track their heads as they go back and forth. I've done this one to pretty decent effect. You can also go into third-party aimers such as Kovacs, and they have a ton of tracking exercises that are even more in-depth than the ones in Valorant. However, something to keep in mind with using a third-party software is that it's not going to function the exact same way as Valorant. So the movement might be different, the targets are going to feel different. It's not going to transfer over one-to-one. This doesn't mean that it's useless though, and in fact, when used to strictly train your tracking, it's a very good tool. The problem with aim trainers generally occurs when players don't really focus on the other aspects of their play that are important, such as positioning, movement, timings, utility, all of the other things that we covered earlier in this course. But for just training raw aim, you can absolutely find a lot of benefits from using these platforms. At the end of the day though, it's really up to you and what program you decide to use. There are a ton of ways that you can train your aim. You just need to find the best one for yourself. If you feel like you need to work on your movement more, maybe you spend more time in the range practicing your strafes on bots. Or in deathmatch,
match fighting real players. If you think you need to work on your flicks, maybe go into the range and do 100 bots and just try to flick between them as best as you can. Or there's the other exercises that are quite literally just meant for training your flicks. Remember, when you're practicing, you don't want to reward yourself for missing though. So don't really just like flick to the target and start spraying. Try to make sure that you're as accurate as possible with your shots and you're not missing. Finally, we'll be taking a look at one of the last things that we need to understand to become an aim god, which is how to control our recoil. As you've probably noticed by now, the guns in Valorant have a pretty random recoil pattern. Sure, it goes up as you might expect with recoil. However, after that, you can't really predict if it's going to go left or if it's going to go right. Luckily for us though, for most guns, it's only ever really going to take 1 or 2 shots to kill our targets. So if we are able to make sure that those 1 or 2 shots that we fire off immediately land, we don't even need to worry about recoil control. This is why when you watch pro players, you'll notice that they prioritize just firing shots off in bursts. They'll shoot a quick burst of bullets, strafe to the left like we talked about before, and then they will shoot another burst if they missed. This will help them achieve the goal of being more difficult to hit, but it will also give them the benefit of making their shots more accurate so that it's a lot easier for them to land those shots. Depending on the range though, the amount of bullets that you'll want to fire off in a burst will vary. If the target is within 15 meters, you might consider spraying. However, if they're beyond 15 meters, what I would suggest is a 3 to 5 bullet burst, strafing, and then firing another burst. If you want to go even further though, if you're dueling a target beyond 30 meters, you probably just want to fire 1 bullet at a time, because at this point it's going to be hard to even make those bursts accurate. This isn't something that's going to come naturally to everyone, but it's really important to master it at the high level, because otherwise you're probably just going to get yourself killed. However, since sometimes you're going to have to do it, now let's talk about how to control your spray. So there are a few scenarios in Valorant in which you're going to want to actually spray. The first is when there are multiple targets on your screen and you're close enough to actually be able to land most of your bullets on them. Within 15 meters, it's actually not as hard as you think to spray. All you need to do is really aim in their general direction and pull down, and you'll probably land most of your bullets. However, it's still important that you practice this in the range so that you are prepared when this does happen. One of my favorite ways to practice this is on the floating bots outside of the range. You can start out by aiming at one bot, you'll shoot a burst of bullets on him, and then you'll quickly try to transfer to another bot that is flying around. This will get you used to switching between targets during a spray, or as it's more commonly referred to as a spray transfer. Although you won't get the opportunity to use this all the time, it's important to know because there are going to be situations in which you just won't have enough time to shoot a burst of bullets, strafe, and then shoot another burst. You just won't have enough time. Sometimes you're just going to have to spray and hope that the transfer connects. Blinded as Redgar now in the 1v2, and that spike is... No way, Redgar! My God, Redgar! A situation in which this might happen is if you flash through a smoke and you see 2 blinded enemies. You're probably not going to have enough time to quickly one-tap both of them. You're probably going to have to go for a spray transfer. You want to kill one and then quickly transfer to the other target before the blind wears off. Another situation in which you may consider spraying is when you have multiple enemies pushing you from one single location. Since they'll normally have some sort of spacing with each other, you can take advantage of this by spraying at that location and being prepared for the next trade. Generally, even when we're spraying, we still want to aim at head level because that's how we're going to do the most damage. Luckily for us, sprays do cap out at a certain height, so once you've gotten used to this, your muscle memory will basically do the trick. In our final activity though, we're going to talk about how you can practice your sprays so that you can land your bullets in the same spot every time. Moving on a bit from crosshair placement, we're going to be talking about some more things that are going to make aiming infinitely more easy for you. Starting out with possibly the #1 most important thing in Valorant, your movement. Now, although movement is mostly important to make yourself more difficult to hit, in Valorant it can also help your aim quite a bit. Because oftentimes in Valorant, you need to make these small micro corrections with your crosshair, especially at long distance, sometimes you're going to opt to use your movement to assist you with making those micro corrections. This is also why it's so important to keep your crosshair at head level, because when you strafe to the left or the right, it will correct your crosshair for you. Now, obviously, it's still going to be necessary for you to move your mouse a little bit, but by using this tactic, you can make it a lot easier for you to land those micro corrections. In the next section, stick with us because we'll go over a way that you can practice this type of aiming with your movement. For this activity, all you need to do is boot up the practice range and turn on the Kill 100 bots.
Don't worry about the timer on this at all. All you're doing is practicing your mechanics. What you're going to do is come over here to this corner so that all of the bots are in front of you, and then all you want to do is strafe from the left to right and shoot them one by one. While you're practicing this, you'll get better at moving between your shots, but you'll also get better at adapting your aim as you move. Now, although your aim won't be 100% of what you're doing in this exercise, it's very important to master this sort of moving and shooting thing if you ever want to reach those higher ranks. Moving on though, in this course, we're going to be talking about how utility can be used to make aiming much easier for you as a player. Finally, we're going to wrap up this section with another activity. We talked a lot about tactics that make yourself more difficult to hit, but one of the things that we didn't really cover all that much is actually one of the most important, counter-strafing. Now, for all the elite CSGO players who are maybe watching this, counter-strafing isn't the same thing as it is in Counter-Strike. Many players believe that counter-strafe is something that will allow your character to come to a stop more quickly and become accurate faster than if you didn't use counter-strafing. How do you counter-straight and shoot at the same time? You just have to time it properly. So like... You'll do this by, instead of releasing the movement key when you stop, you'll actually counteract it with the opposite movement key, allowing yourself to stop more quickly, and then you can fire during that moment when you're switching direction. This sounds really complicated, I know, but all you need to know is that counter-strafing doesn't really make you more accurate. The thing that it's really useful for is keeping yourself on the move. I think at the end of the day, it does make you accurate a little bit faster, but it's really not that much worth it, right? The big strength of it is that it keeps you moving and keeps you a really mobile target so the enemies can't hit you. The best part about this is that you can fire off bursts of bullets when you switch each direction, keeping yourself mobile but also fighting the enemy. For your activity, it's actually quite simple. What I want you to do is load into the range and practice this for a bit. Strafe from left to right, and when you switch directions, fire off your burst of bullets and see how accurate you can get them. Just aim at the wall and try to get all your shots to land in one spot. You'll want to time your bullets for the exact moment that you hit this opposite strafe key to make sure that you're doing this correctly. This is a fundamental tactic that you need to master if you ever want to survive your gunfights in Valorant. Many players have this bad habit of just crouching in any gunfight that they get into, but the problem with this is they make themselves a very stationary target and super easy to hit, and it will result in them losing gunfights that they probably shouldn't have lost in the first place. We generally recommend players to avoid crouching until they mastered this mechanic of counter-strafing, because otherwise it's going to be a very difficult habit to break later. Once you feel like you've practiced this enough though, feel free to take it into the deathmatch and practice even more there. You don't need to counter-strafe in every gunfight. Generally what I recommend is just counter-strafing in the fights where it's more medium and long distance, because these fights are going to be generally longer because it's harder to hit those shots. This makes it so they won't have as much time to correct their shot, and it gives you more time in the gunfight to land yours. Oftentimes, they'll just give up and they'll crouch spray, making it really easy for you to kill them. As you do this, one of the better parts is that you'll notice how detrimental it is for a player when they crouch. You'll notice how easy these shots are to hit, and that will encourage you to not crouch as much yourself. It's going to take time though. If you don't get it right away, that's perfectly fine. Just play more and eventually you'll get it down. All these mechanic-based things, they just take practice. They take practice and more time and hours to really perfect. This ties in perfectly to our next section though, which is how you can get more multi-kills in Valorant. Finally, to finish up this utility section, we wanted to showcase what it looks like to coordinate a play with your teammates and how you could create some amazing multi-kill opportunities off the back of just a little bit of teamwork. At the end of the day, Valorant is a team game, and if you want to get the maximum value out of your utility and positioning, you want to coordinate with your teammates to do that. We're going to start out with a game that is actually around loss, but I wanted to highlight this because I think that it really showcases how cool of a game Valorant can actually be. Take note of the communication during this round. You're blind? Just at 73. Yeah, hold on, blind off my ult. I'll tell you when, okay? Okay, right here, right here. Both these guys. Pushing spawn. Oh my god! Sight. I saw it. No! Nice try!
Is he looking? Oh, that's so funny. I'm going to start out by talking to my Omen and coordinating a plan in the round for how we can win it by comboing our utility. Notice how I'm not just thinking about my abilities, but I'm thinking about his abilities and how we can use them together. I know as a Yoru player that my ultimate works really well with Omen Blind, and I want to take advantage of this right now in this 2v3. It's really only 2 pieces of utility that are used in this round, but it makes for a really deadly combo that could have easily won us this retake. But what I really wanted to highlight in this round is the energy afterwards from our team. Listen to how excited everyone was to see us work together and try to make a play. Valorant isn't a solo game, it's a team game, and at least for me, this is what Valorant is really about. Figuring out how you can work with your teammates to win rounds like this. Although we ended up losing it, just compare this to the comms from one of our viewers submitted replays and notice the stark difference in how my team was talking to each other versus how our viewers were. Player standing. More meddling. Dude's gonna kill and stop the push. What's another death? Working with your teammates is a necessity in Valorant, and if you're not working with them, then you're hardly even playing the real game. Even a scuffed play is normally better than nothing. Take a look at this other round where we comboed an Omen Blind with Yoru's TP. I'm gonna flash. Yeah, I'm gonna flash. TP. Go him up. Nice. The blind ended up hitting me anyway because I took it too early, but because Omen Blind deafens the player's audio, when he hit them with it, they weren't able to hear my teleport audio and I was able to pick up a clean double kill. This was a completely different group of players than the first game, and the big thing that I wanted to highlight is that how in Immortal, it's pretty common to find players who will talk with you like this. We know that this isn't as common in lower ranks, and you won't be able to reach a super high level of quality when it comes to your teammates' communication, but at the very least you can practice these things yourself. It may seem like you're talking to yourself sometimes, but at the very least you can just hope that your teammates are listening and try to communicate some sort of strategy with them. Take a look at this clip from the previous bind game as I'm communicating a plan with my Sky and U-Haul. I'm gonna swing the smoke when they walk up, okay? And fight with me, fight with me. Ready, set, go. Nice, Casey. I'm not actually getting any verbal feedback from her, but instead I'm just confidently telling her what I intend to do and how she can play off of it. And those are the 2 things that you should really focus on in your comms. What you intend to do, and then what other people can do to help you. If you master these 2 steps, you would be surprised on what plays you can craft even in lower elo. Alright guys, before we go, we're going to finish up with one more activity revolving around how to make aiming easier. To do this, load up a custom game once again and pick whatever map you like. What I want you to do is boring but pretty simple. I want you to go over to the map on defense and find a couple positions that you like to play. Try to find 3 positions that you can play on whatever agent that you normally pick. The first location is going to be a aggressive position. This is a position that you want to play when you want to get aggressive, when you feel like nothing's working and you need to get some aggression. The second position I want you to find is something that's a bit more neutral. I want you to find a spot that you can play pretty much every round and you'll be okay. The third position I want you to find is a passive position. This is where you play when you're a little bit afraid that you could get lurked on, you're not really liking the situation on the round, or you're soloing sight and you don't want to die while your teammates are across the map. When you find this position, when you pick your spots, start thinking about potential concerns. What is a problem with playing this position? What would I need to adapt to? For example, here are my 3 positions on Ascent B site as Sova. I like to play on Speedway for my aggressive position where I can recon into the window and spam them with an Odin. Many of you have probably seen this setup before. Maybe you find it kind of annoying. A lot of people do. But this is my aggressive position because at the start of the round, I can take a duel or I can take a fight and I can put some pressure onto the opponents. This is a spot that utilizes Sova's toolkit pretty well, and although it's aggressive, it's not normally going to get me killed in the round, unless they Odin back, at which point I just move. For an agent like Reyna, they probably wouldn't want to utilize this. Instead, they might walk into B main and get ready to take a duel there. Since I don't have any dismisses or movement abilities as Sova, that doesn't really make sense for me to do, so this is what I resort to. Some potential things to consider though. Maybe if I don't have a teammate who's watching B main, then it could be an issue for me standing
doing here, because if they push out, I'm in kind of a bad position. Something else to consider, as I just mentioned, is that if they have money to buy an Odin, they might spam me back, so I need to know how to adapt to that as well. For this reason, sometimes what I'll do is if I know that they have money to buy an Odin and they seem like they're prone to do so, I might switch my position that I stand in when I go for the spam. This is to reduce the risk of playing a spot like this. If this is my aggressive position though, what is my more neutral position? Well, as Sova, sometimes I like to play in market. From this position, if I get smoked off when they're coming in through market, which is another potential threat, I can shoot my recon through the smoke and potentially get a pick on people while they're running in. Or if they decide to go A, I can quickly rotate through mid and go over towards A and help them out. If they push me mid while I'm playing in market, I like to go through market doors back into sight, and I like to play this angle if we have B main smoked. This is obviously a risky angle, so it requires you to feel it out, and it does require a smoke. But if I can play here, I know that this is good for a lot of kills. Or if I think that they're going to maybe do a split in B, I'll have a teammate help me at top mid, and then we can crossfire there. This spot does require some sort of teamwork, but I find that it works really well for me and my playstyle. Finally though, if I'm looking for my defensive position, say I'm anchoring site alone, some people might expect me to go back into boathouse, but I instead like to play this angle in spawn. Sure, playing boathouse might be good to get a couple of kills, but at the end of the day, when I play this position, if I'm getting pushed, I'm normally the last line of defense and I'm probably going to get killed. Instead, I like to play this more defensive position where I can preserve my life, and if I get smoked off, I can fire a recon and potentially get some kills through the smoke. If I was playing a player who had a dismiss like Yoru, maybe I would be playing in an angle like boathouse though and look for a pick and then teleport away. Or if I'm Reyna, maybe I'll place stairs and dismiss into spawn for my defensive position because I can do that. It all really just depends on what agent you're playing and what you think you can do. If you're a newer player, we recommend doing this on every site, on every map over the course of playing. You don't need to do it all at once, but maybe just feeling it out one map at a time. Something that we've learned from multiple sessions in low elo and multiple climbs is that it doesn't take a large playbook to actually win in Valorant. All it really takes is a couple of strats that you can execute really well and you'll climb pretty quickly. Maybe if you're in pro play, people are going to be studying your playbook and they know every little play that you're going to do, so you can't do them all and you need a really large playbook. But you're not in pro play. You're just playing in matchmaking and nobody's going to be looking you up and studying your gameplay. All you've got to do is have a few ways that you can get kills on each map and you'll be golden. So for our final activity, you're going to load into the range and we're going to start it out super simple. Just walk over to this moving target over here and try to get all your bullets to land in the same spot. Once you're able to do this consistently, move the target back. And that's basically the whole exercise. You're going to do this and you're going to continue to move the target back, making it more and more difficult to control that spray, and you'll get better at it over time. This is also great because the further you move it back, the more you'll realize how important it is to go for those burst fires, because it's just really not an option to spray at some of these ranges. It's not impossible though. One thing to remember when you're spraying is that your rifle will sway from either the left or the right depending on which direction the bullets are going to go. To account for this, try to correct your spray with whatever direction the rifle is swaying, and you will be able to control your spray just a little bit better. That being said, if you're spraying more than 10 to 15 bullets, you're probably going to get traded out anyway, so we don't really recommend spending too much time on this exercise. This is why practicing on the bots outside is so effective too, because they are so easy to kill that you kind of get used to this sort of timing of spray transferring between targets. And since the first few bullets out of our gun are the most accurate, that means that we can get these spray transfers done with only reusing around 6 to 10 bullets. Treat the game as your own though. I mean, like, if you want to master recoil, go ahead and do it. I'm not going to blame you. There are some players who have been able to bring recoil to the top level, such as Sabrosa or Trent, and they are really fun to watch when they do land those clips. Bad timing though. Sabrosa could have been in a lot of trouble, but now he's getting support from his teammate Rossi, and they're able to anchor down here on long. It is definitely possible to achieve the aim of a god in Valorant. All it takes is a little bit of practice and a little bit of thought.
Match found. Match found. भाई नियॉन लूं या सेज लूं? नियॉन क्या लूं भाई? गेको? भाई गेको तो खुला हुआ ही नहीं है भाई, अभी नया खेलना स्टार्ट किया है मैंने। खोले हुए हैं भाई, खुले हुए हैं। एक्सट्रीमली बेले लोग जो जिंदगी से परेशान है अपनी, अभी लोग बैठे हैं। I dare you. Reloading. I'm out of here. Barrier deployed. Flash out. दो तीन
तीन आ रहे हैं एक साथ Target spotted B. Tremor! Worthless. इतना ऊपर न जाया कर इतना ऊपर नहीं जाया कर Last player standing. साइफर पीछे तेरे पीछे तेरे पीछे पीछे तेरे One down. प्लान कर रहा मार प्लान कर रहा Spike planted. दोनों वहीं पे हैं साइड पे हैं एक लेफ्ट में है एक एल्बो पे और एक बी साइड One enemy remaining. एक बी साइड पे This is no problem. साइड पर विंडो पे नाइस ट्राई मैं थोड़ा बोल दूंगा ये पे जाऊंगा एक बार साइफर ए पे ट्रस्ट दो इस बार भी बाय में नहीं रहा शेयर कर रहा हूं अरे तो कितना आगे जाएगा भाई उनको क्यों आने दे बी पे आई गेस आ गई रेना आ गई रेना 66 विंडो पे दो बंदे हैं पक्का विंडो पे Blinding! Dead. तो वो तो वॉल में भी हो जाएगा Flash out! आफ्टर शॉक दे अबे क्या कर रखा भाई विंडो पे The angel's dead. आ गए साइफर अंदर ही क्यों है Spike planted. Someone is being. Last player standing. शिट भाई ना भाई हम सब शुरू ये अच्छा खेलना है Reloading. Gotta go. Many enemies A. एक तो साइफर और चैम्बर Go away. Spike down B. No surprise. Last player standing. भाई साइफर क्या कर रहा है यार शॉटगन क्यों ले रखी है भाई तूने Spike planted. भाई ये क्या ही कर रहा है भाई साइफर भाई
शॉटगन क्यों चलाते हो? शॉटगन कैंप करने के लिए है। शॉटगन लेके इतनी दूर थोड़ी ना मारेगा बंदे को। Reloading. सेज की वॉल से ही रहती है। ये पे है एनिमी बात। तो अबे भाई ये सारे के सारे शिफ्ट वॉकर एकदम से आ जाते हैं भाई, पूरी टीम एक साथ चलती है इनकी। My ult's ready. Spike down B. कैटलॉग बेंच चेंज कर लेगा। यहीं पे है स्नाइपर यहीं पे है, नीचे उतरते ही है। Spike planted. स्नाइपर तू क्यों चला रहा है? नहीं चलती है इतनी बार तू भाई। Last player standing. क्या है ये? स्नाइपर शॉटगन चलाने तो फिर एक काम कर जा, वहां पे बंदे आएंगे उनको चाहिए भी हो क्लोज में। ओए साइफर बी पे जा। साइफर क्या नाम है इसका? XXAR ZXAR भाई क्या यार सुन भी नहीं रहा है। भाई वो बच्चे मारा भाई यही से अभी साइड पे एंट्री नहीं हुई अभी। One enemy remaining. Spike down B. नहीं होल्ड कर लो। Blinding. I'm thinking worse. Nice one, Breach. Nice one. Finally, go. I'm out of here. Reloading. Gotta go. You want to play? Let's play. Concussing! Flash out! I know exactly where you are. Shadows traveling. Spike planted. Last player standing. Flawless. Go, go, go! Reloading.
Headshot. ए पर है क्या? अबे भाई बी पे कैंप कर रहा है भाई ये तो। अबे बहुत कैंप करके खेल रहे हैं यार ये लोग। Cover going out. बिल्कुल वही बैठ रहा है भाई बोल रहा बहुत देर तक। देख भाई Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Cover going out. Nice one. Clutch. You forget your place. I need a drop. Go, go, go. I'm out of here. I'm out of here. Go, go, go. ए पर है Shadows traveling. ए पर है Last player standing. Spike planted. उनकी तरफ से चैम्बर और रेना ही मार रहा है और कोई नहीं मार रहा है। Go, go, go. भाई ये रेना हेड मार रहा है भाई साहब। सब लोग Last player standing. Spike down B. Reloading. I'm out of here. You want to play? Let's play. बी पर फुट से वो Camera taken out. बी पर ये गए
बी पे आ गए प्लांट कर रहे हैं। Spike planted. तो भाई कैसे स्कोप लेके बैठा है यार। Last player standing. Flawless. Gotta go. The hunt begins. I know exactly where you are. No Gunday. Last player standing. Spike planted. Last round in the half. Gotta go. Go, go, go. एक ही गोली मारता है भाई, उसी जगह पे मारता है। Nothing there. रेना ही No surprises. Multiple targets B. 128 Deadlock भाई, Spike planted. Last player standing. ग्राउंड में तो नहीं मारता कोई इतने हेड। अरे गोल्डो भी है। Enemy down. Allah. Where is everyone hiding? Switching sides. Reloading. I'm out of here. ये चल रहा है, भी चल रहा है। Go, go, go. Gotta go. ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये आ जाओ, ये आ जाओ। साइफर, डेडलॉक, ओमेट, ये आ जाओ। Reloading. Reloading.
Reloading. Okay. Last player standing. One enemy remaining. Watch out. Gotta go. Out of charges. Slide क्यों नहीं हुआ भाई? Slide था मेरे पास slide पहन के पता नहीं क्यों नहीं हुआ. Reloading. भाई कोई फायदा नहीं है. डिलीट कर दो यार. Gotta go. Reloading. स्पाइक वाला अकेला ये जा रहा है वैन पे. चलो. Spike down. Enemy B. Spike down B. किसी हो गया वो. लॉन्ग पे वो है. No surprises. Last player standing. चैम्बर का ये सब है उसको मत Careful now. They found my wire. चैम्बर का ये सब है. Match point. Go, go, go. Reloading. I'm out of here. Our carrier is dead. You want to play? Spike down Let's B. play. पता नहीं क्या खेल रहा भाई उनका चैम्बर. Last player standing. Sensor tripped. Defenders win.
Match found. Stand in my way. I dare you. Reloading. Launching smoke. Grim smoke कर दे. Careful here. Reloading. Enemy spotted. Reloading. 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 Barrier deployed. Having their vision. Last player standing. We tend to dust. Good attack. वही है लास्ट मैच में खेल रहे थे. भाई आयरन वन में तो कैसे हो सकता है उनका चैम्बर इम्पॉसिबल ही नहीं है भाई. दैट टाइम Reloading. Saving. ग्रिम स्मोक कर दियो. Down. फिर से मिड से आ रहे हैं क्या? मिड टू है, चलो मिड टू. Got the spike. Reloading. Spike down A. Last player standing.
ये देख लो बहन चोद आगे 4 लोगों में चारों में हेड मार के गया है चुतिया का बच्चा बहन चोद बहन चोद पता नहीं क्या खेल रहा है ये पक्का भाई आयरन सिल्वर तो नहीं है भाई ये गोल्ड या प्लैट बहन जो ये चूते हैं वैलोरेंट वाले भी गांडू गेम है बहन चोद कर रहे हैं ये चूते अगले मैच में मेरे को लग रहा है बैंगलोर एसेंडेड का प्लेयर दे देंगे वैलोरेंट में Smoke's down. Trevor! Scratch one. भैया हील नहीं है अभी नहीं आजा भाई नहीं आजा मेरे पास हील ले For you. 30 seconds left. Last player standing. Spike down A. यार क्या बहन जो चूते हैं भाई एक एक 2-4 मैच चले जाते हैं उसके बाद बहन के लोड़े भेज देंगे फिर से 10 seconds left. Now we're cooking. Reloading. भाई सरेंडर ही कर लो और क्या करेगा जो भाई डी रैंक गेम है भाई सरेंडर कर मेरा भी डी रैंक हो जाएगा इस मैच के बाद अरे दिमाग का बुफड़ा हो रहा है भाई उल्टा खेल के और दिमाग खराब हो कोई फायदा नहीं है जीतने का जीत भी नहीं सकते हम बहन तो भी छूटी हैं भाई बहुत गंदा खेल रहे हैं You want to play? Let's play. बंदा है यहाँ पे बी एल ए एल में बंदा है Still in sight. Still in sight. Plant a spike. Barrier clear. Spike planted. कैंप करो ब्रीच मत जा भाई ब्रीच मत जा होल्ड कर लो यार बस होल्ड कर लो एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाओ लेना होल्ड कर ले ब्लाइंड डाल दे अंदर ब्लाइंड डाल दे Last player standing. यार देख ले भाई क्या हेड ही हेड दे रहा है भाई वो कुछ और मार ही नहीं सिर्फ एक हेड और कुछ नहीं सिर्फ हेड मार रहा है वो आता है सिर्फ एक हेड मार के चला जाएगा भाई ये राउंड और हारे ना भाई सरेंडर कर दो भाई प्लीज सरेंडर कर दो कोई फायदा नहीं है भाई टाइम वेस्ट होगा सही में भाई कर लो यार सरेंडर कोई फायदा नहीं है खेल दे मैं तो चूती भाई पिछली लॉबी हमारी आई थी बहुत कुत्ता बना के मार रहे हैं Joke's over! You're dead! Enemy spotted B.
30 seconds left. Cutting their vision. Still in sight. Plant the spike. Last player standing. Spike down A. छी भाई भाई क्या भाई सरेंडर कर लेते भाई पता नहीं क्या ही मिल रहा तुम लोगों को मैच खेल के मैच तो उल्टा और गुस्सा लगा रहा है ऐसे खेल के और हाँ बहन चो अच्छा खासा सो जाते डी रैंक हो गया और खराब होगी नींद की नींद और नहीं आने की बहन की रोटी The hunt begins. So good. Pull them to their grave. Nothing there. You're nothing. Right here. For you. No surprise. Reloading. Spike down mid. Stim beacon down. Still in sight. I have the spike. Careful here. Plant the spike. Cutting their vision. Blocking movement. there. वहीं से आएगा 30 seconds left. Planted. Over there. Brim to hold करेंगे One enemy remaining. Brim to hold कर अगर ये दोनों मर गए और वो डिफ्यूज करना है तो स्कर्ट मार दियो Brim hold कर ले Molly. सेव कर लो नहीं हो पाएगा थोड़ा सा दिल करना होगा Reloading. चलो आप जाओ बैक से बाहर कैंप करो ठीक है ऐसे खुले में मत जाओ तेज तेज इधर वॉल कर सकता है क्या मत आओ जब मैं वॉल पे भाई उनका चैम्बर नहीं मान रहा भाई There. Healing you. Last player standing. Reloading. तेज मेरे नीचे वॉल कर ऐसे जहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं देख यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नीचे अपने नहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे नीचे You want to play? Let's play. अरे भाई शिट भाई
down. Spike down B. Last player standing. Spike down mid. Blinding. Flash out. Last player standing. Flawless. भाई अब सरेंडर करेंगे हाफ के बाद और जिसने बहन चोद रिजेक्ट कर दिया ना वो गांड बना लेना अपने जाके Reloading. दिमाग का भुखड़ा हो गया बहन जो सुबह सुबह वही ना ये चूतिया आ जाते हैं बहन के रोड़े गोल्ड प्लेट वाले बहन के रोड़े यहाँ आके खेल रहे हैं Concussing. Joke's over. You're dead. Enemy spotted B. They will cover. Reloading. Stim beacon down. Spike down B. Launching smoke. See nothing. भाई अल्ट भी मार दे कभी. Open up the sky. Last player standing. Reloading. Blinding. Clearing out. Flash out. Hey door. You had your fun. My turn. Cutting their vision. So long. Pull them to their grave. Nothing there. Your duty is not over. You will not kill my. One less. Stim beacon here. Last player standing. यार मर के नहीं दे रहा भाई कोई भी Last round before the switch. Reloading. Spike down mid. Reload. I have the spike. Got the spike. Enemy down. Reloading.
Joke's over! You're dead! Blinding! Last player standing. You want to play? Let's play. Switching sides. भाई किसकी गांड में चूल्हे बहन चोद ये कौन था बहन चोद ये रीना होगी पक्का साल की लग जा रानी अरे यार बहन जो मैं थ्रो कर रहा हूँ भाई थ्रो करो भाई जल्दी जल्दी 2 मैच थ्रो करो खत्म करो बहन ये दिमाग सीधा अंदर घुसो बहन के जो खत्म Spike planted. Last player standing. भाई उसकी एक गोली में कैसे मर गया भाई गोश्त की एक गोली Match point. अबे भाई किसकी भाई कौन है भाई बाबा रिजेक्ट कर रहा है अबे किसको तो पूरा मारने का मन कर रहा है भाई outlined in our emergency procedures handbook. Reloading. Enemy spotted mid. Sensor tripped. Spike down B. Enemy spotted mid. Enemy down. Spike spotted B. Last player standing. भाई ब्रीच जाके मर जा यार Attackers win.